Ali Naqvi. Khalid Usman has got the con. Give it a flip. Heads is the call. And that is heads. There is the call from Ali Naqvi. Central Punjab has won the toss. वहाब रियाज आप टॉस जीते हैं क्या करेंगे? हम लोग पहले बैटिंग करेंगे. विकेट आपने देखी क्या कैसी लग रही है विकेट? जी बिल्कुल आई थिंक बैटिंग विकेट है. टोटल ऑन द बोर्ड विल ऑलवेज बी हेल्पफुल. और आपकी टीम बिल्कुल आखिरी मैच के बाद क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए. अक्सर देखा गया कि जो टीम कमिंग फ्रॉम बिहाइंड वो मोमेंटम के साथ आती है. कैसा मोराल है टीम का? देखें ये डिपेंड करता है कि आप किस रिदम में है या किस तरीके से आप मैचेस जीतते जा रहे हो. मेरा ख्याल है यू नीड टू पीक एट द राइट टाइम और वही हमारी टीम ने किया. बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और आई थिंक दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि हम लोग ये सेमीफाइनल जीते और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करें. चलो आप थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच जी. खालिद उस्मान, अगर आप टॉस जीतते आप क्या करते? हम भी बैटिंग ही करते हैं, लेकिन चलो अच्छा है कि अर्ली मॉर्निंग का जो सेशन है उसमें हम इनको रिस्ट्रिक्ट करें और कम से कम टोटल में इनको आउट करें. कुछ आपको लगता है ये विकेट ड्यूरिंग द डे चेंज होगी? जिस तरह वेदर का वो है, आगे गर्मी मतलब है कि हीट अप है, तो विकेट थोड़ा सा मेरे ख्याल से बाद में थोड़ा सा ग्रिप करेगी और ब्रेक भी होगा. और केपी की टीम जब भी नॉकआउट का मरहला होता है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट पिछले 2 साल से आप लोग सब टूर्नामेंट जीते हुए हैं, फिर नॉकआउट मरहले पर आप आए हैं, टीम का मोराल कैसा है इस वक्त? टीम का मोराल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बड़े मैचेस का एक्सपीरियंस है लड़कों को, क्योंकि पिछले दो साल में 5 ट्रॉफी हम जीते, तो कोई इस तरह का इशू नहीं है, प्रेशर वैशर कोई नहीं है हम पे, और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे इंशाल्लाह और अच्छा होगा इंशाल्लाह, रिजल्ट भी अच्छा होगा. Thank you very much, Khalid Usman, and all the best. Thank you. So the news from the center is that Central Punjab has won the toss and they have decided to bat first. ये शायद भाई रेडी है, चेक कर ले फ्रेमिंग सेट, चेक कर लेंगे दफा.
10 फीट दूर है बस। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो पिच पर जो कॉल आ गई तो मैं थोड़ा सा दूर हुआ है तो माइक तो भी चाहिए। सलमान चला गया। अभी दोनों माइक आ रहे हैं। साद यहाँ स्टूडियो के दरमियान में आपका एक बंदा इधर रहेगा, इसको बाहर भी निकालना है। इसको थोड़ा सा इधर कर दे, पकड़ी उधर से। बस टायर भाई और सक्कर भाई फ्लोर पर रहना है आपको भाई। टायर भाई को तो अपना डालिए और टायर भाई बिल्कुल बदतमीजी नहीं मांगता। बाबा काला हो ऊपर से ऑर्डर होगा वरना घर भेज देंगे जो भी करेगा। भाई जान जा सकते हो भाई, टिकट कराओ और जा सकते हो भाई आप। बस दो है ना अभी तो, क्या रोज दो है? रोज दो है या अभी दो? ये रनिंग ऑर्डर के मुताबिक होता है। मास्टर कौन बनाएगा? मास्टर भी बॉस कौन? कभी कभी टीवी पे नजर आते हो तुम लोग तो सिर्फ दूर दूर से। आप नजर आता है भाई। क्या नजर आना, आप तो आते दूर दूर से, मुझे कहीं ना कहीं मैं पहचानता हूँ, मैं कहा अच्छे से वाकिफ ने सारे। मैंने होस्टिंग करनी है जी, आप पोस्टिंग करनी है आपको? तो नहीं लगवा लो। हाँ जी हाँ, वो मुझे लगा सही मैसेज नहीं वो है जो आप कहेंगे ऐसा आप कहेंगे। परफिंग के लिए मेकअप है आर्टिस्ट यहाँ? नहीं जी नहीं, हिप हॉप तो होगा। होती है मैं, बट मुझे नहीं पता था। अली भाई आपके हैंड से ऊपर रख दी। क्या मेरी वो अब आपकी है, मतलब अब एंट्री मतलब इसके कान की उसके कान की वो नहीं ऊपर है, पड़ी है। बस आपकी एंट्री अच्छा, मैंने ऊपर एक प्रोड्यूसर टिश्यू कर ला दी। दे। मैं टिश्यू ला देता हूँ आपको। मुझे नहीं आ रहा नजर। आप कोट पहना दिखाएं टिश्यू सर ला दे यार। यार काशिफ। पीछे थोड़ा पीछे करना, ये आ गया, ये देख यार, थोड़ी सी इसको डाउन कर दे। डाउन नहीं हो सकती। काशिफ इसको थोड़ा पीछे कर दे ना। काशिफ हाँ जी, अंदर से टिश्यू मंगा टिश्यू बोलो आड़ी वाला तू थोड़ा हाँ तू लेके आता ना साथ यार। अंदर रखा हुआ है उनके बंदे के पास। अब जब भी जाएगा ना तो ये मांग लेते हैं। अबे इतनी सारी चीजें हैं मेरे पास। बोल दो ना एक बाकी बॉक्स जा, क्लॉक आ गया, क्लॉक इन हो गया। क्या करना है? नहीं इन नहीं हुआ अभी, अभी सिर्फ स्क्रीन पे आया। मेरे भाई ये इधर आगे छाओ, ये इतनी छाओ रहे बस। ये लो फिर तुम माइक देना, मैं टिश्यू लेकर आ रहा हूँ। इधर ही है, इधर ही है, इधर ही है, मैं टिश्यू ला रहा हूँ। अली भाई आ जाए, अली भाई, मैं टिश्यू ला रहा हूँ। ये तारिक भाई, ये दे दो अभी। तारिक भाई नहीं है। तारिक भाई वो है या टिश्यू तो भाई पहले मंगा दे। टिश्यू ये आप रख लें। पसीना हमदा भाग के जाए, हमदा भाग के जाए, मैं इधर ही हूँ। तारिक भाई आ जाए। इधर कर दें थोड़ी सी, या सही है। मैं करीब आ गया। ये इस पे टॉस पिक्चर बोर्ड जो भी चलेगी, मैच शीट चलेगी, आप देख लीजिएगा। अगर आप कहते हैं मैं थोड़ी सी रिमूव करवा दूँ। थोड़ी सी करा दोगे तो एंगल मेरा अदनान में बहुत काम है यार, बहुत बैकग्राउंड टाइप में, बहुत काम। आप सही है, आप सही है। रेहान की भी है, ठीक है, बेहतरीन है। हाँ बस सिर्फ टिश्यू 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 बहुत ज़रूरी है जी। मुझे रेहान आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ मैंने उसको बोला टिश्यू मंगवाया मैंने। शाइन मारता है चेहरा मेरा। नहीं थोड़ा सा देख लो ना, उसने भी देखना। थोड़ा हाँ तारिक भाई आ जाए अपने पोजीशन पे। ये कैमरा यार अली भाई इधर नहीं करा, मैं उधर हो गया। नहीं, वो होस्ट हमेशा उधर से। नहीं ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं। हाँ ये तो कोई जरूरी नहीं। टाइटल के बाद इधर आइए, ये मांग
ठीक है। अच्छा वो ये कैमरा Cricket Stadium for the first semi-final between the table toppers KP and the defending champions also to take on the star-studded Central Punjab. Yes, hello and welcome once again to the beautiful Multan Cricket Stadium. This is the first semi-final of Pakistan's premier one-day tournament, that is Pakistan Cup. It's the table toppers KP taking on the star-studded Central Punjab in this all-important semi-final. I'm Ali Yunus and I've got with me the commentary king Tariq Saeed. Tariq साहब थोड़ा बात करेंगे आज दो बड़ी टीमें कैसा देख रहे हैं मैच को आज? जी हाँ, ज़बरदस्त मुकाबला होना चाहिए। यही दोनों टीमें थी जो फाइनल खेली थी नेशनल T20 कप का जब ये सीज़न शुरू हुआ था, और आज सेमीफाइनल में आमना सामना हो गया है। सेंट्रल पंजाब की जो टीम है इसकी बैटिंग में बहुत डेप्थ लगती है। वहाब रियाज नंबर 10 पर आ रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। कासिम अकरम है, अहमद शहजाद फॉर्म में हैं, सेंचुरी भी की हुई है। उमर अकमल आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपने पाँव पर दोबारा खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुकाबला जो है दरअसल ये केपी की मजबूत फास्ट बॉलिंग का और सेंट्रल पंजाब की बैटिंग का है। जी, आपने जिक्र किया कि केपी की मजबूत टीम टेबल टॉप पे उन्होंने फिनिश किया। ज़रा नजर डाले थे कि पॉइंट्स टेबल कैसा रहा इस सेमीफाइनल से पहले। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा ने 10 मैचेस खेले हैं, 7 मैचेस जीते हैं, 3 मैचेस हारे हैं, 14 पॉइंट्स के साथ टेबल टॉप के है। बलूचिस्तान एक सरप्राइज पैकेज समझ के सामने आए हैं। 10 मैचेस में 7 मैचेस उन्होंने जीते हैं, 3 हारे हैं, 14 पॉइंट्स के साथ। सिंध तीसरे नंबर पे हैं, 10 मैचेस के बाद 6 मैचेस उन्होंने जीते हैं और 4 मैचेस हारे हैं, 12 पॉइंट। सेंट्रल पंजाब 10 मैचेस 5 मैचेस उन्होंने जीते हैं और 5 हारे हैं, 10 पॉइंट्स उनके हैं। सदर्न पंजाब और नॉर्दर्न की क्रिकेट की टीमें जो पहले ही बाहर हो गई थी। जी हाँ, बात करते हैं हम। तारिक सईद हमारे साथ मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा बहुत ही डिपेंडेबल टीम है, एक बहुत कंसिस्टेंट टीम है, टेबल टॉप उन्होंने फिनिश किया है, डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं। तो कैसे देखते हैं उनकी जर्नी को? हाँ, कोई हैरत नहीं हुई उनके इस सफ़र पर, क्योंकि वो सारे टूर्नामेंट्स ही तकरीबन जीतते आ रहे हैं और इस सीज़न में तो कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं जो उन्होंने छोड़ा ना हो। अंडर 13 से लेके अंडर 19 तक, अंडर 16 तक, और फिर उसके बाद नेशनल T20 कप, कायदे आज़म ट्रॉफ़ी, और अब ये एक आखिरी रह गया, इसमें भी वो अपने टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं। हाँ, उनके 4 प्लेयर्स ज़रूर चले गए हैं। फ़खर जमान के जाने से इनका जो टॉप ऑर्डर है शायद वो उतना मजबूत ना रहे, और इसी तरह से नंबर 6 पर बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे थे मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। वो क्योंकि पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो गए हैं। आसिफ आफरीदी पहली बार चले गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और मोहम्मद वसीम जूनियर
जूनियर भी चले गए हैं, तो थोड़ा सा इस टीम को फ़र्क तो आएगा उस लिहाज से। दूसरी तरफ जो हैं फ़हीम अशरफ आ गए हैं सेंट्रल पंजाब की टीम में, तो उधर आ गए, इधर से चले गए, लेकिन इसके बावजूद ये टीम जो है आपको ये ज़्यादा टीम लगती है जब हम बात करते हैं। जी हाँ, आपने बात की कि टीम लगती है, डेफिनेटली इनकी जो अप्रोच है वो नेवर गिव अप अप्रोच रही है हमेशा से खैबर पख्तूनख्वा की। तो आज देखते हैं कि आज सेमीफाइनल की पिच कैसे होने वाली है। हमारे फेलो कमेंटेटर शाह फैसल पिच पर मौजूद हैं। It's an absolute scorcher of a day here at the Multan Cricket Stadium, and we are here for the semi-final of the Pakistan Cup. The conditions are just about perfect here. If you look around, the outfield is lush green, and the dimensions of the pitch, they are 75 meters all around, which is pretty decent. And one more thing, the last 10 games here, the teams that have won the toss have chased and have done it successfully on 8 occasions. If you look at the pitch for today's game, it's pretty dry, there's no grass whatsoever, and it's pretty firm as well. There are some cracks, but they won't matter. And I think it's a pretty good wicket for batting, and we can expect plenty of runs today. जी हाँ, शाह फैसल के मुताबिक ये जो पिच है वो बैटिंग के लिए बहुत साजगार है। शाह फैसल को हमने बिजी रखा हुआ है, वो मौजूद है दोनों कैप्टन के साथ टॉस के लिए। All in readiness for a toss here. We've got the two captains here, Khalid Usman from KPK, Wahab Riaz from Central Punjab, and the match referee, Ali Naqvi. Khalid Usman has got the con. Give it a flip. Heads is the call. And that is heads. This is the call from Ali Naqvi. Central Punjab has won the toss. Wahab Riaz, आप टॉस जीते हैं, क्या करेंगे? हम लोग पहले बैटिंग करेंगे। विकेट आपने देखी, क्या कैसी लग रही विकेट? जी बिल्कुल, आई थिंक बैटिंग विकेट है, टोटल ऑन द बोर्ड विल ऑलवेज बी हेल्पफुल। और आपकी टीम बिल्कुल आखिरी मैच के बाद क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए। अक्सर देखा गया कि जो टीम कमिंग फ्रॉम बिहाइंड वो मोमेंटम के साथ आती है, कैसा मोराल है टीम का? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस रिदम में है या किस तरीके से आप मैचेस जीतते जा रहे हो। मेरा ख्याल है यू नीड टू पीक एट द राइट टाइम, और वही हमारी टीम ने किया। बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, और आई थिंक दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि हम लोग ये सेमीफाइनल जीते और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। चलें आप, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच जी। खालिद उस्मान, अगर आप टॉस जीते आप क्या करते? हम भी बैटिंग ही करते, लेकिन चलो अच्छा है कि अर्ली मॉर्निंग का जो सेशन है उसमें हम इनको रिस्ट्रिक्ट करें और कम से कम टोटल में इनको आउट करें। कुछ आपको लगता है ये विकेट ड्यूरिंग द डे चेंज होगी? जिस तरह वेदर का वो है, आगे गर्मी मतलब है कि हीट अप है, तो विकेट थोड़ा सा मेरे ख्याल से बाद में थोड़ा सा ग्रिप करेगी और ब्रेक भी होगा। और केपी की टीम जब भी नॉकआउट का मरहला होता है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट पिछले 2 साल से आप लोग सब टूर्नामेंट जीते हुए हैं, फिर नॉकआउट मरहले पर आप आए हैं, टीम का मोराल कैसा है इस वक्त? टीम का मोराल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और बड़े मैचेस का एक्सपीरियंस है लड़कों को, क्योंकि पिछले दो साल में 5 ट्रॉफियाँ हम जीते, तो कोई इस तरह का इशू नहीं है, प्रेशर कोई नहीं है हम पे, और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे इंशाल्लाह, और अच्छा होगा इंशाल्लाह, रिजल्ट भी अच्छा होगा। Thank you very much, Khalid Usman, and all the best. Thank you. So the news from the center is that Central Punjab has won the toss and they have decided to bat first. खालिद उस्मान ने कहा कि टेंशन वेंशन कोई नहीं है, पहले बैटिंग कर रही है सेंट्रल पंजाब की टीम। अब पहली टीमों पे नज़र डाल लेते हैं। मेरे साथ तारिक सईद मौजूद हैं। बहुत स्टार स्टडेड और स्ट्रॉन्ग टीम लगती है तारिक सेंट्रल पंजाब की। जी हाँ, रिजवान हुसैन, अहमद शहजाद, राइट और लेफ्ट हैंड का ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन है। रिजवान हुसैन बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में, अच्छी फिटनेस दिखा रहे हैं। हुसैन तलत ये ज़्यादा तारुफ के मोहताज नहीं है, अच्छे ऑलराउंडर हैं। साद नसीम ने इस टूर्नामेंट में रन बनाए हैं। उमर अकमल जो है हो सकता है ये विकेट कीपिंग भी करें। कासिम अकरम है जो ऑलराउंडर हैं, इन पर बड़ी नज़रें हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। फ़हीम अशरफ की वापसी हुई है, और ज़्यादा इन्हिसार सेंट्रल पंजाब का जो है वो अपने स्पिनर्स पर होगा। खैबर पख्तूनख्वा की टीम में साहिबजादा फरहान जो हैं, ये सुनने में आया था कि ये नहीं खेल सकेंगे। फ़खर जमान जो हैं, ये भी इनकी भी शमूलियत पे शक था। कामरान गुलाम वन डाउन पोजीशन पर खेलेंगे। साजिद खान जो हैं ये वापस आए हैं इस टीम में, इब्तदाई में ये नहीं खेल रहे थे। अशफाक अहमद जो हैं यकीनी तौर पर ये ओपनिंग करेंगे। रेहान अफरीदी टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेल रहे हैं क्योंकि मोहम्मद हारिस नहीं हैं, और इस तरह इमरान खान जो हैं उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, और साथ साथ समीन गुल से जो कि यहाँ पर हमें नई गेंद करते हुए नज़र आएंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। आखिरी मैच में गो के सेंट्रल पंजाब ने हरा दिया था केपी को, लेकिन
कभी भी आप इस टीम के इम्कानात को निगेट कर नहीं सकते। जी हाँ, अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो केपी का पलड़ा जो है थोड़ा भारी रहा है। 4 मैचेस केपी ने जीते हैं, 1 मैच सेंट्रल पंजाब ने जीता है। तो आज हम क्या तवक्को कर सकते हैं? जी हाँ, मुकाबला तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और अभी सेंट्रल पंजाब की टीम जो है वो टॉस भी जीत गई है, वो बड़ा स्कोर बनाना चाहेंगे। हालांकि पहले ये हो रहा था यहाँ इस पिच पर मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में कि टॉस जीतने वाले जो कप्तान थे वो इस डगर पे चल रहे थे कि पहले यहाँ पर बॉलिंग करना पसंद करते थे और 8 मैचेस जो हैं 10 में से पहले बॉलिंग करने वाली टीमों ने ही जीते थे। लेकिन अब माहौल बदलेगा, मौसम बदल रहा है, तो बैटिंग के लिए बेहतर मौसम लग रहा है। कोई हैरत नहीं होगी अगर 300 रन आज पहले बैटिंग करने वाली टीम ने बना दिए यहाँ। राइट, आपने प्रेडिक्शन सुनी हमारे प्रेडिक्शन से कि तारिक भाई का कहना है कि मतलब कि बहुत एक्साइटिंग गेम आज हमें देखने को मिल सकता है। एक ब्रेक लेंगे और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके लिए लाइव एक्शन तैयार होगा। Hello and a very warm welcome to all our viewers from wherever you may be watching. This is Multan Cricket Stadium and we're here for the first semi-final of the Pakistan Cup. And semi-final stage is set. Khyber Pakhtunkhwa will be taking on Central Punjab. Gorgeous day here in Multan. The sun is out. It's a
little bit of breeze as well. It's pretty warm and it's going to get pretty hot during the day. As we watch, the two umpires are taking to the field. Pretty happy. Brand new Kookaburra. As two sides who've got to this stage are really the form teams. KPK, as usual, any Pakistani domestic tournament at the knockout stages, you'll find KPK the ever-present, and they're taking on Central Punjab, who qualified on the last day of the league stages. As we watch the two openers coming out, these are the two teams, and with me in the comm box this morning is Leena Moeen. Very good morning, Leena. Morning, Faisal, and a very good morning to everyone watching. Exciting times for Pakistan domestic cricket. These are the teams for you. Very strong teams. Ahmed Shahzad and Rizwan are going to be opening as Wahab won the toss. And a very strong KPK side who's been doing so well, and some of the internationals returning to their sides. Three usual suspects in both sides, but the youngsters to look out for. Mohammad Mohsin in the KPK side has really been doing well. And another man to watch out for will be Mohammad Sarwar Afridi, who's been prolific with the bat in this tournament and handy with the ball. Very, very exciting contest in prospect. Ahmed Shahzad, another form man. He's been scoring runs in this tournament. He's looked very good. Very prolific List A career as well. Average of 42. And a household name in Pakistan cricket. And this is Rizwan Hussain, another very promising youngster. It's a very good all-round player, and the left-hand, right-hand combination for Central Punjab. They will be looking for a good start here. Absolutely, the left hand, right hand, always very difficult for the bowlers, because every time there's a single taken, the field has to change, strategy has to be changed. So, and both the gentlemen in very good form. Ahmed Shahzad has been scoring at the average of 42 runs in this tournament, 421 runs already. So he's done well. And for KPK, usual suspect, Imran Senior, their senior bowler, good bowling lineup. And Faisal, I think they've the Central Punjab have won the toss, so they'll be looking around, according to your pitch report, they'll be looking around 300, you say? The wicket looks pretty good, and there's no hint of moisture or any grass, so other than the first few overs with the new ball, we don't expect any lateral movement, and the ball should come on nicely, so it should be fun. Umpire Nasir Hussain, he will be calling the shots as everything is getting ready. Imran Khan at the top of his mark, and the contest should be riveting. Talking to Wahab Riaz, he was really looking forward to this, because in Pakistan domestic cricket, like I said, KPK is the team to beat. Plays the call. Here we go. A little bit of swing for Imran Khan into the left-hander. Imran is a very good exponent of the new ball, a skill that's pretty rare if you look around the Pakistan cricket circles. Bowling with the new ball is a great art. He's a very seasoned campaigner, has been playing for a very long time. As you said, he can swing the new ball, and it's not easy on these tracks to swing the ball. But with the new ball, always the good bowlers will get help. They will swing it, and there will be problems for the openers. And KPK, like you said, a very good team to beat. Remember, two brand new Kookaburra balls to be used on either end. Attacking the stumps, Rizwan Hussain will have to be careful here. That balance was good on that occasion, but that's the front pad that Imran Khan is looking to target. Well, looks like Rizwan is a very good offside player, because the offside field is pretty packed. Nasir Hussain is the leg umpire. Batsman getting ready to face.
packed offside field, short cover, mid-off point. Imran Khan is looking to find that early swing. Two umpires, Nasir Hussain, who's having a close eye on Imran's follow-through as well. Kassar Wahid is the other umpire. Pretty regulation there from the KPK captain in terms of their field setting. Just the one slip and a short cover catching. Yeah, Rizwan's very strong on the offside. That's why the packed field. And the bowler's very experienced. He is not going to give him deliveries to hit on the offside. But this is good. We'll see how much skill he's got and can he hit through this field. Once again, that inward movement of the thick inside half of the bat. Couple of runs to get Rizwan's innings going. You can see clearly from Imran, he's targeting that front pad of Rizwan Hussain. And the left-handed openers are likely to lose their balance in the first part of their innings. And that's what Imran is hoping. But the longer Rizwan Hussain stays in the middle, he's going to get settled. Yeah, this is an important phase of this innings, the power play. The more runs you get in the power play, it's important to set a target. This is a flat pitch, good for batting, so 300 runs needed. Batsmen will have to get their act together and start using their willow. Already you can see the change of pace from Imran Khan. He's realized pretty early doors that there's not a lot for him in this pitch. Have a close look at the pitch. It's pretty dry, no grass whatsoever. There's some cracks, but they're pretty firm. I don't think they will have any effect. If anything, with this heat, probably it will go slower and lower as the day goes along. You think there will be some help for the spinners later on? Probably. I don't think how much of a consequence it will be, but there will be some help. Reverse swing will be another thing that you need to keep an eye on. If you look at the square where that ball went, it's pretty abrasive. So reverse swing will be another factor. First over done and dusted, 2 for none. There's the two sides, household names on both sides. Ahmed Shehzad is in prolific form. Hussain Talat, Saad Naseem. The mercurial Umar Akmal is in the mix as well. And the up-and-coming Qasim Akram will also be the one to keep an eye on in this contest. Samin Gul is going to take up the attack from the far end, the Inzamam ul Haq pavilion end. And Ahmed Shehzad. Little bit of movement from Samin Gul. Coming into right-hander Ahmed Shehzad. Ahmed Shehzad was once part of Pakistan's team in all 3 formats. Has lost his way in recent years. Well, he was hit by that Anderson bouncer and then he lost his way, and I feel it took him a few years to come back into form. He's getting there now and he's a good player. Slip and a short cover catching. It's the 2 close catchers. A little bit of width on offer. Ahmed Shehzad couldn't pierce the gap. Sajid Khan got in the way. Early signs are that there's not a lot for bowlers in this pitch. Batsmen could have a field day. The first over was good, and Samin Gul, who's a good bowler, has been playing for a few years. Had a good PSL a few years ago. Bowled well.
and then sort of went into the oblivion. Now he's come back. Last the T20 national T20, Sameen Gul did well. Good bowler, good pace, has a good seam position. Onto the pads, couldn't find the gap. Ahmad Shahzad. Nicely done by Imran Jr. Lefty. Sameen Gul finds that inward movement to the right-hander. Will be interesting to see how he copes against Rizwan Hussain, because he would love the width that angle can create, as we watch Ahmad Shahzad getting off the mark. Subdued start so far for Central Punjab. Understandable. They want to get their eye in. We don't see a lot of 50 overs cricket these days. Either it's Test cricket or T20, so it's... Well, I mean, it's like a rebirth for the 50-over game now, because the T20 took precedent over the 50-over game, which was the king of white ball format once. Calling quickly. There was slight hesitation there, but they made it. In the end, Rizwan Hussain is looking to drive on the up. This will be another thing to see on this pitch. See if that bounce is true enough for the batsman to go through the line. For a moment, thought there was a mix-up, but matters got resolved pretty quickly between the two batters. This is an important delivery, because Ahmed must be thinking he needs to get runs. This is the power play. But Faisal, I feel, you know, the 50-over game in comparison to the 20-over, the batsman has a lot of time. So the batsman can take a few overs to get settled. Look what the bowler is doing, look what the pitch is doing, you know, and then he can strike. It's not essential, like in the 20-over format, to hit from ball one. Absolutely. 50 overs does provide you with plenty of time to get your eye in. At the same time, the modern-day batsmen, they do like to use the power play, and power play is an important phase. At the moment, Ahmad Shahzad is prepared to have a look in. 2 overs gone, 4 for none. Skipper Khalid Usman and Imran Khan Sr. thinking about a few plans already. It's pretty hot in the middle, and it's going to get hotter as the sun beats down. Bowling from KPK so far, they haven't allowed Rizwan Hussain to free his arms yet. We've known and we've seen him in first-class cricket that how much he loves that width outside the off stump. He's a tall boy. He can free those arms. No width just yet for him. For the left-hander, the width is both agony and ecstasy, because that is where he gets his run, and that is where he can get out also, flashing out in the slips or the gully. So it's a very interesting scenario for a left-hand batsman. I think the Central Punjab boys are taking their time, trying to set up a total. Just a hint of width, not a lot though, and neither the length to work. Sajid Khan, fresh from his exploits against the Australians, have made it back to his regional team. Pretty difficult series for him with the ball, but he'll be glad to get into the white ball format and enjoy himself.
I think to set up a score, big score, they need a platform up at the top. The opening batters have to give a good start. And that is what they're trying to do, form a partnership, not lose a wicket early on. Right on the money once again. And, you know, when we talk about Central Punjab's cautious approach, they played 2 games here at the Multan Cricket Stadium in this year's Pakistan Cup. And when they batted first, they made 179 and 134. So probably those nightmares of those early collapsed innings, they're looking to build a platform first. Absolutely, exactly what I was saying, that they're probably looking to build a platform, not lose a wicket early on. So those low scores that you were talking about, they don't get them again. This is a big match, a semi-final. So they need to put up a good score, especially against this very dangerous KP team. They've got a very long batting lineup as well, Central Punjab. Come back to it after this ball. Another slow cutter from Imran Khan, just rolling the fingers over it. Good, clever change of pace. Talking about the batting lineup, Ahmed Shahzad, Rizwan Hussain, and then we got Hussain Talat, Saad Naseem, Umar Akmal, Qasim Akram. They keep coming at you. Zafar Gohar, Fahim Ashraf, Wahab Riaz. It's a pretty long batting lineup. And Imran Khan, very, very canny operator. Slightly slower ball, deceiving the batsman. Very, very wily customer, Imran. The batsman also knows. He gave him a smile. He knew exactly what he was trying to do, yet he couldn't do anything about it. Once again, this one just gripping off the pitch a little bit. Imran Khan, like I said on the previous one, he didn't roll his fingers, but he still managed to come up with a newer slow delivery, I think. Change of pace was very obvious on this one as well. It's not your conventional off-cutter, roll of the fingers, but it still gripped and went away with the seam. Probably he's been working on a new delivery. They have to start scoring and think about scoring. They can't leave it too late. There was that width. Rizwan Hussain rather couldn't capitalize. Good intelligent over from Imran Khan. A maiden, in fact. 4 for none. There's a wide slip in place for Ahmed Shahzad. Sameen Gul, who likes to bring the ball in to the right-hander. Didn't see much swing on that one. They're now thinking about scoring runs. It's the 4th over. They haven't got much on the board, just 4 runs. So I understand the fact that they want to build partnerships and want to give a platform, but they can't take too many overs because that builds a lot of pressure on the batsman. So I think this is the time when they should try and open up, try and play some shots, take a few risks. Good lengths once again from Sameen Gul. Nothing much to work with for the Central Punjab batters from KP bowlers, who's really been on the button. Could say Rizwan Hussain had a hint of opportunity on the last ball of the last over. He missed out there. And that will build pressure on these two. Like I said, Central Punjab have a very long batting lineup.
there's no excuse for so many dot balls. I can get you don't get a boundary ball, but drop and run or just rotation of strike is the order of the day if the boundary balls are not available. You go once again straight to the fielder, although the fielders are pushed back, but no intent shown. Singles are very, very important because it builds pressure. If you're not getting boundaries, at least you rotate the strike, which is important. This is the coaching staff, Central Punjab, a heavily loaded coaching staff. 4 test cricketers involved. Ashraf Ali on the right of your picture, the great Abdul Razak, Akram Raza as well. The one that you can't see in the picture is Humayun Farhat. Off the edge, it will run away. An excellent effort there in the deep. Great work. Definitely saving a couple of runs. Sarwar Afridi, the man to keep an eye on. He's really made some waves in this tournament with his sterling performances with the bat and the ball. Made a good contribution in the field already for his team. Once again, Ahmed Shahzad got caught on the crease, squared up. There you go. Very committed. I think the batsmen are now getting wary, and like you were saying earlier, they're not getting singles. Oh, what a shot. First boundary of the day, and this is Ahmed Shahzad. Stand and deliver. He needed that. What a beautiful cover drive that was. Just really good on the feet, head position beautiful, everything in motion. Just look at this. Oh, beautiful high back lift. Slightly short, and he took his time and drove it through the covers. Beautiful shot. On the up. Not a big stride, but he got in line beautifully. This time is short. Sameen Gul really testing the middle of the pitch. An appeal, but not sure about it. It's a typical response from a fast bowler after getting hit for a boundary. A lot of effort from Sameen Gul. Almost got knocked over his feet to get that ball this high. Ahmed Shahzad looking to the square leg umpire, but no signals. I'm not sure what that was all about. That's a typical fast bowler's response. You get hit for a 4 and then you respond with a bouncer. I like that. That's good. That was good aggression. Edge and away from that fielder, which was pretty wide anyway, but still eluded him. Rizwan Hussain was looking to force the pace, got the edge, and got himself a boundary, a streaky one. Was looking to drive that one through the cover area, got the edge. Was lucky that it was probably felt short of the fielder, the slip fielder. He needs to now take the initiative, Rizwan, and just take a look at this. Slightly moving away and just slightly away from the slip fielder. Streaky boundary. Rizwan Hussain looking to create his own width now, staying leg side of the ball, looking to free that offside. You have to say the discipline of KP bowlers have been really good in these early exchanges. There's always this idea of this
wide first slip. After that edge, it's gone back to regulation first slip. He was pretty wide at the start of the over when that boundary went through. That ring of fielders on the offside. No width whatsoever, and good length from Imran Khan. Not a big fan of the wide slip, Faisal. I like it to be the conventional position. I've never seen that wide slip being effective. Either you have two slips or you have one slip at its position. So once the horse is bolted, I mean, you know, you can't set things right afterwards. It has to be right initially because chances are not being offered, you know, all the time on this pitch. The bowler has to create those chances, and if they're not taken, then the fielding side does suffer. Looking to make a move, in the air and gone. Rizwan Hassan's frustration really cost him his wicket. Imran Khan, his discipline was immaculate, and Rizwan Hassan was the first who blinked his eye, and he paid the price. Central Punjab has lost the first wicket. Yeah, that was a result of immense pressure being put by Imran Khan. Very accurate bowling, great line and length. Just take a look at this. Caught, and was trying to play it over this short cover's head. Couldn't get the elevation and caught. Credit to Imran Khan's bowler. Rizwan Hassan's vigil has come to an end. Subdued knock, gone for 7. Central Punjab 14 for 1. KP has done well in this phase. Almost 5 overs, 14 for 1. Put a lot of pressure, bowled well. Imran Khan Senior, Samin Gul, both put pressure. There's one good shot in these 5 overs, that cover drive that Ahmed Shahzad played. Other than that, they have been subdued, the Central Punjab batters, and KP have been the dominant side. If they want to get 300, they'll have to open up, spread their wings, play a few shots, entertain. Looks like it's Faizan. Change of batting order there from Central Punjab, who's listed to bat at number 9 originally. But I think that slow start, probably coach Abdul Razak has decided to make the move. Only 3 matches for him at this level. Wow, that's interesting. Faizan must have some hitting ability. That's why he's promoted up the order by Razak, who was such a special hitter himself. So maybe this is a pinch hitter. Talking about the wicket, look at this. There was not there. He was looking to hit it on the up, but no timing, no elevation, and no control. Rizwan Hussain, a disappointing end. Was really looking forward to see him, because we all know he can really be belligerent in this format. And talking about number 3, who can forget Abdul Razak, the role he played at number 3 when he first came onto the scene at the international level. Probably he has something similar up his sleeves as a coach. This could be interesting. Faizan on strike. Imran Khan has given nothing away. 14 for 1. Five overs gone. Next 5 very important, because those will be the last 5 overs of the power play. They'll have to, like I've been saying, they'll have to show more initiative, play a few more shots, spread their wings. This is the road to the semis.
Central Punjab managed to win 4 games in the league stage, 2 back-to-back wins, 5 rather, but 2 back-to-back wins really propelled them into this knockout stage, edging out Southern Punjab. So they have some momentum. They've beaten Khyber Pakhtunkhwa by 15 runs in round 9. In the air, but once again, Ahmed Shehzad. I get you don't get the boundary balls, but you see when you hit the ball, still Ahmed Shehzad, there is no intent to take a quick single or just put some pressure on the fielders. He's really taking his time. Dot balls have been a real problem, not just for Ahmed Shehzad or any other batsman, but they were a problem for Pakistan. But Babar Azam has corrected that. That's the record of ODI record of Ahmed Shehzad. Slightly shorter, hurried him onto the back foot. I think the Ahmed Shehzad of his prime would have put that ball away. He was really rushed into his stroke. Probably didn't pick it up from the hand. Running between the wicket has been a real problem, but lately it's improved for Pakistan. But throughout the years we've had this problem, and the rotational strike has been a thorn in our flesh. Pakistan coaching staff has been working on it. It has improved, but still has to do better. Ahmed Shehzad had scored 421 runs in this tournament prior to this game. So he's been in good nick, but 7 of 14 this morning. You have to give credit to KPK as well, though. They haven't given anything away. Once again, that wide slip and a ring of fielders on the offside. No gaps for Ahmed Shehzad to work with. There you go. That's more like it. Ahmed Shehzad got onto it in a flash. It wasn't that short, but Ahmed Shehzad got underneath it and smashed it over the fence. That was a good pull shot in front of the square, rock back, and played it really beautifully. He plays that shot really well. This is one of his go-to shots. Just look at this, slightly short, rock back, and 4 runs in the gap. That's what's needed. It's brought about a field change already. Similar kind of delivery that he missed out earlier in the over. This time he was ready. Slip has gone out, and square leg has been sent back. One positive blow. That's what it does to the field. Once again, nice roll of the wrist from Ahmed Shehzad. Looking for 2. Will get there comfortably. Although Faizan turned blind on the second run, but he made it comfortably in the end. Once Ahmed's played that shot, the pull shot, his confidence has returned. You could see the next couple of runs he took, you could see that he's gotten his confidence back. That was nicely played in the gap for a couple of runs. And that is because of the previous shot he played, the 4 runs, the pull shot. It doesn't take too much time for the batsman to get his confidence. Once he plays his favorite shot, he kind of opens up and can start playing other shots also. Once again, shot couldn't time it. Sweeper is back there. 6 gone, 21 for 1.
रिजवान हुसैन आज ज़्यादा मुतासिर नहीं कर सके, बड़ा अच्छा मौका उन्होंने गंवाया है यहाँ इस टेलीकास्ट होने वाले मैच में अपनी कारकर्दगी और अपनी सलाहियतों के इजहार का। साद नसीम को अभी आना है, फ़हीम अशरफ की वापसी हुई है सेंट्रल पंजाब की टीम में, जिसने खासी तगदौ के बाद सेमीफाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया। इमरान से यहाँ पर सामना होगा, जो बड़ी नबी तुली बॉलिंग कर रहे हैं इस अपने पहले स्पेल में। अहमद शहजाद जो हैं वो अच्छे टच में लगे हैं, बैकफुट पर अच्छा खेलते हुए नज़र आए हैं, गेंद उन्हें बर वक्त दिखाई दे रही है। पिछले ओवर में एक बड़ा खूबसूरत पुल शॉट खेला था, जो आमतौर पर आप उसी वक्त खेल सकते हैं जब अच्छी फॉर्म में हूँ। मोहम्मद अयाज मेरे साथ हैं कॉम बॉक्स में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं तारिक, आपने पहले अहमद शहजाद ने टाइम लिया, बड़ा अच्छा सेट हुए, उसके बाद आज़ादाना शॉट्स खेल रहे हैं चारों जानिब। ये 2 चौके अहमद शहजाद, ये क्लासिक ऑफ ड्राइव किया और उसके बाद बैकफुट से खेल दिया। पावर प्ले का अब फ़ायदा उठाने के लिए कोशिशां हैं इस बड़ी अच्छी बैटिंग पिच पर मुल्तान की। इन्हीं शॉट्स की वजह से मशहूर और मकबूल अहमद शहजाद। यहाँ पर 1 रन का मौका हो सकता था क्योंकि फील्डर खासा दूर थे, बिल्कुल दायरे के एज पर थे। मना किया अहमद शहजाद ने मोहम्मद फैजान को। बढ़ता हुआ स्कोर 21, 7वें ओवर का खेल जारी। अहमद शहजाद के लिए जो ऑफसाइड की फील्ड है उसमें अभी भी अशफाक अहमद को स्लिप में देखा जा सकता है, थोड़ा सा वाइड हो गए हैं पहली स्लिप पर। विकेट कीपर रेहान आफरीदी से कुछ फासले पर। फिर ऑन साइड में इस वक्त 2 फील्डर दायरे के अंदर हैं, जिनमें मोहम्मद सरवर हैं मिड ऑन पर, और मिड विकेट पर मोहसिन खान, जिनने कुछ देर पहले बड़ा अच्छा कैच लिया था रिजवान हुसैन का। अच्छा शॉट अहमद शहजाद का 23 से 1 रन मुकम्मल किया, रन आउट हो सकते थे लेकिन बॉल फंबल हुआ। दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे, मना किया मोहम्मद फैजान ने। 1 रन का मजीद इजाफा। बॉलिंग जो है वो खासा है, वो खूबी है इस खैबर पख्तूनख्वा की टीम की, जिन्हें 7 मैचेस जीते। इमरान जो हैं इब्तिदा में इनको कोविड था, शुरू के मैचेस नहीं खेल सके थे, पिछले 3 मुकाबलों में इन्होंने हिस्सा लिया। ये इस टीम की बॉलिंग के सरकेल हैं, नई गेंद को स्विंग करते हैं, बाद में रिवर्स स्विंग कर सकते हैं। खासी विड्थ मिली, ऑफ साइड की फील्ड को पारा पारा कर दिया। शानदार शॉट लगाया फैजान ने, उनका पहला स्कोरिंग शॉट चौके की सूरत में। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, अंपायर का खूबसूरत इशारा। 4 रन, इस 4 रन के इजाफे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 26। 1 विकेट के नुकसान पर। रिप्ले में देख सकते हैं आप, काफी बाहर था ये बॉल। जहां जब इतनी बाहर गेंद करेंगे इस तरह की बिल्कुल सपाट पिच पर, फिर बैट्समैन से किसी तरह की रहम की उम्मीद ना की जाए। तो बेड़ियां थी एक पैरों पर फैजान के, क्योंकि नए नए आए हैं, बड़ा मौका है, पहली बार इतने बड़े टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ वो उतारने का मौका उनको फराहम कर दिया इमरान खान की इस विड्थ ने। और अहमद शहजाद जैसा बल्लेबाज उनके साथ मौजूद हो तो यकीनी तौर पर उनको एतमाद हासिल होगा इस शॉट खेलने के लिए। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े नाम हैं सेंट्रल पंजाब के ड्रेसिंग रूम में। अब्दुल रज़ाक हैं, अशरफ अली, इसके अलावा ये अकरम रज़ा और हुमायूं फरद। और ये खूबी है सेंट्रल पंजाब की, अगर आप टीम का जो थिंक टैंक देखेंगे तो इनके जो ऑफिशियल्स हैं ये चारों ही टेस्ट क्रिकेटर्स हैं।
और अपने तजर्बे का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए वो टीम को यहाँ तक लेके आए सेमीफाइनल तक। 7 ओवर्स मुकम्मल हुए, 26 पर 1। ये सफ़र रहा है खैबर पख्तूनख्वा का। उन्होंने अपना पहला मैच सेंट्रल पंजाब के खिलाफ ही 5 विकेट से जीता था फैसलाबाद में। फिर सदर्न पंजाब जो होम टीम थी उसको मुल्तान में शिकस्त दी उसके होम ग्राउंड पर 6 विकेट से। और ये आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो इब्तदाई मैचेस हैं ये पहले 5 में से 4 फतूहात हैं ये इन्होंने बाद में बैटिंग करके हासिल की अपनी बॉलिंग की बदौलत लो स्कोरिंग मैचेस से। लेकिन इन दिनों बैटिंग पर भी उनस आना चाहिए। समीन बॉल अंदर ली किनारा लगा मिड विकेट पर। 1 रन का मजीद इजाफा, इस 1 रन के इजाफे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 27। स्क्रीन पर साजिद खान हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के टूर से वापस अपनी टीम को ज्वाइन किया उन्होंने। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही उनकी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। आज अच्छा मौसम है मुल्तान में, हल्की हल्की खुनकी थी सुबह के वक्त और कल शाम भी यहाँ पर ठंडी हवा चलती रही। लाहौर की निस्बत यहाँ पर गर्मी कम है। शानदार टाइमिंग, लाजवाब क्रिकेट शॉट। इस बार फिर बैकफुट पर खेला फैजान ने। 2 फील्डर्स ने गेंद का ताकुब किया लेकिन ये बड़ी तेज से उनको पीछे छोड़ती चली गई। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। फैजान के बल्ले से रन उगलना शुरू हो गए हैं। दूसरा चौका लगाया उन्होंने अपनी इस इनिंग का। नहायत स्टाइलिश बल्लेबाजी कर रहे हैं मोहम्मद फैजान। 2 फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे थे लेकिन किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। बॉल पलक झपकते में बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। और इस बार पुल किया, गेंद सीधी गई साजिद के हाथों में। एक और विकेट गिर गई। समीन गुल ने दूसरी कामयाबी से हमकिनार किया केपी को। हालांकि ये गेंद ऐसी नहीं थी जिसे आप विकेट टेकिंग डिलीवरी कह सकें। एक ही फील्डर थे ऑन साइड में स्कोर के सामने और उन्हीं के हाथों में खेल दिया फैजान ने। काफी टाइम मिल गया था मोहम्मद फैजान को लेकिन बॉल बल्ले पे सही तरीके से नहीं आया और सीधा मोहम्मद साजिद के हाथों में। काफी पीछे पड़े हुए बॉल को जोरदार तरीके से ऊपर से खेलना चाह रहे थे गालिबन लेकिन सीधा साजिद खान के हाथों में। समीन गुल अपना जज्बा दिखाते हुए, एग्रेशन दिखाते हुए अपनी पहली और मैच की दूसरी विकेट हासिल की। मोहम्मद फैजान के सूरत में समीन गुल ने 7 बॉलों पर 8 रन बनाकर बोझल कदमों के साथ पवेलियन की जानिब लौटते हुए मोहम्मद फैजान 31 2 विकेट खो के। हुसैन तलत आहिस्ता आहिस्ता मैदान में वारिद हुए हैं। मुश्किल में है सेंट्रल पंजाब की टीम। उनके 2 ऐसे खिलाड़ी मैदान बदर जल्दी हो गए जिनसे बड़ी तवक्कुआत थी। फैजान 2 अच्छे स्ट्रोक खेल चुके थे, रिजवान फॉर्म में थे लेकिन वो कैच नहीं करा सके। तो फास्ट बॉलर्स जो हैं तवक्कुआत पर पूरा उतरे हैं खैबर पख्तूनख्वा के।
जो कि उनकी टीम की स्ट्रेंथ भी है। दोनों ने विकेटें दिलाई हैं। तो इस तरह लेफ्ट राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है वो एक बार फिर यहाँ देखने में आएगा शहजाद और हुसैन की सूरत में। काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, तकरीबन 2000 रन्स बनाने के करीब हैं हुसैन तलत। बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। 141 रन्स नॉट आउट, ये इनका करियर का बेहतरीन स्कोर है। PSL का भी तजुर्बा है। लेकिन इस टूर्नामेंट में इन्होंने बैटिंग से ज़्यादा अपनी बॉलिंग से मुतासिर किया है। सेंट्रल पंजाब के टॉप विकेट टेकर्स में से एक हैं। एक निस सेंचुरी इन्होंने बनाई इस पाकिस्तान कप में। इस बार हदफ से हट गए थे समीन गुल, 1 रन का और इजाफा। लेग स्टंप से बाहर था, ये बॉल फ्लिक करना चाहते थे। वाइड बॉल के इजाफे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 32, 2 विकेटों के नुकसान पर 8वें ओवर का खेल जारी। विकेट मोहम्मद फैजान उठा के खेलना चाह रहे थे, कोई गलती नहीं की और रिवायती अंदाज साजिद खान का। मोमेंट जो है वो कहीं कहीं देखने में आई है, खास तौर पर वकार यूनुस एंड से जब इमरान खान बॉलिंग कर रहे थे। नई गेंद है कुकाबरा की, बड़ी जल्दी इसकी सीम जो है वो नरम पड़ने लगती है, बैटिंग ज़्यादा सहल होती जाएगी। इस बार देखिए पैड पर लगी लेकिन ऑफ स्टंप नज़र आ रही थी अंपायर को, शायद ये बल्ले पे भी लगी। जी इनसाइड एज हुआ तारिक और बॉल बल्ले पे लगने के बाद पैड पर लगी। कैसर वहीद है अंपायर। आमतौर पर मुल्तान की पिचेस में हमने देखा है कि अगर शुरू में बैट्समैन कुछ वक्त गुजार लेते हैं तो बाद में यहाँ पर रन्स मिलते हैं। इस टूर्नामेंट के इब्तदाई अय्याम में टॉस जीतने वाली टीमें बॉलिंग की बदौलत कामयाबियाँ हासिल कर रही थीं और पहले 5 मैचेस में जो बेहतरीन स्कोर था पहले खेलते हुए किसी भी टीम का वो 184 था, लेकिन बाद में 300 रन्स भी बने, 250 का हिस्सा भी टीमों ने उबूर किया। जूं जूं गर्मी आई है मुल्तान में। अच्छा बॉल था समीन गुल का, अंदर आता हुआ बॉल सीधा मिड विकेट पर। किसी स्कोर का कोई इजाफा नहीं इस बॉल पर। 8 ओवर्स के इख्तिताम पर 2 विकेटों के नुकसान पर बढ़ता हुआ स्कोर 32। बॉलिंग कार्ड आपके सामने। इमरान खान सीनियर 4 ओवर्स में 1 मीडियन करवाया उन्होंने, 11 रन्स देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। शानदार बॉलिंग करवाई अभी तक इमरान खान ने। समीन गुल ने उनका भरपूर साथ निभाया, 4 ओवर्स में 21 रन्स देकर 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद फैजान को आउट किया मिड विकेट पर साजिद खान के हाथों। मुल्तान के आसमान पर बादलों का एक टुकड़ा भी नहीं है। ये देखना दिलचस्प होगा अगर यहाँ को हाई कैच की सूरत बनी। कई बार इतना आसान नहीं होता। जब हमने देखा खासतौर पर कराची में जब दिन के वक्त इस तरह मतला साफ हो और कैच हाई जाए तो मुश्किल हो जाती कई बार फील्डर्स को दिन के वक्त कैच करना। ये बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, जहां 2001 में पहला टेस्ट मैच खेला गया था। यहाँ पर पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान 2004 की तारीखी सीरीज़ में पहला टेस्ट मैच हुआ था। हरिंदर सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। इंजिमामुल हक ने पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ तारीख साज कामयाबी से हमकिनार किया सेंचुरी बनाकर। और इससे कट किया लेकिन फील्डर हैं शार्टमैन बाउंड्री पर। इंग्लैंड को पाकिस्तान ने यहाँ शिकस्त दी थी 2005 के सीज़न में टेस्ट मैच में। अच्छा टेस्ट सेंटर है, शहर से तकरीबन बाहर है,
यहाँ पर नतीजा खेज ज़्यादातर मैचेस हुए हैं, अच्छी इनिंग्स, कई अच्छे बॉलिंग स्पेल हमने देखे हैं। खिलाड़ी महसूस होते हैं यहाँ की अच्छी आउटफील्ड पे भी खेल के। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के लिए एक नेमत से कम नहीं ये स्टेडियम, और वो यादगार मैच जिसमें इंजमामुल हक ने फतह से हमकिनार करवाया था बांग्लादेश के खिलाफ, कट शॉट पे चौका लगाकर, और मुल्तान में ही अपने होम ग्राउंड में इंजमामुल हक की वो यादगार इनिंग तारीख का हिस्सा। काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं सेंट्रल पंजाब की टीम में। वहाब रियाज कप्तान हैं, अहमद शहजाद इस वक्त बैटिंग क्रीज पर हैं, उमर अकमल हैं। ये हुसैन तलत के लिए एक नज़र डालते हैं फील्ड पर। ये 6-3 की फील्ड है ऑफ साइड की। एक फील्डर अब गली में भी आ गए। तो बात कर रहा था टेस्ट क्रिकेटर्स में जफर गौहर टीम में शामिल हैं। उमर अकमल विकेट कीपिंग करेंगे। लेकिन इस टीम का जो इन्हिसार है सेंट्रल पंजाब का, वो इनकी बैटिंग पर है। खासी लंबी बैटिंग लाइनअप है, अहमद शहजाद से लेकर वहाब रियाज तक जो 10वें नंबर पर आएंगे। और ये रजा लिडार हैं जो पहले कप्तानी कर रहे थे, लेकिन हैरानकुन तौर पर ये आज टीम में भी शामिल नहीं है। जी, वो एक दो प्लेयर्स इन्होंने सेमीफाइनल में चेंज किए, उनके तजर्बे से भरपूर फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं सेंट्रल पंजाब। अभी तक एक मुश्किल रही है, बाउंड्रीज ज़रूर मिली हैं, लेकिन इतनी आसानी के साथ जो स्ट्राइक रोटेशन है वो देखने में नहीं आई, और इसमें ज़्यादा दिलचस्पी भी नज़र नहीं आई। आप नरम हाथों से खेलें, दौड़ने की कोशिश करें, इस मामले में ज़्यादा अर्जेंसी दिखाई नहीं सेंट्रल पंजाब के टॉप ऑर्डर ने। जैसे कि आप बता रहे थे तारिक कि जब तक पहला सेशन सरवाइव कर जाते हैं तो उसके बाद लंबा स्कोर करने में कामयाब होती है कोई भी टीम, क्योंकि पहला जो सेशन होता है 10 से 15 ओवर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस विकेट पर मुल्तान की। ये रजा लिडार अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और राउंडर हैं। रजा लिडार इब्तदाई दिनों में कप्तान थे। कासिम अकरम ने भी एक मैच में सेंट्रल पंजाब की इस साल कप्तानी की। ये अच्छा स्ट्रेट ड्राइव आउटफील्ड खासी तेज है जो गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा देगी। शानदार शॉट, अच्छा तवाजुन, गेंद की बिल्कुल पिच तक अगला पांव ले जाते हुए खेले हुसैन तलत। खालिद उस्मान ने अच्छी कोशिश की लेकिन काफ़ी दूर उनकी पहुंच से बॉल। अगले कंधों पर पड़ा हुआ इस बॉल को निहायत ही सीधे बल्ले के साथ खेले, दो फील्डरों के दरमियान से होता हुआ बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। हुसैन तलत ने आखिर तक बॉल को देखा। इससे हुसैन के एतमाद में यकीनन इजाफा होगा। सेंट्रल पंजाब को ज़रूरत है कि एक लंबी इनिंग्स खेले। पीएसएल में कहीं कहीं हमने देखा था ये अच्छी बैटिंग फॉर्म में थे जब पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे थे। 37 पर 2। जैसे कि आप बता रहे थे तारिक, काफ़ी लंबी बैटिंग लाइन है सेंट्रल पंजाब की। वहाब रियाज तक ऐसे पवेलियन में मौजूद हैं जो लंबी इनिंग खेलने की सलाहियत रखते हैं और स्कोर्स में तेज़ी से इजाफा करने की सलाहियत रखते हैं। समीन गुल लंबा स्पेल कर रहे हैं। अपना 5वां ओवर अभी बुलाएंगे इंजमामुल हक इनक्लोजर से। इंजमामेंट राधा कहना चाहिए, लेकिन अब स्लिप को हटा लिया गया है सेट अहमद शहजाद के खिलाफ। इस वक्त भी दो ही फील्डर बाउंड्री पर हैं, थर्ड मैन और स्क्वायर लेग पर। अहमद शहजाद ने एक बड़ी इनिंग्स खेली 150 रन की फैसलाबाद में। अपनी फॉर्म दिखाई है 158 रन की उस इनिंग्स
के अलावा भी अहमद शहजाद ने उससे पहले टीम से बाहर हुए थे, नेशनल T20 टूर्नामेंट में अच्छा खेलते हुए नजर आए थे अहमद। जी बिल्कुल, अहमद शहजाद की उस इनिंग के बाद उनमें काफ़ी एतमाद आया होगा और आज भी वो उसी रिदम से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 11 मैचेस में 421 रन बनाए हैं अहमद शहजाद ने। ये जो इनका हाईएस्ट दिखाया गया था, थोड़ा सा इस पर एतराज़ है मुझे ना। ये 158 है इनका इस टूर्नामेंट में बेहतरीन स्कोर अहमद शहजाद का। यहाँ 128 जाहिर हो रहा था, तो तस्सीह करते चलें ये 158 है अहमद शहजाद का जो बेहतरीन स्कोर है इस सीज़न में पाकिस्तान कप के दौरान। उमर अकमल, हुमायूं फरहत, उमर अकमल खासा इम्कान है कि विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। अच्छा बॉल था समीन का, सीधे बल्ले के साथ खेले हुसैन। किसी स्कोर का कोई इजाफा नहीं इस बॉल पर, बढ़ता हुआ स्कोर 38। 10वें ओवर का खेल जारी। हुसैन तलत जो हैं, अगर ये फास्ट बॉलर्स का फेज गुजार लेते हैं तो उसके बाद इनके लिए इससे भी मरहला आसान हो जाएगा। अगला मरहला के स्पिनर को बहुत अच्छा ये खेलते हैं। और यहाँ फिर खालिद उस्मान आएंगे जो कि बाएं हाथ से स्पिन बॉलिंग करते हैं। उनके खिलाफ ये अच्छी बैटिंग करने के अहल होंगे। साजिद खान एक और ऑफ स्पिनर हैं जिनका आगे चलकर इनसे पाला पड़ेगा, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि ये बड़े मैच में अपनी अहलियत साबित करेंगे। आज सेंट्रल पंजाब को अशद ज़रूरत है। और मोहम्मद सरवर भी बॉलिंग में उनका हाथ बटाएंगे, जो इस वक्त बड़ी शानदार बॉलिंग करा रहे हैं पाकिस्तान कप में। अरशद इकबाल को भी सोचा जा सकता था खिलाने के मुतालिक, जिन्होंने इस चैम्पियनशिप में खासी विकेटें उड़ाई हैं खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, लेकिन आज उन पर इमरान जूनियर को तरजीह दी गई, जो कि एक तो मुख्तलिफ एंगल लाएंगे टीम में, और क्योंकि ज़्यादा अच्छी बैटिंग पिच है तो गेंद को पटकने की भी सलाहियत रखते हैं। ऐसी पिच पर आमतौर पर ऐसे तेज़ बॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है फील्ड पर कप्तान को, इसलिए अरशद इकबाल पर तरजीह दी है इमरान जूनियर को, जिन्हें शायद इस ओवर के बाद ही हम एक्शन में देखेंगे वकार यूनुस एंड से। अच्छा बॉल था, पुल किया उसको, बॉल बल्ले पे सही तरीके से नहीं आया। किसी स्कोर का कोई इजाफा नहीं इस बॉल पर। समीन गुल मुस्कुराते हुए हुसैन तल्लत की जानिब देख रहे हैं। 10 ओवर्स के इख्तिताम पर बढ़ता हुआ स्कोर 38, 2 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये लेट हो गए थे वाज़े तौर पर। हुसैन तलत जब फास्ट बॉलर का ये सामना करते हैं, कई बार देखा जाता है ये टाइम नहीं कर पाते। स्पिनर को अलबत्ता ये बड़ी महारत से खेलने के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ मोहम्मद सरवर जो ऑलराउंडर हैं, बैटिंग में धाक बिठा चुके हैं, ऑफ स्पिन करते हैं, ये बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि शायद वो मीडियम पेस करेंगे। बॉलिंग में पहली तब्दीली इमरान खान की जगह पर लाने का फैसला किया है खालिद उस्मान ने मोहम्मद सरवर को। लेकिन यहाँ जो इमरान है, ख्याल यही था कि शायद जो इमरान जूनियर हैं लेफ्ट आर्म सीमर, उनको लाया जाएगा। मुमकिन है कि अब दूसरे एंड पर उनको आजमाया जाए। समीन गुल की जगह पर
तकरीबन हर साल ही खैबर पख्तूनख्वा की टीम में कोई नए चेहरे हम देखते हैं। पिछले साल इमरान जूनियर को देखा गया था, इसके अलावा वसीम जूनियर थे पिछले सीज़न में। इस सीज़न में ये मोहम्मद सरवर आए हैं, सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाए हैं, विकटें मिली हैं, 5 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं मोहम्मद सरवर आफरीदी। इनके अलावा इस साल मोहम्मद मोहसिन की सूरत में नया खून शामिल किया गया केपी की टीम में, जो कि ओपनिंग बैट्समैन है और इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं शॉर्ट कवर्स में। अच्छा बॉल था, अंदर आया, मिड विकेट पर खेले अहमद शहजाद, सीधा फील्डर के हाथों में। ये अहमद शहजाद के लिए जब इमरान बॉलिंग कर रहे थे तो स्लिप नहीं थी, लेकिन अभी ये देखा जा सकता है अशफाक अहमद वापस आ गए हैं स्लिप पोजीशन पर। सीनियर क्रिकेटर हैं अशफाक अहमद, केपी के ओपनिंग बैटर। ऐसे विप किया, इस बार आसानी के साथ फील्ड को अबूर किया और बाउंड्री पा ली अहमद शहजाद ने। अच्छा शॉट था, दो फील्डरों के दरमियान से होती हुई बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। इमरान खान को पहले ही मालूम हो गया था कि बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी। क्रीज के बाहर खड़े हुए थे लेकिन ज्यादा रफ्तार नहीं थी, इसलिए वहीं से ही इसे अहमद शहजाद पुल करने में कामयाब हुए, तकरीबन फ्रंट फुट से। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा अहमद शहजाद की जानिब से, लेकिन बाउंड्रीज के बाद जो स्ट्राइक रोटेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है और इस तरफ तवज्जो दी नहीं सेंट्रल पंजाब ने। यही वजह है कि स्कोर अभी 42 है 11वें ओवर में। जी बिल्कुल तारिक, सही कह रहे हैं आप। और अगर ये रोटेशन जारी रहती तो स्कोर इस वक्त 50 से ऊपर होता। काफ़ी टाइम मिल गया था अहमद शहजाद को इस बॉल पर, हालांकि बॉल पूरा मिडल नहीं हुआ, उसके बावजूद बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। तीसरे फील्डर को अब बाउंड्री की तरफ भेजा है, लेकिन वो ऑफ साइड में, गेंद लेग साइड में गई है। 2 रन ले जाएंगे यहां पर भी। अभी भी दायरे के अंदर जो कप्तान हैं वो 6 फील्डर्स को रखना चाहते हैं। बहुत अच्छी कप्तानी की खालिद उस्मान ने। 10 ओवर्स मुकम्मल होने के बावजूद उन्होंने ज़्यादा फील्डर्स को दायरे के बाहर किया नहीं है। ये टच एंड टर्न, जानते थे कि पहला रन जब आप तेज़ से ले लेते हैं तो दूसरे में कई बार दुश्वारी नहीं होती, अपनी एनर्जी बचाई जाए इस गर्मी में। अच्छा बॉल था, अंदर आया, थोड़ा सा बॉल बल्ले का अंदरली किनारा लेती हुई पैड पर लगी। रन लेना चाहते थे अहमद शहजाद। अच्छी कॉल हुसैन तल्लत की। साजिद खान तेजी से बॉल के ऊपर आए। सीधे बल्ले के साथ खेले 11वें ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ। 11 ओवर्स के इख्तिताम पर 2 विकेटों के नुकसान पर बढ़ता हुआ स्कोर 44। Left arm over. That's middle. $44 for 2 is Central Punjab at the moment.
after deciding to bat first in this all-important first semi-final of Pakistan Cup 21-22. They got a shock off when they lost 2 early wickets. Rizwan Hussain and Mohammad Faizan, who looked really good, but couldn't really capitalize that start. We have a change in bowling. Imran Khan Jr., the left arm, Seema. Oh, that kept low. I've got Shah Faisal alongside me. Shah Faisal, Khalid Usman would be a happy man at the moment because they're bowling first and they kept things tight at the moment. Absolutely right, Ali. KPK bowlers have really done well. Their disciplines have been very good. You can argue that slight lack of intent from the central Punjab batters. But Ahmed Shahzad is still there in good form, so he will be looking to capitalize on the time he spent in the middle. This is nicely driven, but straight to the man. Yeah, I totally agree with you when you say Ahmed Shahzad is looking good, he's looking solid. He means business. He's got runs in this tournament, highest of 158 runs. He's played a big inning already, and Central Punjab would be hoping that he can carry on and play on a big inning here. Absolutely right. We've seen this all too often this morning, hitting straight to the fielder with firm hands. Very few boundary balls have been available, but that drop and run or intent for singles, we haven't seen that either. This is good cricket. Very good cricket by Hussain Thalat, just playing it with soft hands towards third, taking one. His partnership now growing, Shah Faisal. 14 runs. It's a very important passage of this game, because these two are the main pillars of Central Punjab. Although they've got plenty of batting to come. Umar Akmal scored some runs in the last game. Has also been the wicketkeeper of Central Punjab. We surely have a great game in our hands. There's plenty of big names to look forward to. I'm more interested in a couple of newcomers. I'll come back to it after this ball. Always the intrigue of the domestic cricket. Spot on. Just bowling wicket to wicket. That's the order of the day for KP bowlers. They've not given anything away. Just bowl wicket to wicket, no width whatsoever. And that is why we saw 2 early wickets. Rizwan Hussain was frustrated with that line and length. Mohammad Faizan looked good. It timed the ball nicely. Ahmed Shahzad has looked good. But have a look at the field for Ahmed Shahzad. There's a deep cover in place, extra cover point. A fielder at mid-wicket also. That's tucked away. There is a fielder. One more run added to the total. Have to wait for the signal. I think it's leg byes. It's beautiful city of Multan, also known as the City of Saints. Beautiful overview of this city. As we just, these matches going live on PTV Sports, we will expect a few people coming in also. People have started also to come in. As the matches progress, there will be more people. Somehow they've not been able to get that pace going on this pitch. The batters have struggled to get that pace. Again, he wanted to time it, but could not quite get that. The partnership is 15, Central Punjab 46 for 2. And the beautiful drone shot of the Multan Cricket Stadium. Definitely one of the best cricketing facilities in Pakistan. And I think with the international cricket resuming in Pakistan in full throttle, this venue is going to see more and more of international cricket. It certainly deserves it, and the whole facility actually is very, very good. Talking about the facilities of this ground, it's such a beautiful stadium, Shah Faisal. Probably one of the most beautiful stadium in Pakistan that I have witnessed. I've been to a lot of stadiums, but the way the stands are made, especially the Inzamam ul-Haq enclosure, gives the best view to all the viewers there. Wonderful scenes. As we see the change in bowling, Sajid Khan, fresh from Australia series,
played for Pakistan in that Test series, now here doing the duties for KP. That shows the commitment of the man. Just a few days ago, he was playing Test cricket for Pakistan. Here he's representing his region. That is what you want to see from a cricketer, the commitment level. It'll be interesting to see how quickly he adjusts between the formats. Very experienced by now. He's got a slip in place. Straight away down the track. In the gap, will run away for 4. A very handy boundary for Ahmed Shahzad. He's looking really dangerous. Signature Ahmed Shahzad stroke of the spinners, using the feet. That little whip of the wrist as well when he got close enough to the ball, not quite to the pitch, but close enough to go up and over and find the gap between the two sweepers on the onside. Look at that intent in the eyes. Footwork was good, the balance and the wrist work. Good commitment. He means business, Ahmed Shahzad. Hoping to make a comeback for Pakistan team. He's done well. Sajid Khan just put under pressure straight away. And as we saw that boundary, there's a fielder being placed at mid-wicket too. Gave himself room this time on the offside. Through the gap. Fielder behind it will be able to stop it, but not before they come back for a second. Already the slip is out and Ahmed Shahzad is looking to maneuver the field. This time he gave himself some room, moving away from his stumps to free his arms. Wasn't really a bad delivery, but was put away for runs by Ahmed Shahzad. That's better. He's catching up with that strike rate now. The length would be so key for Sajid Khan, fresh from a test match cricket, straight away to one-day cricket. But he's so experienced, he's been around the circle for a long time. It won't take him long. Down the track again. He's realized that he has to get to the pitch of the ball, Ahmed Shahzad. Such an experienced batter. That was well bowled from Sajid Khan. He saw him coming. Pulled the length back, tried to fire it to his leg stump as well. Good contest between two very experienced players. And now we got a left-hand, right-hand combination to contend with. Another beautiful shot. You can see the field maneuvering for the left-hander. That sweeper is going back on the onside. Back to the regulation. 5 fielders in the ring with a slip-in. Straight to the captain, Khalid Usman. He's the leading wicket taker, Shah Faisal, in this tournament. He's led the team well. There have been a lot of changes in his side. People coming, people going. Still been able to top the lid. It's a great achievement. And that is what you associate with a team like KP. We've always seen that. That never give up nature. Wonderful to see. 54 for 2, Central Punjab. It's time for drinks.
It has been a hard work for Central Punjab batters. Rizwan Hussain losing his wicket to Imran Khan Senior. 7 runs he scored. Mohammad Fizani looked good. He was timing the ball nicely until the rush of blood made him play that pull shot straight to Sajid Khan of Samin Gul. Scored 8 runs. But the good thing, the positive side is Ahmed Shahzad is still there on 31 with Hussain Talat on 6. KP's bowling has been pretty disciplined. The only blemish on their chart, you could say, is the very slow over rate at the moment. 13 overs in an hour and 10 minutes is pretty slow going. Imran Khan, 1 for 16, was really impressive. Ahmed Shahzad has looked really good, really solid. He means business. Have a look at that drive. Beautiful timing, everything in place. He's making this inning count all around the wicket. Have a look at that pull shot. It was not that short, but still was managed to put it in the gap, using his feet too. Good signs for Central Punjab. Ahmed Shahzad really needs to make this one count for his team now. He's got away to a good start. And Hussain Talat giving him company. He's also a very handy cricketer. And he really likes that slightly longer format, one has the feeling. This is what we will see all day long from Hussain Talat, just tapping it towards that third area with soft hands. Absolutely, and Hussain Talat, we've seen him play a lot of T20 cricket. But there's always a debate, what's his best format? And I think 50 over for me is pretty close to being his best format, because he's very solid with the bat, very handy with the ball as well. Not that big striker that you associate with T20 cricket, but a very good improviser. A very handy cricketer indeed, no doubt about that. This is good bowling by Imran. This has been the quality of this KP side. Oh, Ahmed Shahzad doesn't look happy. It's probably that area between the thigh pad and the main pad. Watch out, Ahmed Shahzad. He has a history of getting these freakish injuries. I'm sure it's not an injury. It will pinch him for a little while, just underneath that thigh pad. But I think he should be all right. It's just a blow on the meaty part. It does sting you a little bit, but no concerns. Strong man he is. Up on his feet again. He realizes the importance of his wicket for Central Punjab. Nicely pulled, but fielder is being placed for that shot. This is good captaincy by Khalid Usman. There's such a good all-round side, this KP side. Lots of all-round cricketers in it. We are yet to see Kamran Ghulam. He can bowl left arm spin too. Adil Amin also off spinner. Khalid Usman himself, the leading wicket taker of this tournament. They're all handy cricketers, very committed cricketers. Good leave, very good leave. That's been the difference in Ahmed Shahzad's approach in this tournament that we have seen. He is letting go of a lot of deliveries. Oh, that's questionable. That was probably the slow bouncer from Imran Khan. Got stuck in the pitch and looped over the head of Ahmed Shahzad. He immediately looked at the square leg umpire. Kaisar Waheed is the umpire. He made the call. Been an interesting replay. Side on. There you go. Pretty marginal. Pretty marginal. Give it to the umpire. That's all right. Oh, that's a good run. Very good run. Excellent running between the wickets. Ahmed Shahzad just running straight away. Could have been in danger, but he made it easy in the end. Yeah, that's better. That's excellent. Played it with soft hands. And he was off immediately. No hesitation whatsoever. It's clever cricket. They got to do more of that. Should have done more of that in earlier part of the innings, but Ahmed Shahzad has got the wits about himself now. He would have made it safely. Excellent judge single. Wanted to go big.
Got to be careful. Because you won the toss, batting first. They would like to get to that 300 mark at least in this ground because this pitch looks fantastic. You were there earlier at the pitch report. What do you make of it? We've seen quite a few balls stay low. Imran Khan has got all those variations. It looked like a slow delivery. It wasn't. And it just died on his way to the wicket keeper. Santalat very disappointed. You can see plenty of dark footmarks on the pitch. We'll have a closer look after this ball. End of 14 overs. It's 57 for 2 Central Punjab. It's a very interesting start for you guys. Average first inning score at each venue where Pakistan Cup has been played all over these years. Multan has the average runs of 197, highest of 314 and lowest of 126. Faisalabad definitely up there because that's a wonderful cricket pitch there in Faisalabad. 282 the average score there. Sajid Khan will continue. Still in a test match mode. Going towards leg side. Wide call by umpire Nasir Hussain. Another question for you, Shah Faisal. You were there at the toss. Very surprisingly, Wahab Riaz deciding to bat first. Whereas in this Pakistan Cup, what we have seen is that teams batting first have just won twice. And teams batting second have won 8 times out of those 10 times. I'm talking about this year's Pakistan Cup. Were you surprised? Not at all, actually, because if you look at the wicket, it's different to the wickets that the competition was played earlier on. We had a chat with the 2 coaches earlier on. They said, and the groundsman as well, used to be plenty of moisture. For the first half of the tournament, the weather was quite cold as well. And the pitches were definitely in favor of the bowling team when they put the opposition in. Not this one. Out of last 3 games, 2 has been won by the team batting first. And there was no surprise when I talked to both the captains at the toss. They both wanted to bat first. Played it between those fielders. This is good running. Ahmed Shadad scored for second and made it easy. Sajid Khan definitely not happy. Looking at those 2 fielders, it just went right between those 2. Kamran Ghulam and extra cover. Sajid Khan was expecting Kamran Ghulam to dive and get that ball inside the ring. Look at that. Not much pace on it. That was sloppy there. Conceded an extra run, Kamran Ghulam. Cannot do this in a big semi-final. You're playing against a huge side with so many stars, so many big players in Central Punjab. You got to stop each and every run wherever possible. Sajid Khan will continue. At the moment, it's too easy for these 2 batters. Just maneuvering the field, taking singles. That's a good approach by these 2 batters. Because if you look at Central Punjab side, they've got big hitters to come. They've got Umar Akmal, Qasim Akram, Fahim Ashraf, Saad Naseem. Plenty of big hitters to come, so they can afford to play few overs with singles and dots. Just get yourself in. Easy one, easy one, easy Oh, nicely driven in the gap. Very good work done by Adil Amin there at long off. Just restricted them to 1. So this is the end of 15 overs. It's 63 for 2 Central Punjab. Batting card, Ahmed Shahzad, 34 of 42. His strike rate has improved a lot in the second phase of his innings, I should say. Santalat will have to keep rotating the strike. There's plenty of gaps available now since the first power play was done and dusted. So there's no excuse for any dot deliveries at this stage of the innings. Plenty of gaps around, and these 2 very experienced cricketers will need to put on a score. And we were talking about the average first inning scores earlier.
and the decision at the toss. Once again, another intriguing decision for the team batting first is what is a good total here? It's expected to get slower and lower, this wicket. So to gauge what is a good first innings total is also really important. And then you go about how to get there. The rock star Umar Akmal, we could see him with their bandana on. Yeah, don't mistake him for Diego Maradona. That's how the wicket fell. The first one, Rizwan Hussain. A lot is expected of him. And then the Fizan. He looked good. He timed the ball nicely until this shot. He played straight to Sajid Khan of Sameen Gul. Still, Ahmed Shahzad is there on 34 with Hussain Talat on 10 of 24. This partnership is 32 of 45, building on nicely. This is the first semi-final live from Multan Cricket Stadium. Central Punjab taking on KP. He's not happy. He's not happy with something on the pitch. Probably talking to the batters of the slowness of the pitch, because it is holding a little on this pitch. Could that be the debate? Yeah, the pitch is holding up the ball a little bit. It's not going through as the batters would like. And that's just enough to create that doubt in the mind of the batters when they're looking to hit through the line. Nicely flicked, but straight to the man. This is good captaincy by Khalid Usman. He knows that the pitch is on the slower side. He's got the fielders placed at the right areas. Ahmed Shahzad should be disappointed there. Almost a leg stump half volley. Hit it straight to the fielder. Once you made up use of so many deliveries, like I said, there's so many gaps around. Dot balls are not the order of the day for Central Punjab. Wicket to wicket. This has been the quality of this KP side. They've not given away any width to the central batters, especially Ahmed Shahzad. A couple of times he's made that shot, gave himself room. That's the coaching staff. Abdul Razak on your right, ever smiling, very cool and calm. Got Akram Raza in the middle. Tucked away towards fine leg. Ahmed Shahzad has looked solid. He's moved to 35 now. He means business. He's in for a long inning. And why not? He's played all that cricket, all those years, experience behind him. It's about time that he delivers on every occasion on this level, at least at this regional level, Shah Faisal. Absolutely, like we were talking earlier, he's fallen off by the wayside recently with the Pakistan team. But every opportunity at this big stage, he needs to make it count. He still has intentions to represent Pakistan. These are the stages he needs to lit up. The bread and butter for Hussain Talat, tapping it away towards third. One more run to Hussain Talat. This is a good role for Hussain Talat. That is why he should be there. Should be looking to give strike to Ahmed Shahzad. We're into the 16th over. Have a look at that field. Well scattered. There's a fielder at mid-wicket. Deep square leg, fine leg. Sweeper on offside. Point and extra cover. Usual field on a slow pitch. Pretty regulation, especially when you see third man and fine leg regulation back on the boundary. Oh, he's gone. He's played it straight to the man. Not happy. He's looking at the pitch. That slowness of the pitch, could not quite time it and hit it straight to the fielder. And an excellent catch by Sajid Khan to end a wonderful inning of Ahmed Shahzad, scoring 35 runs. He's thrown it away yet again, Ahmed Shahzad. He was really well in, was struggling to find the gaps as well, turning the face of the bat too soon. A bit of a leading edge, carrying straight to the fielder inside the ring, and Imran Khan, with his bag of tricks, has snared Ahmed Shahzad. He walks off dejectedly. 35 of 47, his return of the day. Central Punjab
65 for 3. The big man, the mighty Umar Akmal walks in. He's always full of style and fashion. Wonderful cricketer. Shown form in the last game. He was the wicketkeeper, also scored 67 runs in the last game that Central Punjab won, an important inning that time. But the main part is that Central Punjab has lost an important wicket. Mercurial Umar Akmal, definitely. He's a box office. You hope he stays there in the middle for long enough. You're guaranteed entertainment. At the moment, at the non-striker end, that famous lime green zinc has been replaced by the white one now. Don't go anywhere. Well, it's got plenty of overs left. I think this is a good time for somebody like Umar Akmal to come in and get himself in. He can play a few dot balls here also, because Central Punjab has lost the third wicket when the score is just 65. We're into the 17th over as Sajid Khan continues to Hussain Talat. At the moment, it's too easy for him. Central Punjab has really struggled because of the regular loss of wickets, no partnerships. I think they can't afford to lose another one. They're really in desperate need of a partnership. This could be an ideal foil for Hussain Talat, because Umar Akmal, there you go. The numbers, very, very experienced. That average of 35 really doesn't represent the kind of talent he had. Straight away off the mark, Umar Akmal. A lot has been expected of him. He's been such a promising cricketer. Very handy wicketkeeper batter. He can hit big. It's an important inning. And Ali, if you were in the Central Punjab camp, would you be looking to reassess your target? As Hussain Talat had a little bit of weight, couldn't pierce the gap. Played it straight to Imran Jr. That's how Ahmed Shahzad lost his wicket. He's been looking at the pitch for a long time, probably that two-pace pitch, and that area, that length ball, troubling him. Down the track, over the fielder, out of the boundary. Beautiful batting continues by Hussain Talat. One bounce and over the ropes. He's just looking to nurdle and nudge before that. All of a sudden gave charge to Sajid Khan. Inside out, a magnificent cricketing shot from Hussain Talat. He got pretty close to the pitch of the ball. And went through with the shot. The elevation and placement was superb. That's good running. Tapping and running. And cherry on the top. An extra run given by the fielder. Rehan Afridi, the wicketkeeper for KP, probably not looking at the ball. Given away extra easy run. Look at that footwork from Hussain Talat. That head was down. He got close to the ball. There you go. He worked against the angle of the ball, but because of the footwork, he was really able to execute it fantastically. 17 gone, 73 for 3 Central Punjab.
सेंट्रल पंजाब की बैटिंग लाइनअप अब तक हाथ पांव मारती हुई नजर आई है मुल्तान स्टेडियम की इस स्लो बैटिंग पिच पर। उमर अकमल को अब देर तक खेलना होगा। हुसैन तलत का रोल जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि उनको अब इस इनिंग्स में आखिर तक खेलना है, लेकिन ये बड़ी अहम पार्टनरशिप। उमर अकमल भी इन दिनों अच्छी फॉर्म में है, तेज़ी के साथ रन्स बनाने की अहलियत रखते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि ये 50 ओवर का मैच है तो अभी भी वक्त ले सकते हैं। जी हाँ तारिक, वक्त ले सकते हैं और टाइम है भी, और हुसैन तलत ने कई बड़ी इम्पोर्टेंट इनिंग्स खेली थी पीएसएल में भी, तो अच्छी फॉर्म में उस वक्त नज़र आए थे और उनमें ये सलाहियत है कि वो रन बना सकते हैं, विकेट पे खड़े हो सकते हैं और बड़ी शॉट्स भी लगा सकते हैं। और जोरदार स्ट्रेट ड्राइव, 4 रन्स बिल्कुल खातिर में नहीं लाए। हालांकि इमरान जूनियर अच्छी खासी तेज बॉलिंग करते हैं, लेकिन तकरीबन चलकर शॉट खेला उमर अकमल ने। जी हाँ, बेहतरीन शॉट थी उमर अकमल की, बहुत स्ट्रांग है ये डाउन द विकेट, बड़े बड़े छक्के भी लगाते हैं डाउन द विकेट। इस दफ़ा स्ट्रेट ड्राइव की, बॉलर्स बैक ड्राइव और बड़ा अच्छा 4 रन हासिल किए। हेड पोजीशन, पाँव, सब कुछ का बेहतरीन मिलाप। गेंद ज्यादा उठी नहीं, ऐसे ग्लैंस नहीं कर सके उमर अकमल, लेकिन एक रन मिल जाएगा सेंट्रल पंजाब की टीम को। उमर अकमल जो हैं 7 मैच में 130 रन बना सके हैं 21 के औसत से। इससे पहले पीएसएल में इनका अच्छा वक्त गुजरा था कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, वहाँ पर इन्होंने 1-2 धुआंधार इनिंग्स खेली थी अपने होम ग्राउंड्स पर। जी हाँ, 2 अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली और बाद में जब उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई तो फिर वो अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट ना कर सके। यही प्रॉब्लम रही है उमर अकमल के साथ थ्रू आउट उनका करियर में, यही प्रॉब्लम रही है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते या रेगुलरली स्कोर नहीं करते या अपनी फॉर्म को कैश नहीं करते। तारिक अहमद बशीर यहाँ दूसरा हेलमेट लेकर आए उमर अकमल के बैटिंग पार्टनर के लिए। हुसैन तलत ने हेलमेट तब्दील किया। मुतबादिल खिलाड़ी हैं अहमद बशीर जो कि फास्ट बॉलर हैं सेंट्रल पंजाब के, लेकिन अभी तक अच्छी बॉलिंग की है इमरान जूनियर ने। यहाँ इंज़िमामुल हक एंड से आकर अच्छी नपी तुली बॉलिंग उनने की है। हालांकि इस पिच से खातिर खां उनको मदद नहीं मिल रही और इस बार उठाकर खेला, फील्डर आ रहे हैं गेंद के नीचे और बड़ा अच्छा कैच समीन गुल का, नहायत आला रनिंग कैच। गेंद बहुत देर तक हवा में रही और हमेशा से ही ये समीन गुल से दूर जा रही थी। वो उमर अकमल एक बार फिर बड़ी जल्दी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अपनी विकेट से हाथ धो बैठे। और यही मैं कह रही थी कि फॉर्म को कैश नहीं कर सकते, इनकंसिस्टेंसी दिखाते हैं और थोड़ा सा पेशेंस नहीं दिखाते। ये देखें कैच, बड़ा अच्छा कैच लिया बाउंड्री पर और अब मुश्किलात और बढ़ जाएंगी इनकी टीम के लिए। अगर इमरान जूनियर की बात की जाए तो बहुत अच्छे यंग बॉलर हैं, बड़ी अच्छी स्लोअर बॉल है उनके पास, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल करते हैं और इस वक्त स्कोर है 78 पर 4 खिलाड़ी आउट। जल्दी next one please, covering. Middle, that's middle.
कासिम अकरम जिन्हें नंबर 6 पोजीशन पर मौका मिला है, लेकिन खासे ओवर्स बाकी हैं आज भी। इसके बाद 32 ओवर्स उनको मिलेंगे। ये स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं, इन दिनों ये एक मोतबर बॉलर के रूप में भी उभर रहे हैं। अच्छी ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं और बड़े ही अच्छे फील्डर। उमर अकमल का आप तज़किरा कर रही थी कि उनने बहुत से मौके ज़ाया किए जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे थे, और वहाँ पे भी 50 ओवर की क्रिकेट में कभी कभार ये मसला दरपेश हो जाता था जब बहुत ज़्यादा ओवर रह जाते थे खेलने को, तो उमर अकमल जो है कई बार वहीं कन्फ्यूजन का शिकार होते थे। यहाँ हालांकि गेंद जो है वो लेग स्टंप के बाहर थी, इसे फील्डर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं खेल सके उमर अकमल, लेकिन इस कैच की कोई भी तारीफ किए बगैर रह नहीं सकेगा। काबिल सताइश कैच। और लेग साइड पे इतनी जगह उनके पास मौजूद थी, लेकिन उन्होंने सीधी फील्डर के पास खेली। इतना बेशुमार टैलेंट होते हुए वो इस तरह की गलतियां करते हैं। अब तो बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं और इतना टैलेंट उनका, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इस तरह ज़ाया हो गया उनका टैलेंट। अगर वो थोड़ा सा अपनी मेंटल साइड को इम्प्रूव करते, थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होते, तो बहुत बड़े प्लेयर बन सकते थे। एक और शॉट गेंद, लेकिन बड़ी अच्छी पोजीशन में आकर इसे पुल कर दिया 4 रन के लिए। खूबसूरत अंदाज में कासिम अकरम ने, उनके पास खासा वक्त है, अच्छी आवाज आई उनके बल्ले से। जी हाँ, अच्छी पुल शॉट और रन्स की ज़रूरत भी उनको। ये देखें, सारा सी शॉर्ट बॉल थी, लाइन लेंथ को अच्छा जज किया, बैकफुट पे गए और 4 रन हासिल किए। लेंथ को अच्छा जज करते हैं ये। जहाँ हालांकि ये थोड़ी सी उनकी तवक्को से ज़्यादा उनके बल्ले के स्प्लाइस की तरफ लगी थी, लेकिन बैट स्पीड अच्छी। पुल शॉट इनके फेवरेट शॉट्स में से एक है कासिम के। 82 पर 4 खिलाड़ी आउट। इस वक्त पार्टनरशिप की शदीद ज़रूरत है सेंट्रल पंजाब को, कि 4 खिलाड़ी आउट हो गए। इन्होंने इलेक्ट किया था कि ये बैट करेंगे, जिसका मतलब है कि इनके जहन में होगा कि ये 350 का टारगेट सेट करेंगे, लेकिन 4 विकेटें आउट हो गए, 82 रन हैं। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत है थोड़ा सा एक पार्टनरशिप लगाने की। और अभी ओवर्स, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा, बहुत हैं। खालिद उस्मान खुद अब बॉलिंग का महाज उनने संभाला है, टीम के कप्तान हैं, बड़े माने हुए खिलाड़ी हैं खालिद उस्मान। इस टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर खालिद ने 23 विकेटें हासिल की, और यासिर शाह उनने 18 विकेटें ली हैं। तो यहाँ पर ये 5 में से 3 स्पिनर्स हैं। ये जो चोटी के 5 बॉलर्स की फहरिस्त आपने देखी, यासिर शाह, उसके अलावा दानिश अजीज, जिन्हें सिंध के लिए बड़ी अच्छी ऑलराउंड कारकर्दगी पेश की है। दानिश अजीज प्योरली एज अ बैट्समैन आए थे शुरू में, फिर उन्होंने अपनी बॉलिंग को डेवलप किया। थोड़ी सी उनकी बैटिंग पीछे चली गई और उनकी बॉलिंग आगे आ गई। तो मेरा ख्याल में अगर आप एज अ बैट्समैन आए हैं और अपनी बॉलिंग को डेवलप करें, तो अपनी बैटिंग को ना पीछे छोड़ दें और थोड़ा दोनों पर काम करें। ऐसा ही हुआ था कुछ शादाब खान के साथ, लेकिन उन्होंने फिर आके अपनी बॉलिंग पर अच्छा काम किया और पिछली PSL में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इस बार अच्छा फुटवर्क देखने को मिला। हुसैन तलत पाकिस्तान के उन चीदा बैट्समैन में से एक हैं जो स्पिनर्स को बड़ी महारत और हुनर के साथ खेलना जानते हैं, कदमों का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो ज़रूरी होता है शॉट, वो स्वीप शॉट होता है स्पिनर के खिलाफ कामयाबी के लिए इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और हुसैन तलत के पास ये दोनों शॉट्स हैं। टैलेंटेड बैट्समैन है हुसैन तलत, और अक्सर अपनी जो ये हिट भी अच्छा कर सकते हैं, बड़ी पावर है इनके पास। और वही हिट कर दिखाई इस बार, कदमों का अच्छा इस्तेमाल और उसके बाद उतनी उम्दा प्लेसमेंट भी। मिड ऑफ के फील्डर ज्यादा वाइड नहीं थे,
लेकिन गेंद की पिच पर आए और उसके बाद इसे इरसाल कर दिया सामने की जानिब। जी हाँ, बहुत अच्छी स्ट्रेट ड्राइव मारी इन्होंने यार, अच्छी पावर दिखाई। पिच ऑफ द बॉल आए, ड्राइव किया और 4 रन हासिल किए। ऑफ ड्राइव बहुत ही खूबसूरत शॉट, फील्डर को बीट किया। कदमों का इस्तेमाल भी बड़ा अच्छा करते हैं, जैसे कि पिछली बॉल पर इन्होंने किया। सेंट्रल पंजाब की टीम जो है रावलपिंडी में आखिरी मैच में हराने में कामयाब हुई थी खैबर पख्तूनख्वा को, लेकिन आज अभी तक ये टीम पीछे है और अच्छी बॉलिंग की है खैबर पख्तूनख्वा के तमाम ही बॉलर्स ने। वो जानते हैं कि इफ्तिखार अहमद नहीं है, साहबजादा फरहान अनफिट हैं, एल्बो इंजरी का शिकार हैं और साथ साथ मोहम्मद हारिस भी टीम में नहीं रहे। रिजवान पहले ही पाकिस्तान की टेस्ट टीम के साथ थे। तो बैटिंग में उतनी डेप्थ नहीं है केपी की इस टीम में, इसलिए बॉलर्स पर ओनस ज़्यादा है और अभी तक उन्होंने जिम्मेदारी ली है अपने सर पर। बड़ी अक्लमंद ये यूनिट है केपीके का, हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अपनी वीकनेस को समझते हैं, स्ट्रेंथ को समझते हैं, एक दूसरे की जो परफॉर्मेंस है उसमें खुश होते हैं और इनकरेज करते हैं एक दूसरे को, इसीलिए ये इतनी कामयाब टीम है। इनको हराना आसान नहीं है। और शानदार शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लाजवाब क्रिकेट। ये जरा सा पाले में थी कासिम अकरम के और वो विकेट के दोनों जानिब स्ट्रोक खेलना जानते हैं। टिपिकल लेफ्ट हैंडर्स शॉट है ये, आपने बॉल अगर उनके आंख में कराएं तो वो फिर उसको जाने नहीं देंगे। यहाँ पर एंगल भी मिल गया था तो कासिम अकरम के लिए ऑफ साइड का जो स्वीपर है ये ज़रूरी होगा। स्कोर के सामने खड़ा करना, बहुत ज़्यादा स्कोर ऑफ द विकेट थे फील्डर वहाँ पर मोहसिन खान, क्योंकि ये फील्डिंग करने वाला कप्तान है, हम वक्त ये उनको मसरूफ़ रखने वाले बैट्समैन हैं। विकेट के दोनों जानिब खेलना जानते हैं, बैक फुट पे भी फ्रंट फुट पे भी, और स्कोर बोर्ड को मुतहर्रिक रखते हैं, ये इनकी खूबी है। जी हाँ, राइट हैंडर बैट्समैन है। मैंने पिछले इसमें कहा था कि ये लेफ्ट हैंडर है, लेकिन अच्छी शॉट, एक दफा फिर सिंगल हासिल किया। पाकिस्तान के पास बहुत यंग टैलेंट है बैटर्स का तारिक, लेकिन वो उस तरह जितना टैलेंट है उस तरह ग्रूम उस तरह नहीं हो रहे और आगे नहीं आ रहे, कहीं पर लॉस ऑफ फॉर्म हो जाता है। इसका थोड़ा सा मेंटली टफ होने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। इंटरनेशनल में जब मौका मिलता है तो इस तरह वो अपनी छाप नहीं डाल सकते जिस तरह के वो डोमेस्टिक में डालते हैं, जैसे कि हुसैन तलत की भी एक एग्जांपल है। इस बार रास्ता रोका खुद ही इमरान ने इस गेंद का, लेकिन इन दिनों ये खुशाइंद बात यह है कि जो नए बैट्समैन उभर कर सामने आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी रन्स बना रहे हैं। और अभी पाकिस्तान टीम में इस सीज़न में जो शमूलियत हुई अब्दुल्ला शफीक की, तो एक बैटिंग का कल्चर आ रहा है। उनने ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम के खिलाफ अपना लोहा मनवाया, ओपनिंग पोजीशन पर जाकर बहुत ही अच्छी टेक्निक दिखाई और साथ साथ अपना टेम्परामेंट भी। थोड़ी देर हवा में रही लेकिन पहले गिर गई कामरान गुलाम के। इसी तरह मोहम्मद हारिस हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं, वो बड़े बासलाहियत हैं, उभर के सामने आ रहे हैं 97 पर 4।
जी हाँ, आप देख सकते हैं कि किस वेन्यू पे कितने रन बने, क्या एवरेज रन्स हैं फर्स्ट इनिंग्स में, हाईएस्ट स्कोर क्या है। मुल्तान पर एवरेज रन्स जो हैं वो 197 हैं। तो ये इस विकेट की वजह तारिक कि ये सिर्फ इतने रन बनते हैं या फिर ये बॉलर्स की कामयाबी है? नहीं, आप दोनों का इम्तजाज कह सकते हैं। जो पहले 7 मैचेस से यहाँ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान कप में, उन पहले 7 मैचों में जो औसत स्कोर था पहली इनिंग्स का वो 170 था, लेकिन आखिरी 3 मैचों में ये 273 हो गया है। तो इसमें पिच पर इब्तिदा में घास भी थी ज़रा। अब ये पिच जो है बिल्कुल बेर लग रही है, बैटिंग के लिए ज़्यादा अच्छी है। और अब दोनों ही टीमों के पास मौका रहता है बराबर का। ऐसा नहीं कि मैच का फैसला टॉस पर हो जाए, जैसा कि जो डे 50 ओवर के क्रिकेट के मैचेस होते हैं उनमें कई बार बॉलर्स का बोलबाला ज़्यादा हो जाता है, पहले ही हाफ में मैच का फैसला हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसी पिच नहीं है, ये अच्छा लग रहा है। आप नए खिलाड़ियों की बात कर रही थी, ये नए तमाशाइयों को देखकर क्रिकेट के मैदान में। आप अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहे थे, तो अब्दुल्ला शफीक इतना स्पेशल टैलेंट है, क्या टेक्निक है उनकी, टेम्परामेंट अच्छा है, मेंटली स्ट्रांग है, वो एक बहुत स्पेशल टैलेंट है। जिस तरह उन्होंने मजबूती दिखाई टेम्परामेंट की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के खिलाफ, वो तो बिल्कुल तारीफ की हकदार हैं वो बिल्कुल। और हारिस भी T20 में तो उन्होंने बड़े अपना जो है जौहर दिखाया किस तरह वो स्ट्रांग है मेंटली और किस तरह वो बॉल को मार सकते हैं। हालांकि इतने कोई बहुत लंबे चौड़े नहीं है वो। हफ्ते का दिन है, कल भी यहाँ पर छुट्टी नहीं थी, हफ्तावार छुट्टी मुल्तान में ये आमतौर पर जुमे के दिन होती है। उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर, कल दूसरा सेमीफाइनल है, फिर फाइनल मैच खेला जाना है 1 अप्रैल को, तो लोग आएंगे क्योंकि क्रिकेट का सीज़न इन दिनों जोबन पर है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है और 24 साल के बाद पाकिस्तान ने कामयाब टेस्ट सीरीज़ का इनेकाद किया। दुनिया की सबसे बड़ी टीम इन दिनों मुल्क में है, वनडे सीरीज़ की आमद है लाहौर में। तो आप भी आइए मुल्तान, आपके शहर में बड़े बड़े क्रिकेट स्टार्स को एक्शन में देखने का मौका मिल सकता है करीब से। अच्छी शॉर्ट बॉल, बैट्समैन ने डक किया। देखिए, ये आप क्रिकेट सीज़न की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही आपने कहा। और यहाँ भी कितने इंटरनेशनल स्टार्स खेल रहे हैं, मौसम भी अभी ठीक ठाक है, तो बिल्कुल लोगों को आना चाहिए और अपने इंटरनेशनल स्टार्स जो यहाँ खेल रहे हैं अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं वापस पाकिस्तान टीम में, उनको इनकरेज करना चाहिए, क्रिकेट मैचेस को एंजॉय करना चाहिए। एक और शानदार शॉट और एक और चौका। बाउंड्री पर मिस फील्डिंग हुई आदिल अमीन से। अच्छा रद्द अमल, कासिम अकरम को पिछला बाउंसर किया था, बॉडी लाइन डिलीवरी के बाद अगली गेंद पर उन्हें पूरी कुव्वत और एतमाद के साथ शॉट खेला। जी हाँ, स्लाइटली शॉर्ट बॉल थी, उसको बिल्कुल बैक फुट पे आके ये 4 रन हासिल किए। स्क्वायर कट, स्टाइलिश शॉट थी और 4 रन हासिल किए। अपनी इस मुख्तसर इनिंग्स में कासिम अकरम ने अभी जो 17 रन ही बनाए हैं, सिर्फ 11 गेंदें खेली हैं, लेकिन वो जो ऑलराउंड बैटिंग होती है उसकी झलक उन्होंने दिखला दी है। ये थर्ड मैन की तरफ गाइड किया। पिछला शॉट स्क्वायर कट था, उससे पिछले ओवर में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फ्रंट फुट पर खेला और उनका जो पहला चौका था वो पुल शॉट था। शॉट्स की बहुतात है इनके पास।
104 पर 4। Change left arm round. अभी तक जो बेहतरीन स्कोर है इनिंग्स का अहमद शहजाद का 35, लेकिन सेंट्रल पंजाब को एक बहुत बड़ी इनिंग्स दरकार है अपने स्पेशलिस्ट बैट्समैन से। और शानदार कवर ड्राइव, फील्डर पहुंचने के लिए कोशिश हैं लेकिन रोकने में नाकाम रहे। कवर पॉइंट से मोहसिन आए थे लेकिन गेंद रोकना उनके बस से बाहर था। एक बार फिर दिलकश तरीके से खेला, बड़ा उम्दा फुटवर्क कासिम अकरम का। जी हाँ, बॉल के ऊपर पूरे अपने उनके फुटवर्क और सर बिल्कुल करेक्टली बॉल के ऊपर आया और 4 रन हासिल किए, ड्राइव किया, दिलकश शॉट। बिल्कुल झुक कर खेला गेंद के ऊपर, कलाई का भी बड़ा अच्छा करतब देखने में आया। कासिम अकरम के आने के बाद एक जो और हम देख रहे हैं, एक जो मुस्बत अंदाज सेंट्रल पंजाब का कि स्ट्राइक रोटेशन भी होने लगी है। पहले जो 20 ओवर से उन्हें 56% गेंदें डॉट खेली थी, 69 डॉट बॉल थी पहले 20 ओवर्स में। सेंट्रल पंजाब के बैट्समैन अपना अपना एंड खेलते रहे, लेकिन जब से ये आए हैं स्कोर बोर्ड हरकत कर रहा है, बाउंड्रीज आ रही हैं और स्ट्राइक शेयर भी हो रहा है। 2 यंग बैट्समैन क्रीज पर हैं, दोनों इंटेंट दिखा रहे हैं। उनको पता है कि अगर उन्होंने टारगेट सेट करना है और केपी को हराना है तो 280 से 300 रन बनाने पड़ेंगे और इंटेंट दिखाना ज़रूरी है इसके लिए। इसीलिए ये सिंगर्स और डबल्स आ रहे हैं तारिक, और शॉट्स भी अच्छी लगा रहे हैं। कवर ड्राइव भी लगाई, उससे पहले बाउंस को राइड करके स्क्वायर पर भी 4 हासिल किए। तो अच्छी बैटिंग देखने में नज़र आ रही है, लेकिन इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू होना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। दायरे के अंदर क्योंकि अभी 5 फील्डर हैं, स्पिनर के लिए आसान नहीं है बॉलिंग करना, इससे अटैक कर रहे हैं स्पिनर के खिलाफ कासिम अकरम। और क्योंकि एक फील्डर दायरे के बाहर कम होता है इस मरहले पर, तो अगर आपको स्पिन अच्छा खेलना आती हो तो हमेशा आपको एक गैप नजर आता है बाउंड्री के लिए। जैन की हेड पोजीशन भी बहुत अच्छी है और 111 पर 4 खिलाड़ी आउट। बाईस ओवर्स के बाद 111 सेंट्रल पंजाब और रन रेट पहली मरतबा ये 5 से ऊपर नजर आ रहा है, 5.05। और उसकी वजह कासिम अकरम है जो कि अच्छी फॉर्म दिखा रहे हैं। उनके बल्ले से एक अच्छी आवाज़ सुनने को मिल रही है जब जब गेंद मिडल होती। हाल ही में वेस्ट इंडीज़ में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, उसके बाद कराची किंग्स के लिए चंद एक मैचेस खेले थे बैक एंड पर पीएसएल के, एचबीएल पीएसएल के। हाँ, कुछ बहुत अच्छी इनिंग्स इन्होंने खेली थी कराची किंग्स के लिए भी। वहाँ पर कप्तानी भी बड़ी अच्छी की इन्होंने अंडर 19 में पाकिस्तान के लिए, और अच्छी इनिंग्स भी खेली। यंग बैट्समैन है, फ्यूचर है पाकिस्तान का, तो आज भी बहुत अच्छी एक इनिंग्स खेल रहे हैं। आखिरी 4 ओवर में 33 रन बने, जिससे जो मोमेंटम है वो कदरे अब सेंट्रल पंजाब की तरफ आने लगा है।
और अभी तक ये आप देख सकते हैं सर बिल्कुल इनका स्टिल रहता है, और जब ऑफ साइड में स्कोर के सामने खेलते हैं तो बल्ले का पूरा फेस दिखाते हैं। देखिए, हेड पोजीशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे एक बॉक्सर का हेड पोजीशन होता है, उस तरह एक बैट्समैन का भी बड़ा ज़रूरी है। और बेहतरीन शॉट, ये 4 रन्स के लिए ड्राइव किया फील्ड गेंद के पीछे, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाएंगे। 4 बेहतरीन रन्स, और एक दफ़ा फिर बहुत ही अच्छी हेड पोजीशन, बॉल पे पूरे गए और उसको ड्राइव किया। तो तारिक, हम हेड पोजीशन की बात कर रहे थे कि हेड पोजीशन बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बॉक्सर जब उसकी हेड पोजीशन अच्छी होती है, ये देखें कितनी बेहतरीन शॉट लगाई, तो उसकी बाकी चीज़ें भी हाथ वगैरह उसको फॉलो करती हैं। जहाँ ये स्ट्रोक और वो नाज़ो अंदाज भी जो क्रिकेट के खेल को ज़्यादा काबिल दीद बना देता है। जब इस तरह का स्टाइलिश बैट्समैन क्रीज पर हो, अपने फुल फ्लो पर हो, तो क्रिकेट मैच जो देखने का मज़ा है वो दोबारा हो जाता है। बाउंसर्स के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ अभी तक इन्होंने नहीं की। दूसरा बाउंसर अटेम्प्ट किया है इस स्पेल में समीन गुल ने, लेकिन जाने दे रहे हैं क्योंकि 2 फील्डर खड़े हुए हैं स्क्वायर के पीछे। जी हाँ, ट्रैप उनके लिए सेट है और उनको पता है कि इस वक्त उनकी टीम को एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। उनकी फॉर्म भी लगी हुई है, अच्छी शॉट्स लग रही है। ये देखें, बड़ा बेहतरीन शॉट उनका, और 4 रन हासिल किए। और बाउंसर को अच्छा खेल रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते इस वक्त। अगर वो ट्रैप जो उनके लिए सेट है वहाँ कहीं आउट हो गए तो फिर टीम शदीद मुश्किलात में होगी। यहाँ लेकिन चैलेंज कर दिया है समीन गुल ने कि आप ये शॉट भी खेल सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा देर मुतहम्मिल नहीं हो सकते 50 ओवर के क्रिकेट में, क्योंकि 2 बाउंसर्स जो हैं, 2 बाउंसर करने की इजाज़त है आपको 1 ओवर में। अच्छा, एक बात है कि अभी जो इन्होंने बाउंसर खेला था तो उसको छोड़ा जब, तो उनका बल्ला हवा में था। बल्ले को या तो साइडवेज होना चाहिए या नीचे होना चाहिए, क्योंकि इस तरह एज हो सकती है। या एक बैट्समैन को आप जो है वो 1 ओवर में 1 बाउंसर कर सकते हैं। ओवर इख्तिताम को पहुंच गया, सॉफ्ट हैंड से खेला था 116 पर 4। Six bowler has been used by Khyber Pakhtunkhwa. Imran Khan Senior, Sameen Gul, the 2 wicket takers up at the top, and Imran Khan Jr. also getting 2 wickets. 116 for 4 is Central Punjab at the moment, as Khalid Usman changes his end, but nothing has changed from the end of Qasim Akram. He's pulled it towards that mid-wicket area. Umpire just checking if that ball has flown over the boundary line or it's just stepped a little inside that boundary. Still waiting for the decision. Another short delivery from Khalid Usman, set up very nicely for Qasim Akram, whose intent has been brilliant since he came on. 4 wickets, but now he's making full use of any opportunity. It pitched well inside the boundary. 4 to him. 33 of just 24 deliveries. What a magnificent innings this has been from Qasim Akram. Exactly the impetus that the Central Punjab innings needed after senior men once again faltered. Or wanted a run, and rightly said no by Santhala. Okay, you were just mentioning about how things have changed since Qasim Akram has come to bat. Before he came into bat, the run rate for Central Punjab was 4.5, and since he has come, it has moved to 6.88. That shows the intent of this youngster. Again, coming down the track. Lucky that it rose from soft hands. A little chip. I mean, you can't help but think that the injection of energy that Qasim Akram has brought it with him
I mean, the difference is very, very evident of what your intent has been. And Qasim Akram, like I said, bundle of energy, striking boundaries, rotating strike. He's really put the KP bowlers and fielders under immense pressure since he's walked in. Down the track again. This is where Hussain Talat has been so good, using his feet every now and then. As we come to an end of the over, 122 for 4 is Central Punjab. Four early wickets for KP, no partnerships to begin with. 78 for 4 they were at one stage before Qasim Akram came in. That partnership of 44 of 39 deliveries with Hussain Talat. He's really given some hope to Central Punjab because, like I said, Rizwan Hussain, Umar Akmal and Ahmad Shehzad, they really couldn't capitalize today. And that gamble of sending Faizan in also didn't work. But this is better now from Central Punjab. Cuts well through the gap. This will run away for 4. Hussain Talat now dealing in boundaries. Very well played, waited for it and put it in the gap for 4. This is what the change of momentum does. Earlier on we saw Hussain Talat finding the fielders in the ring pretty frequently. Now he's finding gaps. It's a quicker delivery and not much width, but fast hands through the ball from Hussain Talat. He's probably enjoying the company of Qasim Akram. This is an important phase of the game. He's developed into a super all-round cricketer, Hussain Talat. He's taken wickets, he's scored runs. He was very good in HPL PSL this year also. Looks to be a great prospect for Pakistan cricket. 32 is moved to 45 deliveries. But most importantly, that the time that he's consumed, because wickets are falling all around him. And now, since the time Qasim Akram has come, it has all changed for Central Punjab as he sweeps the next one. But this KP fielding side is so good that it's really impossible to get through those fielders, Shah Faisal. That's the 50 partnership as well. Once again, slight fumble, but Hussain Talat was ready to pounce on it. 50 partnership of just 43 deliveries. You look at that fielding effort. It was pretty good, but Hussain Talat was ready to capitalize. This is an exciting contest now. Central Punjab making a big comeback through these two youngsters. I definitely think that KP has missed a trick by not playing Arshad Iqbal in this game, because we saw early the seamer is getting some assistance when they're bowling into the pitch. No run there. Seamers that were bowled into the pitch has helped them. It has been a two-pace wicket. We'll continue talking about that. 25 gone, 128 for 4, Central Punjab. Sajid Khan has bowled 4 overs for 28 runs, fresh from test match cricket. Probably will take a few matches to get to that length of one-day cricket. Razali Dad, the ex-captain of Central Punjab, Imran Dogar, Rizwan Hussain and Saad Naseem. Always looking to get runs. Always looking to rotate the strike. That has been the quality of Qasim Akram. You're talking about the pitch. It's an interesting point you make, especially if you look at the spinners' bowling figures. 4 overs 28 for Sajid, and Khalid Usman has gone for 22 in his 3.1 overs, whereas run scoring was difficult against the quicker men. Again, put it in the gap. Hussain Talat wanted to, but Qasim Akram saying no, there is no run there. And rightly so, because this KP side is an excellent fielding side. They're very fit, they're very quick.
Mohammad Sava there, very young, very good all-round cricketer also. This time, commentator's curse has missed a simple one, Imran Khan. Senior pro Imran Khan, probably not the best mover in the field from KP. So he was at short third man. This left hand and right hand combination is really giving some headache to the KP skipper. Too many dot balls from Hussain Talat, even in this partnership as well. He found a boundary in the last over, but then followed up with 4 dots in the over. Well, this is what happens when you lose wickets continuously on the other hand. We saw Umar Rakmo losing. A lot was expected. Well, always it is expected of him, but always he disappoints. The kind of form Qasim Akram is in. You don't want to starve him of strike. 3 dots once again on the trot from Hussain Talat. End of the over, 131 for 4. 35 for Ahmed Shahzad, 7 for Rizwan Hussain. Fizan looked good for 8. He looked to time the ball nicely before he lost his wicket. Hussain Talat is still there on 35, and most importantly, the young Qasim Akram also with him, 36 of just 29 deliveries. 131 for 4 Central Punjab. This is the first semi-final of Pakistan Cup. Wahab Riaz winning the toss, deciding to bat first. Must be in a little bit of bother at the moment. Good partnership, and they need to continue because almost after the halfway stage of the innings, they've recovered with their run rate. But I think they've lost 1 wicket too many for my liking. That's why this partnership is so crucial. Despite the long batting order or batting lineup, these two still needs to keep going for quite some time. So once again, Qasim Akram doesn't waste any time. It's a single of the first ball of the over. Central Punjab got 3 seamers in their side. The captain Wahab Riaz, they got Fahim Ashraf, Hussain Talat also has got some few wickets in this tournament. And probably, in my opinion, he would be the best use on this pitch because he's somebody who bowls into the pitch, has got variations. As he sweeps the next one, there is a fielder. And he will come back for 2. 12 wickets for Hussain Talat in this tournament so far. Scored runs also. He's developed into a very handy all-round cricketer. Good down on one knee, good roll of the wrist. And he hit the ball into the gap immediately, running for 2. That's better from Hussain Talat. Once again, the call is for 2. They'll get it comfortably. Oh no. Hussain Talat was running around until he found out Qasim Akram wasn't moving. Probably there was that second run. Kamran Ghulam, the fielder at deep cover, did well. Initially, we all thought that they will be too easy. And he did a great job there. The next one, he sweeps it. This will... doesn't have the legs to go to the 4, but... 1 run taken for Qasim Akram. Got a slight tickle onto his pads. That ball didn't travel very quickly. But he's rotating strike. Every given opportunity, Qasim Akram is very proactive. It's good to see. Good to see him progress into a fantastic cricketer. It's cut through the gap. Kamran Ghulam doing a bit of work. Excellent fielding. This is what you associate with KP. That never give up attitude. Always there in the game. Always giving 100%. Rocketed back onto the back foot. Hussain Talat very good with the footwork. Good over from Central Punjab so far. As he brings out the reverse sweep. And it found the gap. This is a Hussain Talat special. Good over for Central Punjab. 11 of it. 142 for 4.
Super shot to end the over. Pitch top, get to the pit of the wicket. There was no fielder there. Hussain Talat in full flight. He's playing around with the fields of KP. And after a sluggish couple of overs, Central Punjab has really recovered with the last one. Thanks to Hussain Talat. Because Qasim Akram is wasting no time. And Hussain Talat has joined in on the fun in this over. And Central Punjab will be hoping for more of the same. The credit must be given to Qasim Akram. At one point when they lost Umar Akmal, they were struggling. And since the time he has come in, the scoring has been great. He's playing with a strike rate of over 100. As Khalid Usman continues the leading wicket taker of Pakistan Cup. The intent, always looking to get runs. That's the best part of this young player, Qasim Akram. Remember, he's an all-round cricketer. He can bowl well too. He's an off-spinner. Former captain of Pakistan under 19. And he can defend well too. 9 overs of spin has already gone for 63 runs. It's again looking to find the gap. He's done that. It's quite a fast outfield and it will get to the fence. Qasim Akram is not letting up here. There wasn't much of a pace on the ball, but that bat speed allowed him to generate his own pace. Excellent batting from the youngster. Played it late, placed it perfectly. Between those two fielders. Excellent batting by Qasim Akram. He's looking threatening. He's looking to play a big one here. 42 already of just 34 deliveries. This time coming down the track and playing it towards long off. That is the quality of this young lad. Earlier he played late toward third area. The next one showing the full face of the bat towards long off. The partnership moving to 69 of 61. Very crucial, probably the most important partnership of this tournament for Central Punjab. Easy one. Good ball, Khalid. Hussain Talat really complimenting him very nicely now. Good face for Central Punjab. Both the batters approaching their personal landmarks as well. Really much needed boost to the innings by these two. Very good batting. Excellent batting by these two young men. Hussain Talat and Qasim Akram, two all-round cricketers. As we come to the end of 28 overs, it's 149 for 4. We are live from Multan Cricket Stadium. This is semi-final number 1, Central Punjab versus Khyber Pakhtunkhwa. We've got an excellent game of cricket in our hands. Central Punjab are 149 for 4 at the moment as we see change in bowling. Kamran Ghulam now coming in place of Sajid Khan, who's really not found the rhythm and going on this pitch. I still believe not playing Arshad Iqbal can cost KP a lot. 54 matches to him, 59 wickets. Twice he's taken 5 wickets. So he can bowl, is a handy cricketer. Remember, he's the record holder, the most runs in a season, but that is for 4-day cricket. As the first ball is being cut towards the sweeper. One more run to Qasim Akram and Central Punjab. You got a question here, Khalid Usman's tactics, because we know that Hussain Talat is a very, very good player of spin bowling. And this spin hasn't done well for KP today. And here's the introduction of the third spinner, because Sajid and Khalid Usman's overs have gone for plenty of runs. Interesting to see how Kamran Ghulam fares. Call is for 2, but they might have to settle for 1.
That is what the point I was making earlier, Shah Faisal, that not playing Arshad Iqbal might cost them a lot, because they are just playing with two seamers. A lot was expected of Mohammad Sarwar, but he hasn't delivered, probably of the lack of pace behind him. So Arshad Iqbal could have been a very good choice on this pitch. 150 up for Central Punjab. At one point we thought they might struggle to get to a good total, but this partnership of 73 of just 66 deliveries have definitely made them come back in this game. That should have been stopped at this level, because this is what we associate with Khyber Pakhtunkhwa's fielding. Every run should be saved. This is the big match, the semi-final. If you keep on giving easy singles, it gets easier for the batters. Adil Amin, the culprit on that occasion. It's all too easy at the moment for Hussain Talat. He's middling every delivery. He's comfortable on the pitch. He's moved to 47 rather. 46 is his partner, Qasim Akram. It's all because this man, he came in, scored some runs, took pressure off. Was that a catch? For a second I thought it's gone straight. Look at that reaction of Kamran Ghulam. That would suggest that that did carry. Have a look. It's got under it, and it did carry. And Sajid Khan almost had it. As his elbows hit the ground, it just came off. Oh, that was a costly miss. It went straight to Sajid Khan. The disappointment says it all. We can see he's very expressive about it. 29 gone, 153 for 4 as players take drinks. City of Saints, beautiful architect, beautiful mosque and shrines.
Multan city. Just love this city. I just live not far from here. So that is why I've been very associated with Multan. And this is the situation currently. Central Punjab making a very, very good recovery through Qasim Akram and Hussain Talat. 47 of 59 for Hussain Talat. And 46 of just 40 deliveries for young Qasim Akram has really propelled Central Punjab. A partnership of 75 of just 69 deliveries. It's really trying to wipe out the damage that was caused in the earlier part of the innings. 4 wickets so far. Rizwan Hussain got impatient. He's looking to make a move on. Lost his timing, lost his control, and his wicket. And that is Faizan. His promotion up the order looked good for a while, but Samin Gul's length was really good in the first phase. Ahmed Shahzad stuck around for a while. He's really looking to up the scoring rate, pay the price. And this is Umar Akmal. Very, very disappointing stroke. Field was set there, he hit it straight down his throat. Play resumes after the rink, but nothing has changed from Hussain Talat. He's moved to 48 now, just 60 deliveries. Very good inning, very important inning for Central Punjab at a time when Central Punjab needed a batter to stand up. He did. And as you earlier said, this is a good recovery from Central Punjab. Couldn't pierce the gap. Good work there on that occasion. This is Qasim Akram's favorite area. Ashfaq by the looks of it. Spinners have been easily negotiated by these batters. Khalid Usman, Sajid Khan, we saw Kamran Ghulam also. There's a choice of Adil Amin, the off-spinner can bowl too. Still, I believe that there are one fast bowler short. Easy one. It's very strange that they left out Arshad Iqbal on a pitch like this. But on the other hand, if you talk about Central Punjab, they've been very good with those picks as far as fast bowling is concerned. Right, and if you look at Wahab Riaz, Hussain Talat, they're pretty good exponents of the reverse swing as well. The square is pretty dry and abrasive, so is the wicket. Easy one. Qasim Akram inching closer to his 50. He moves to 48 now. A good over from Khalid Usman, just 4 of it rather, 30 gone, 157 for 4. Central Punjab. That's Zafar Gore on the right most. Raza Ali Dar, who's captain for the most matches in this Pakistan Cup and suddenly got dropped. Is out of the team. Very strange. But this is what happens when you've got so much competition going on. Qasim Akram sweeps it straight to the man who makes a mess of it. It's gone through for 4. And this will bring up a fantastic 50 for Qasim Akram at a time when the team needed it the most. This young batter has scored a magnificent 50. His 5th 50 of his career. Just 45 deliveries as well. Sloppy bit of effort in the field from KPK. Very unusual, but that probably the result of the pressure that Qasim Akram has put on them. Excellent 50. Job is only half done though. Once again, fast hands through the ball. And Qasim Akram has really took a liking to this stroke in this innings. Second boundary in 2 overs in the same region for him. It's not working. Definitely spin not working for KP. Easy runs given away. One on the leg side, the other on the off side. He can play both ways. Have a look at that. Waited for it. Placement beautiful.
He's really shown his strength in playing that stroke because, like you said, there's not a lot of pace off the wicket, but he generates his own pace. Knocks it down the ground for a single. Yeah, you make an excellent point. No pace whatsoever. So whenever a bowler tries to bowl it fast, wants to bowl through it, it's easy picking for the batters. The singles are available. Hussain Talat just one away from an excellent half century too. And he does it easily. Wonderful inning. Excellent display of batsmanship by Hussain Talat. He scored 50 now. A wonderful timely inning for him. Great knock from Hussain Talat. He looked in absolute control throughout his innings. His strike rate will surely go up. Yes, Qasim Akram has given him very good company. This has been a fantastic partnership for Central Punjab. They'll want more of the same as the over ends. 31 gone, 167 for 4. जी तारिक, क्या कहेंगे आप? दोनों बल्लेबाज इस वक्त 50 रन मुकम्मल कर चुके हैं और अब तेजी से रन्स बनना शुरू हो जाएंगे। जी, स्पिनर्स के खिलाफ दोनों ने ही बड़ी सुलझी हुई बैटिंग की है। अच्छा कदमों का और क्रीज का इस्तेमाल किया है। जहां जहां मौका मिला हुसैन तालत को, और फिर क्योंकि स्पिनर्स पर इन दिनों 50 ओवर की क्रिकेट में पांचवा फील्डर भी कप्तान बाउंड्री पर खड़ा नहीं कर सकते, इसलिए भी परेशानी रही है खालिद उस्मान को। उस गैप को बहुत ही अच्छे अंदाज में एक्सप्लॉइट किया गया है। एक और अच्छा ड्राइव कासिम अकरम का 1 रन के लिए। एक नई रूह, एक नई जान सी फूंक दी है कासिम अकरम। हालांकि नौजवान हैं, तो वो लगता है कि टीम में जो जिस तरह के नए खून की ज़रूरत है सेंट्रल पंजाब को, वो देखने को मिला। और इस छक्के की भी ज़रूरत थी। इस बार अपने पैरों का हुनर दिखाया हुसैन तालत ने और लॉन्च कर दिया इंजिमाम इनक्लोजर के सामने। काफी लंबा छक्का, काफी देर बॉल फिजा में रहने के बाद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। अंपायर के हाथ फिजा में घुले हैं। इस बार शानदार 6 रन के इजाफे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 175। इस बार फिर बाहर निकले थे, लेकिन ज्यादा गेंद की पिच के करीब आ गए, इसलिए उठाने से कासिर रहे। 98 रन की पार्टनरशिप सिर्फ 85 गेंदों में, जिसने इस मैच को बिल्कुल सर के बल कर दिया है। मोमेंटम इस वक्त सेंट्रल पंजाब के साथ है और ख्याल किया जाता है ये अच्छी फील्डिंग थी कामरान गुलाम की कि जब 30 या 31 ओवर्स के बाद आपके पास विकेटें हाथ में हों तो फिर आप जो रन्स बोर्ड पर होते हैं आप उनको डबल कर सकते हैं। तो यहाँ अगर ये मजीद 150 रन भी बना लेते हैं तो वो भी अच्छा स्कोर होगा। अगर ये 320-325 तक पहुँच जाते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि विकेटें हाथ में रही हैं। कम से कम एक जो इनमें से सेट बैटर है वो ऑल द वे जाए 50वें ओवर तक। 176 पर 4। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं तारिक आप। पीछे काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी मौजूद है। पवेलियन में फ़हीम अशरफ मौजूद हैं, ज़फ़र गौहर मौजूद है, वहाब रियाज खुद बड़ी हार्ड हिटिंग करते हैं। और जैसे कि आप कह रहे थे कि हुसैन तलत स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं और उन्होंने आज ये साबित किया बड़ी शानदार बल्लेबाजी करके। 65 बॉलों पर 58 रन की बारी खेलकर अभी तक क्रीज पर मौजूद है और उनका भरपूर साथ दिया कासिम अकरम ने। जारहाना स्ट्रोक खेले ग्राउंड के चारों तरफ। 52 बॉलों पर 58 रन बनाकर अभी तक दोनों बल्लेबाजों की शराकतदारी जारी। फ़हीम अशरफ, ज़फ़र गौहर ये अच्छे ऑलराउंडर हैं। काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स हैं। आपको रिजवान हुसैन, इसके अलावा अभी हुसैन तलत ये क्रीज पर मौजूद हैं।
फहीम अशरफ बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं। या 5 ओवर्स रहते हैं इमरान खान सीनियर के, जो कि रिवर्स करने की अहलियत रखते हैं इन कंडीशंस में, और कप्तान ने अब उन्हीं को ही बुलाया है। समीन गुल के 3 ओवर्स हैं, वो ज़्यादातर नई गेंद के बॉलर्स माने जाते हैं। तो ये स्पेल देखना ये है कि ये कितना गेंद को लेट स्विंग कर सकते हैं इमरान। इसी एंड से इन्होंने अपने पहले 5 ओवर्स किए थे फार एंड से। सीधे बल्ले के साथ खेले थे, इसे 1 रन मुकम्मल किया। फील्डर तेजी गेंद के ऊपर आए, सीधा स्टंप्स पर। समीन है फील्डर, अच्छा थ्रो था, सीधा स्टंप्स पर लगा। प्लान अच्छा कर लिया था तारिक खालिद उस्मान ने। कामरान गुलाम ने एक अच्छा चांस अवेल नहीं हो सका, जो साजिद खान के आगे गिरा बॉल। काफ़ी अच्छी कोशिश थी साजिद खान की। कासिम का कैच जो ड्रॉप हुआ वो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है और उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा खैबर पख्तूनख्वा की टीम को। देखिए फ्रंट फुट से खेले थे, इसलिए भी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई क्रीज तक पहुंचने में। अच्छी रनिंग, फिट क्रिकेटर हैं हुसैन तलत, कासिम अकरम, दोनों फिट हैं और वो एनर्जी नज़र भी आई है बैटिंग क्रीज पर। दोनों ने जिस तरह से दबाव में रखा रिंग फील्डर्स को, अच्छे स्ट्रोक भी खेलते हुए नजर आए। और ये उन्हीं में से एक है, नया शानदार पुल शॉट, बैक फुट पर गए और मिड ऑन के फील्डर को ऊपर पाया और इससे दूर खेल दिया वाइड लॉन्ग ऑन की जानिब। एक और चौका कासिम का। और इस 4 रन के इजाफे के साथ 100 रन की पार्टनरशिप मुकम्मल हुई दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। शानदार 103 रन की शराकतदारी। और इस शॉट के शहाना होने का अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि फ्रंट फुट से इसे पुल करने में कामयाब हुए। इससे पहले भी एक फ्रंट फुट पर इस तरह के पुल शॉट पे चौका लगाया था, लेकिन वो गेंद मिडल नहीं हो सकी थी। खासा वक्त है कासिम अकरम के पास, इससे हम इनकी सलाहियतों का, इनकी बैटिंग टैलेंट का हम अंदाज़ा कर सकते हैं। हाँ, ये बड़ा मकाम है। T20 में, PSL में हमने झलक देखी थी इनकी बैटिंग की, लेकिन ये एक बड़ा मरहला है। ये पाकिस्तान कप का सेमीफाइनल है, यहाँ से आप सीधा नेशनल सेलेक्टर्स की नज़रों में आते हैं। और जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं कासिम, यकीनी तौर पर उनकी आगे की मनाजिल की राहें हमवार होंगी। अब तक शानदार बल्लेबाजी की है उन्होंने। 54 बॉलों पर 62 रन की बारी खेलकर अपनी टीम को मुश्किल में से निकाला है और 181 तक पहुंचाया है कासिम और हुसैन तल्लत ने। सेंट्रल पंजाब की टीम को ज़रूरत भी है कि नए क्रिकेटर्स सामने आए, क्योंकि इस टीम के बारे में आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि ये देखिए उस नए टैलेंट की झलक, और पूरी तरह कंट्रोल में थे, पूरी तरह इख्तियार में, किसी भी मरहले पर नहीं लगा कि कोई परेशानी हो। सेंट्रल पंजाब की जो ख़ास तौर पर बैटिंग है, इसमें जो बेशतर खिलाड़ी हैं ये बहुत अरसे से खेलते हुए आ रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट बेशतर टीमों से, और ज़रूरत है इसमें कासिम अकरम जैसे नए खिलाड़ियों की, उनको मौके मिलें। और कासिम अकरम ने इस मौके को हाथ से जाने भी नहीं दिया। और बड़े मैच में बड़ी इनिंग खेलते हुए कासिम अकरम इस वक्त हुसैन तल्लत के साथ। स्वीपर कवर, लेग साइड में भी एक स्वीपर मौजूद है। बाउंड्री पर आदिल अमीन, लॉन्ग लेग पोजीशन पर मोहम्मद सरवर को दूर से देखा जा सकता है। खासा आगे निकल गए थे कासिम, साजिद का निशाना खता गया। मुश्किल में नजर आए थे कासिम अकरम वापस जो है मुड़कर आते हुए, क्योंकि यू टर्न लेकर ये आना आसान नहीं होता। अच्छी कॉल थी हुसैन तल्लत की, खतरनाक साबित हो सकती थी कासिम अकरम के लिए। ये देखें काफी तेजी से बॉल के ऊपर आए साजिद, और अगर स्टंप्स पर लगती तो काफी खतरनाक साबित हो सकती थी। ये तो बाहर होते अगर साजिद इस बार
हालांकि ज़्यादा दूर नहीं थे वो स्टंप्स के। इनको अपनी फील्डिंग पर काम करने की ज़रूरत है, ये हमने टेस्ट मैचों में भी देखा है, क्योंकि ज़्यादा ये तेज़ रफ्तार फील्डर्स में शुमार नहीं किए जाते, ख़ास तौर पर जब ये रिंग के अंदर फील्डिंग कर रहे हों। साजिद आखिरी गेंद पर एक आसान रन हुसैन तलत और सेंट्रल पंजाब के लिए 183 पर 4। हुसैन तलत अपनी टीम को लेकर साथ चल रहे हैं, उनके साथ यंग टैलेंटेड उभरते हुए नौजवान कासिम क्रीज पर मौजूद हैं इस वक्त। शायकीन क्रिकेट भी इस वक्त ग्राउंड के चारों अतराफ मौजूद। ये स्टेडियम जो है ये शहर से तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर है, और पहले तो ये बिल्कुल ही शहर के मुज़ाफ़ात में था और आपको खासी तगोदौ करना पड़ती थी, लेकिन अब आबादी जो है यहाँ तक पहुँच गई है। ये विहाड़ी रोड पर वाक़े है ये क्रिकेट वेन्यू, और ये सदर्न पंजाब में ये क्रिकेट का हेडक्वार्टर्स है। यहीं पर सदर्न पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का दफ्तर भी है। हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे सदर्न पंजाब से खेले हुए हैं हुसैन तलत भी, कप्तानी भी की थी इन्होंने सदर्न पंजाब की। खतरनाक साबित हो सकता था। एक रन तेजी से हासिल किया कासिम अकरम ने, अच्छी कोशिश थी विकेट कीपर की। ये बड़ा ही अहम मरहला है। इस बार गेंद को फ्लाइट देने की कोशिश की, रफ्तार का इस्तेमाल करना चाहते थे। रेहान अफरीदी ने कोशिश ज़रूर की, लेकिन गेंद के हाथ लगी नहीं। ये अच्छा खेलते हैं, ये दोनों ही स्वीप शॉट खेलना जानते हैं। स्पिनर पे भी, फास्ट बॉलर पे भी स्वीप शॉट खेल लेते हैं हुसैन तलत। अभी जो हाल ही में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज थी, इनमें पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे हमने उनको स्वीप शॉट खेलते हुए बहुत कम देखा। माशाल्लाह एक रिजवान ने जो इनिंग्स खेली थी कराची में, वो स्वीप खेलते हुए नजर आए थे। ज़्यादातर पाकिस्तानी खिलाड़ी कदमों का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। अच्छा शॉट हुसैन तलत का, फील्डर तेजी से गेंद के ऊपर आ रहे हैं। एक रन मुकम्मल के दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन तेजी से हासिल किए। इस 2 रन के इजाफे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर सेंट्रल पंजाब का 4 विकेटों के नुकसान पर 187। ये तो हम बात कर रहे थे स्वीप शॉट्स खेलने वालों की। ये कासिम अकरम और हुसैन तलत जो हैं ये अच्छा खेलते हैं दोनों ही स्वीप शॉट। और इस बार इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, सीधा गेंद हाथों में गई। कप्तान खालिद उस्मान के साजिद ने विकेट हासिल की। इस ओवर की पहली गेंद जो विकेट कीपर के हाथ नहीं लगी थी हवा में रहते हुए, लेकिन साजिद को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और 3 गेंदों के बाद ही उनने चलता कर दिया हुसैन तलत को। कदमों का इस्तेमाल किया था, उठा के खेलना चाह रहे थे हुसैन तलत और कोई गलती नहीं की खालिद उस्मान कप्तान ने, और बड़ी विकेट हासिल की अहम मोड़ पर। हुसैन तलत जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे उनको पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया। बोझल कदमों के साथ पवेलियन लौटते हुए हुसैन तलत, काफी शानदार बारी खेली हुसैन ने। ये खतरनाक पार्टनरशिप इख्तिताम को पहुंची जिसमें 109 रन बने।
हुसैन तलत ने बनाए 63, 5 विकेट पर 187। साद नसीम से पहले फहीम अशरफ को मैदान में उतारा गया है और शायद जो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है उससे वो कायम रखना चाहते हैं सेंट्रल पंजाब की टीम ताकि मोमेंटम बरकरार रहे। लेकिन साजिद जिनका पहला स्पेल अच्छा नहीं रहा था, फील्ड में भी अच्छा वक्त नहीं गुजरा, यहाँ पर उन्होंने विकेट हासिल की और एक और इस बार बोल्ड हो गए कट करने की कोशिश में। तो फहीम अशरफ एक बार फिर स्पिनर के सामने नाकाम रहे और साजिद ने 3 गेंदों में 2 विकेटें ले ली। बोल्ड कर दिया फहीम अशरफ को, बगैर कोई रन्स बनाए खाता खोले फहीम अशरफ पवेलियन की जानिब लौटते हुए। एक ही ओवर में 2 विकेटें हासिल की साजिद खान ने। तमाम प्लेयर्स फिर इकट्ठे हुए हैं साजिद खान के इर्द गिर्द, कट करना चाह रहे थे गालिबन और इनसाइड एज हुआ है, बॉल सीधा स्टंप्स पर लगा। फहीम अशरफ, साजिद खान शानदार तरीके से अपना रिवायती अंदाज अपनाते हुए। यहाँ थाई 5 साजिद खान इसके बिलाशुबा हकदार भी हैं। फहीम अशरफ ने आज यहाँ पर बैठे हुए 3 स्कोरर्स को जहमत नहीं दी, 187 पर 6। चौंतीस ओवर्स के इख्तिताम पर 6 विकेटों के नुकसान पर खालिद उस्मान अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। सात नसीम आई हैं बल्लेबाजी करने के लिए फहीम अशरफ के आउट होने के बाद। ये अच्छा शॉट नहीं था जो अटेम्प्ट किया, अराउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे थे ऑफ स्पिनर जो कि ज्यादा गेंद को टर्न भी नहीं करते, एंगल के भी खिलाफ खेलने चले गए। और इस तरह स्पिनर्स के सामने जो बैटिंग का एक मसला है फहीम अशरफ का, स्पिनर्स पर ये कभी भी हावी होकर नहीं खेल पाते। 1-2 गेंदें ले सकते थे, अभी खासे ओवर्स बाकी हैं। इस इनिंग्स में वो जिम्मेदारी नहीं ली फहीम अशरफ ने। कासिम अकरम को लीड करना होगा अपनी टीम का स्कोर बढ़ाने के लिए। एक ही ओवर में जो कि डबल विकेट मेडन रहा, 2 विकेटें हासिल कर ली 187 पर। कुछ देर पहले तक 8 गेंदें पहले तक सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट थे। अब मैच का नक्शा बदला बदला नजर आ रहा है। अब तो पूरे ओवर्स खेलने के ही यहाँ से ये लाले पड़े रहेंगे यहाँ सेंट्रल पंजाब को। और इसी वजह से कासिम थोड़ा सा स्लो हुए हैं। 2 विकेटें या के बाद दीगरे जो गिरी हैं। टर्न नहीं है इस पिच में, विकेट स्लो जरूर है लेकिन रन्स मौजूद हैं। फास्ट बॉलर्स ने आज अच्छा स्पेल किया शुरू में।
इमरान और समीन गुल ने, लेकिन स्पिनर्स इस एक ओवर के अलावा स्पिनर्स पर अपनी बर्तरी साबित की तकरीबन सेंट्रल पंजाब ने। एक और अच्छा ओवर, इसमें सिर्फ 4 रन बने। खालिद उस्मान अच्छा साथ दे रहे हैं साजिद का, 191 पर 6। टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है साजिद खान का वो ओवर जिसमें उन्होंने 2 खिलाड़ियों को एक ही ओवर में आउट किया। पहले हुसैन तल्लत और उसके बाद फहीम अशरफ। ये हुसैन तल्लत कदमों का इस्तेमाल करके ऊपर से खेलना चाह रहे थे, सीधा फील्डर के हाथों में। खालिद उस्मान ने कोई गलती नहीं की और ये फहीम अशरफ लेट कट खेलने गए। बॉल बल्ले का अंदरली किनारा लेती हुई स्टंप्स पर जा लगी। बॉलिंग कार्ड आपके सामने। इमरान खान सीनियर ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। इमरान जूनियर और इमरान सीनियर ये आपको ज्यादातर आखिरी ओवर्स करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसमें भी कोई मुजायका नहीं होगा कि एक ओवर के लिए फास्ट बॉलर को यहाँ साद नजीम के खिलाफ आजमा लिया जाए। शुरू में फास्ट बॉलर्स के सामने और टेंटेटिव ख्याल किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोशिश यही होनी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की कि पूरे ओवर्स ना खेलने दिए जाएं, क्योंकि दोबारा उनका जो हाथ है गर्दन पे आ गया है उनके मुखालिफ टीम के। जी मैच में वापस ले आए हैं 2 विकेट लेकर। अच्छा बॉल तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार। क्या कहेंगे तारिक आप अपने एक्सपीरियंस से, कितना हदफ देने में कामयाब रहेगी सेंट्रल पंजाब की टीम? सेंट्रल पंजाब ने जो मुल्तान में इस सीजन में पाकिस्तान कप के पहले 2 मैच खेले थे, तो ये टीम ज़्यादा फैसलाबाद और रावलपिंडी में खेलती रही है, तो दोनों ही मौक़ों पर ये पूरे ओवर्स नहीं खेल सके थे, पूरे 50 ओवर्स। एक मैच में 29 ओवर्स में टीम ऑल आउट हुई 134 पर, दूसरे में 38 ओवर से भी पहले। तो यहाँ फिर से मौका है, फील्डर तैयार हैं गेंद के नीचे और ले गए कैच। बड़ा उम्दा बाउंड्री लाइन पर इसे दूर से आकर लिया इमरान ने, और इस तरह एक और सेट बैट्समैन आउट हुए। कासिम अकरम जो बड़ा आला खेल रहे थे, दूसरे एंड पर विकेटें गिरने का दबाव वो नहीं झेल सके, स्वीप करते हुए टॉप एज हुआ। एक और विकेट साजिद को मिल गई। रिप्ले में देख सकते हैं आप, उठा के खेले, कोई गलती नहीं की फील्डर ने, सीधा बड़े पुरएतमाद तरीके से। काफी नाखुश दिखाई दे रहे हैं अपने इस शॉट खेलने पर कासिम, बार बार उस शॉट को दोहराते हुए पवेलियन की जानिब लौटते हुए। कासिम अकरम काफी मुश्किल में बारी खेली उन्होंने, शानदार 63 रन 63 बॉलों पर 67 रन की बारी। बोझल कदमों के साथ पवेलियन की जानिब लौटते हुए कासिम अकरम आउट हुए। 67 रन की बड़ी उम्दा इनिंग्स के लिए 194 पर 7। राइट हैंड बराबर से बच्चे जमीन को लाश है जमीन मेन फील्डर है हमारा ये खबर पे आवाज पागा इमरान अहमद के साथ ये बात बच्चे ना बच्चे एक रन
देखिए टॉप एज गेंद ज़्यादा बाउंस हो गई थी उनकी तवक्को से, लेकिन बड़ा अच्छा कैच लिया अशफाक ने बाउंड्री लाइन पर, जो इस टीम के सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी हैं। खासा दौड़ कर गए, फील्डिंग अच्छी रही है, ख़ास तौर पर जो आउट फील्डिंग है खैबर पख्तूनख्वा की, उससे जो हेड कोच अब्दुर्रहमान हैं खासे खुश होंगे। कासिम अकरम के आउट होने पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं जफर गौहर, सामना करेंगे खालिद उस्मान का, कप्तान का। फील्डिंग का जायजा ले रहे हैं खालिद। जफर गौहर जो हालिया मैचेस में अच्छा खेले हैं, आखिरी मैच में भी सेंट्रल पंजाब को उन्होंने कामयाबी दिलाई। यहाँ एक मौके पर उन्हें अपनी टीम को मुश्किल से निकालना होगा। अभी 14 ओवर्स का खेल बाकी है। ये 50 ओवर्स जो हैं कई बार ये बाज बैटर्स को भी ज़्यादा लगने लगते हैं। T20 क्रिकेट खेलने की जो रस्सियाँ हैं, ये आज हमने देखा इनकी मिडल ऑर्डर बैटिंग जो थी, इनमें वो जो इन्हमाक है ये 50 ओवर की क्रिकेट खेलने के लिए ज़रूरी होता है। कई मौके पर कंसंट्रेशन लैप्स हुई है, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब यके बाद दीगरे आपकी विकेटें गिरने लगे तो 50 ओवर काफ़ी लंबे लगने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा तारिक आपने। जफर गौहर सामना करेंगे। सिंगल रोटेट कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। सेंट्रल पंजाब की टीम में खासे बड़े नाम हैं, इनके कोचिंग स्टाफ में बड़े नाम हैं। अब्दुल रज़ाक जो पाकिस्तान के ऑलराउंडर रहे, यहाँ पर एक मैच में इन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी भी की थी अब्दुल रज़ाक ने, यही मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच में, शायद पहली और आखिरी मरतबा। वेस्ट इंडीज मैच जीत गया था। दिफाई अंदाज में खेले इस बॉल को साथ। उनके साथ अशरफ अली जो 80 की दहाई के बड़े मशहूर विकेट कीपर थे। सलीम यूसुफ को उस ज़माने में ज़्यादा मौके मिले, इससे ये पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल नहीं खेल सके। 197, 7 खिलाड़ी आउट। खालिद उस्मान अभी तक कोई विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं रहे। कप्तान हैं, 9 ओवर्स करा चुके हैं, 51 रन दे चुके हैं। ये मुल्तान स्टेडियम का खूबसूरत मंजर। इस मैच में बड़ा अच्छा कमबैक खैबर पख्तूनख्वा के स्पिनर्स का। साजिद खान ने इस दूसरे स्पेल में काया पलट दी, 3 विकेटें लेकर। वही इस मैच के बेहतरीन बॉलर भी हैं। 2 विकेटें हासिल की इमरान जूनियर ने। संभल कर एक बार फिर पटरी से उतर गई है सेंट्रल पंजाब। यहाँ से जो बाकी मांदा ओवर्स हैं वो खेलना मुश्किल लग रहा है। और टेल अंडर्स को या जो बॉलर्स हैं उनको अपनी बैटिंग पर इस ज़माने में तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसका एहसास हमें हुआ था इस पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ में भी। कि आप सिर्फ एक डिसिप्लिन पे काम करके या एक डिसिप्लिन से वाबस्ता रहकर आपका सरवाइव करना मुश्किल है दौरे हाजिर के क्रिकेट में। अनलेस कि आप बाबर आजम या विराट कोहली हों
या केन विलियमसन हूँ। बिल्कुल सही कहा तारिक आपने, क्योंकि टेस्ट में काफ़ी लंबा जाना होता है। प्रेशर बरकरार रखा हुआ है साजिद खान ने फील्डर्स ऊपर लेकर। सिंगल रोटेट कर रहे थे और उस सिंगल को रोका है खालिद उस्मान और साजिद खान की हिकमत अमली ने। साजिद खान ये ज़्यादातर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में विकेटें लेने के लिए जाने जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा के लिए। इस बार कट किया, बैकफुट पर आकर एक और अच्छा शॉट, दूसरे रन के लिए भी वापस मुड़ गए, क्योंकि जो 50 ओवर के मैचेस हैं पाकिस्तान कप में, आसिफ आफरीदी इनके सरकर्दा स्पिनर्स होते हैं। वो पाकिस्तान टीम के लिए इन दिनों वनडे स्क्वाड के साथ हैं लाहौर में आसिफ आफरीदी। तो साजिद खान को मौका मिला है कि वो वाइट बॉल क्रिकेट में भी कुछ कर दिखाएं। टेस्ट सीरीज इनकी ज़्यादा अच्छी गुजरी नहीं, 4 विकेटें इन्होंने हासिल की 3 टेस्ट मैचों में। 38 ओवर्स के इख्तिताम पर 7 विकेटों के नुकसान पर बढ़ता हुआ स्कोर 199। Nicely done, through the gap. This is Saad Naseem's special. Plays it late, in the gap, placement perfect, result perfect. Yeah, threading the needle. Great shot, 4 runs, good result. Waited for it, rocked back on the back foot and then took full advantage. This is good, sensible batting. Yeah, slightly short, waited and threaded the needle, 4 runs. Great shot. This is what you expect from a player like Saad Naseem. We all know that he believes in nudges. This time lofted over that extra cover fielder. Just looked to get 2, easily done in the end. This is another very crucial part of the game, Leena. Central Punjab needs to rebuild and try to make a comeback in this game. They had a good partnership, Talat and Qasim Akram, but now that both of them are gone, absolutely have to build from here again, and these last 10 overs take the score as far as they can, because 205 not enough. I think 280, 275, 280 could put that pressure, that chasing pressure. They must keep believing that they can get to that score. Saad Naseem, Zafar Gohar, they both can bat. Wahab Riaz still to come, another very talented cricketer. So they must believe that they can get to that 280 mark that you just mentioned. But for that, they have to play out all these overs. They must not get out before this 50 overs. Wahab Riaz, as you said, can tonk the ball. He has the ability to hit big, use the long handle. But for that, they need to bat another 5 overs to give him that opportunity. He cannot bat 10 or 11 overs. So these two will have to take it till about 45 overs, and then Wahab Riaz can come and entertain the crowd and use the long handle. Wahab Riaz definitely has played some crucial innings for Pakistan also. Central Punjab would be hoping a similar sort of role that he can play here for them. At the end of 39 overs, it's 207 for 7 Central Punjab. The partnership that you were earlier mentioning, the partnership between Qasim Akram and Hussain Talat, they were going along so nicely, but you cannot blame anyone. They just gave it away, especially the shot from Qasim Akram. There was absolutely no need of that shot at the time that he played, because they needed a partnership, but they threw it away after doing all the hard work, Qasim Akram.
Sajid has bowled well today, but we have been discussing his action. The non-bowling arm falls down pretty quickly, but today he's done well. But this is what happened when you give wickets to spinners, Lina. If you let them settle, they will definitely come at you. And this is what happens here with Sajid Khan. He got the wicket of Hussain Talat, then Qasim Akram gave it away. Then Fahim Ashraf lofted over the head of the fielder. Bowler rather, just one run. So if you let them settle, if you let them bowl at one line, they will get at you. And this is what has happened. And now it's probably very difficult to get him away. Yeah, you have to absolutely dominate the spinner. You have to take risks, use your feet, or wait for the ball to come and cut it, or back foot or front foot shots. You can't let him dominate. You're absolutely right. Down the track, no chance for the fielder. He has deposited into the stand. This is what we associate with Saad Naseem. He will go big on spinners. An excellent result for him. And this is exactly what we were talking about. Use the feet, take the advantage. If he's flighting the ball, come down the wicket, get that, elevation on your shots, get the runs. And this is exactly what Saad Naseem did. Wonderful shot. Pressure back on. Sajid Khan, have a look at that footwork. Saad Naseem has been around for a long time. And we know that he is very good with spinners. There you can see the pressure definitely on Sajid Khan after that six. Yeah, once the bowler has been hit for a six, he will try and change things a bit, and thus he bowled that wide. So the batsman should take advantage here. The third 50 of this inning has been the most beneficial for Central Punjab, coming off just 44 deliveries. That was a time when Hussain Talat and Qasim Akram were going well before they throw it away. Because if you look at those three dismissals in the middle, which Sajid Khan took, there was not really any threatening deliveries, but the shot selection is questionable. We'll come back to that. 40 overs gone, 215 for 7th Central Punjab. Sajid Khan taking 3 wickets for 56 runs. He's bowled 9 overs. Very key time that he came to bowl. Let's have a look at the batting card for Central Punjab. Ahmed Shahzad looked solid for 35 runs. Hussain Talat was brilliant for his 63. Qasim Akram also an excellent inning, but the way he got out, in my opinion, was very disappointing. And now it's up to Saad Naseem and Zafar Gohar to take that team to that score of 280 that you were mentioning, Lina. I think they were depending a lot on Fahim Ashraf because he does have the ability to hit the ball, but he, cut a ball which was right inside the stumps, going into the stumps. Yeah, this was what we were talking about. There was not really a threatening delivery. It was all poor shots. Have a look at this. You just lost 2 wickets and Qasim Akram decides to go big. This is what I mean when you say just giving your wicket away. Yeah, he doesn't turn the ball much. Balls just wicket to wicket, flights the ball, changes the pace sometimes. So he's not someone who can come and threaten you and pick up 3 wickets because he's turning the ball. You have to make those mistakes, and they did. I mean, you can't cut the ball from within the stumps. And Qasim Akram was playing well, all set to get 100, and then he took that unnecessary risk. Still had 11, 12, 13 overs to go. So, that is when you suffer as a team. And we just hope that these two can then now form a partnership and take the score towards that 270, 280. So also the tactics of sending Fahim Ashraf ahead of Saad Naseem will be a question mark too. Because this central side is full of test cricketers as far as the coaching camp is concerned. Abdul Razak we mentioned is there. Humayun Farad also in the camp. Akram Raza also. All these 3
test cricketers as coaches for Central Punjab. Even the manager is a test cricketer too. Sending Fahim Ashraf early, perhaps they were thinking if he, gets into a good rhythm, he can hit the ball. Maybe he hit a few sixers, get up the ante a little bit, but that didn't happen. So it was a failed experiment. But then it could have worked also. Imran Khan Jr. is back, and he just timed it into the gap. One more run to Zafar Gohar, who's also a very exciting cricketer, both with bat and ball. The last game against Sindh, which was a must-win game for Central Punjab, he did it single-handedly, not with the bat but with the ball. Both. He was brilliant. But this is a new game. You got to bring out your A-game Herald now. Yeah, the semi-finals are great pressure games, big games. And that's the ground dimensions for you and the fielding positions. He'll keep on nudging you for singles all day long if you bowl him there, Saad Naseem. This is a time when teams are thinking how to get as many runs as possible. And when you have wickets in hand, it's easier to do. When you're 7 down, it's not, it's a bit difficult because one more wicket than Wahab Riaz, and not every time is he going to be successful. So it is important that these two take the score to 250 or play till 45 overs, like you were saying, or not easy. The KP bowlers are bowling well. Oh, nicely done. Played it late towards the third area. One more run to Zafar Gohar. He's definitely got talent with the bat, Zafar. And this boy, Imran's got a lot of talent. I'm a big fan of Imran Jr. He's got a lot of, look at this shot, so expertly played by Zafar Gohar. So, Imran Jr. has got a lot of talent. He's got a lot of speed. When he wants, he can bowl that slower ball from the back of the hand. So talented boy. Nice, he'll have to hurry. Makes it easy in the end. These two are very fit cricketers, both Zafar and Saad, so the running between the wickets will be spot on. Have a look at that, just hitting and running. Good cricket. Any youngster, if you're looking, this is how you play. You just tap it with soft hands and run straight away. Immensely important, these short singles, just stabbing the ball, running. But it has to be good communication between the two batsmen for that to happen. Dealing in singles at the moment. This is good cricket because they need a partnership here. At the moment, this partnership is slowly, gradually building. It's 26 at the moment. And they would want them to go along till at least 45, 46 overs, and then Wahab Riaz can come and use that long handle. Sajid Khan is not in. He's probably talking to that physio of KP. He's come back into this game after a long test series. 3 test matches he's played, long spells. Again, very good cricket by Saad Naseem. Excellent anticipation. Judging the run to perfection. 41 overs gone, 221 for 7 Central Punjab. Yeah, that is Saad Naseem special. We know that he does it beautifully. He exactly knows when to run, how hard has he hit the ball, which fielder is it, which side the ball is going to the fielder. All these things matter when you judge a quick single. Worried faces. You get to get hungry when you're worried. That's what Akram Razai is doing at the moment. Ali, that's what you do when you are worried? You eat a lot? A lot, a lot. That's great.
Down the track, wanted to go big. Elevation not quite there. This is the last over for Sajid Khan. He's given away 57 runs till now. But that one over that changed the course of the game and his figures too. Yeah, he's been a tad expensive. But these days, I mean, 6 runs and over is not bad when you pick up 3 wickets. And that's the important thing. Wickets. In any form of the game, any format, wickets are the key. They never say in test match you make 500 runs and you win a match. They always say pick up 20 wickets and you win the match. So wickets are the key. So well bowled to Sajid. I mean, he's done well this match. Absolutely. I think with this new rule of having 5 fielders inside the circle with the middle overs, spinners bowling, it's never easy to contain. So probably if I'm the captain with having 3 wickets, 6 and an over, I think it's a job well done by Sajid Khan. Just short of the fielder, single. Yeah, he's bowled well. I mean, you know, picked up 3 wickets, like we were saying, not easy to bowl with the fielders inside the circle. 5 fielders. And 3 wickets. That's the dent. That's misfield at final leg red will make Saad Naseem come back for 2. Sajid Khan is definitely not happy. No bowler is ever happy because of the misfield. Towards the leg side. Lucky that it didn't go for 4. Either side of the fielder, it might have gone for 4. It's good bowling. Bowling according to the field. End of 42 overs and end of Sajid Khan's 10 overs too. 227 for 7 is Central Punjab. Please more 2 overs because I am Adi 50-50 hour. He's still eating. He's still worried. Akram Raza, the captain alongside him, Wahab Riaz, will have to play a key role here if they have to finish well. Wahab Riaz becomes very serious when he's the captain. I saw him during the National T20 and the final against KP. He was not a happy chappy when they lost that match. Well, that's fast bowlers for you. If you make fast bowler the captain, you must be ready for the consequences because they are naturally another angry man. So he should be because he was well set, he played well, he looked solid. Just could not quite capitalize it. Ahmed Shahzad, wonderful character. Central Punjab needed a big one from him. Well, he managed to get a start, Ahmed, but couldn't take it further. Got 30-odd runs, had a good opportunity to make 60-70, well settled, and he's a good player. I hope he's listening to me. I think he's a good player. Yeah, 60-70 you say. I say 160-70 because that's what openers should do. Ahmed Shahzad and a potential like Ahmed Shahzad, the talent like him. That's gone in the air. There is a fielder, but he won't be able to catch that. That's gone over the ropes for a very lucky 6 for Zafar Gohar. Central Punjab needed a release shot. They've got it in the form of a 6. Yeah, that was well done. Intent shown, was miscued. It didn't come in the middle of his bat, yet he got 6 runs. Shot, hooked away, top edge, but 6 runs. And that is what Central Punjab needed. Zafar Gohar scored a 50 in the last game against Sindh. Took 3 wickets to single-handedly
won that game for Central Punjab and made them qualify for this semi-final. He's a very good cricketer. Zafar Gohar recently had a great season in the English county, Gloucestershire. He must be full of confidence, although he did really well with the ball, not so much with the bat. But then, you know, that kind of confidence rubs on. If you do well with the bat, you will, when you're batting, you will do well. If you do well with the ball, then, you know, vice versa. I mean, confidence is a great thing. Mid-off has gone to long off. Khalid Usman, the captain himself, bringing him to long off, probably realizing. Full toss through the gap. 2 is the call by Zafar Gohar. 2 he should be able to make. Easily done in the end. Yeah, now they're taking single doubles. Also, when the opportunity arises, they're hitting the big shots, which is very important because this is the time when you have to hit the big shots. Take the risk, take the initiative, up the ante. It's very important. And I think both the batsmen realize that. Change of pace this time by Imran. He's got lots of variation, lots of slower ones, back of the hand deliveries, and using them nicely and wisely. I absolutely love his back of the hand slower ball. So beautifully he bowls that. Absolutely beautifully. He's perfected that, worked hard on it. People don't imagine how hard you have to work to perfect these kind of things, you know, the slower ball, back of the hand, and get it right every time. So this is a good young bowler. And he's got some pace too. He'll have to hurry. Saad Naseem makes it easily in the end. You rightly said the variations. It's easier to have variations, but it's not easy to control them. Bowl them in the right areas. 43 overs gone. 237 for 7, Central Punjab. Razali Dar on your right, ex-captain in the same tournament, I mean. The first few games he was made the captain. Razali Dar, very good young all-round cricketer. Left-arm spinner, left-hand batter. Very good cricketer. Is it, I'll ask you, I'll throw this question to you. Is it unsettling for the team when you change the captain in the middle of the tournament? This is what has happened to Central Punjab, although they've got a captain in form of Wahab Riaz. But earlier, this man, Razali Dar, was made the captain. And after 3 or 4 games, they changed him. It has to be. I mean, you have to have some kind of continuity with the captain. If you change the leadership every few games, then of course the thought process is different. Every leader is going to bring his thinking, his formula, his brand of cricket. So the rest of the team is going to be disturbed with that because they won't know what to do. 3 games, 1 formula, 1 brand of thinking, you know, certain way they're going, then another captain, another change. Yeah, it's got to be confusing. There are few people coming into the ground, Multan Stadium. But as the match progresses, the second semi-final to be played day after tomorrow between 2 excellent teams. Sindh will be taking on Balochistan for the second semi-final of Pakistan Cup, and I'm sure people will come, more people will come into the stadium as we see a change in the bowling. Sajid Khan has bowled out his 10 overs, so now we see Sameen Gul now coming back for his last burst. 7 overs for 34 runs, 1 wicket to his name. On target, Sameen Gul. Good bowler, has nice seam position. Has done well recently in the PSL. 1 for 34 up till now.
Picked up a crucial wicket. The field is well scattered. There's a fielder at mid-wicket. And there's a deep square leg, deep fine leg in place. The offside field, the mid-off fielder is up in the circle. Probably they know that Saad Naseem fancies that mid-wicket area. That is where he likes to hit. At the moment he's bowling well, within these limits, within the wickets. And that has been the quality of these KP fast bowlers early on in the inning also. When Ahmed Shahzad and Rizwan Hussain were playing, they hardly gave anything away. They were so spot on with their line and length. That did put pressure on central openers. And that was a crucial period, the power play overs. They took a lot of time to get going in those overs. And that pressure eventually got the wicket of Rizwan. It's nicely pulled it. There is a fielder there. Will only be one for Saad Naseem and Central Punjab. Absolutely, you say that did put pressure on the central batters. But then had such a huge batting lineup. But the shot selection probably is a big question mark on this central batting lineup. The way Umar Akmal played, I think that was poor. A lot was expected of him. But then played a poor shot. Qasim Akram played a poor shot. So they probably cannot blame anyone but themselves. Around the wicket. It's been flicked towards fine leg area. Misfield will allow Zafar Gaur to come back for second. My bone to pick with the openers, Central Punjab openers, is that they didn't rotate the strike. Fine, they weren't getting the shots away, they weren't getting boundaries. But here's the misfielding, 2 runs the result. But at that time, when they weren't getting the boundaries, the openers, they could have rotated the strike better. And that releases the pressure. It's not just the boundaries which release the pressure, but also singles. Waited for it. They now realize that bowling into the pitch is the right way to bowl on this pitch. Because it's holding up a little. So if you bowl into the pitch, it will never be easy for the batters to hit it away. It's not the kiss the pitch and get that swing or that seam. You have to hit the pitch hard and then get the bounce or pace from it. Most pitches in Pakistan, you have to hit the ball on the pitch, bang it in, and then hope for the help. No is the call, and I think that's the right choice. 44 overs have passed, 241 for 7 is Central Punjab. As many as 7 bowlers used by Khyber Pakhtunkhwa captain Khalid Usman. And the pick of the bowler has been Sajid Khan. 10 overs, 3 wickets, 62 runs. Mohammad Imran Khan Jr. also very impressive. 2 wickets for 38, 1 apiece for the 2 premier fast bowlers of KP. Imran Jr. bowling in the death over business end of the innings. Not easy. Straight to the man. Well, probably this is the time when the fun begins. We might see a few big hits from these 2 batters. They've got potential in them. Zafar and Saad Naseem and Wahab Riaz to follow. Fun only for the batsman, not for the poor bowler. And us also. And all the people watching on TV. Yeah, absolutely. I mean, people watching on TV, us commentating here, we like to see 4s and 6ers. Slower one, well picked up by Zafar Gaur. A fielder was inside the circle, 1 more run. In fact, there is 1 extra given. You take 1, get 1 free. That's why I like this young man. He has the courage, which is the main prerequisite of playing cricket, to bowl in the death overs.
He mixes up the deliveries really nicely, the slower one. He has good speed also, so that's the single. So it's important to know how to mix up your deliveries in the death overs, and he knows this art. And if you can bowl deliveries like this, to go with the variations, you get very difficult to get away. Wonderful spell of bowling by Imran Khan Jr. Right in the block hole. Yorker is always the king, the king. Have a look at that. Right in the block hole. No chance for Zafar Gohar to get it away. You're talking about the variations. It's so important to have that length right when you're bowling a slower one off the back of the hand delivery. Because if you get that length wrong and ball it halfway, batsman will punish you, definitely. But if you can have a good line and length going with those variations, very good. But this time, way towards leg side. You casted the curse upon him. My bad. Absolutely yours. $244 for 7 Central Punjab, as we see Imran Khan warming up a little for the last burst maybe. He's been such a huge performer over the years for KP. Multan Sultan also. Lofted. There is a fielder. Oh, just falling short of him. So intentions we're just starting to see as the partnership comes to 50 runs. What a wonderful partnership this has been by Zafar Gohar and Saad Naseem. At a time when the team needed it, they have delivered. And that is what you expect from your senior members like Saad and Zafar Gohar. They've done a wonderful job for the team. Sensible hitting, singles, doubles, name of the game. When you got 7 wickets down, that is what you do. If, they started to go for those 6 or 4s initially when they came on the crease, both of them, there was always this danger of losing another wicket. But they did it really sensibly, planned it, took their risks, and also ran really well. No, they're not happy. Still not happy. Humayun Farad on the left, in the middle is the big man, Abdul Razak, and Ashraf Ali, the manager. Well, I think they're happy, but they're poker-faced. That's my assessment of the gentleman. 45 overs gone, 245 for 7. This is the first semi-final live from Multan Cricket Stadium. KP versus Central Punjab, two of the big teams, two of the big regions in Pakistan domestic circle. Star-studded Central Punjab versus very resilient KP side. Although after losing 3 or 4 main players to national duties, they've still done a great job. It's never easy when you lose 3 or 4 main players and you're still able to compete against a big side. So well done to KP too. Imran Khan Senior back into the attack. He's their main bowler, go-to bowler. And I think Central Punjab are doing well now, Ali, because they played well. They weathered the storm really well when they lost 7 wickets. This partnership of 50 is it's going to hold them in good stead. Oh, nicely done. Straight. There is a protection on long on. The timing quite not there for Zafar Gohar. But single, they're happy. They should be happy with it because they're continuously rotating the strike. And that definitely puts pressure back on KP at the moment, because 4 overs after this, got 29 deliveries. If they can get 40 more runs, they should be very happy. 280, 285, that should be an excellent total. That is what we were told by a colleague who did the pitch report. 280 to 300, excellent score. And they're well set for that.
Oh, it's lofted over the fielder. Might not have the legs to go for 4. Yes, Khalid Usman, the captain, doing the work there. 2 more runs to Saad Naseem and Central Punjab. You were talking about Shah Faisal doing the pitch report and predicting the score. And let me tell you, he's been spot on most of the time. When he says it's going to get to 280, it usually does. He's very good with that. Well, our compliments to Shah Faisal for being precise. The compliment has to be returned. You must remember that. It's good fun as Saad Naseem plays it through the gap. He will come back for 2. Yes, he does. This is where these two cricketers are so good with that fitness level. They're running between the wickets. They're judging of 2 runs. Spot on. You know, reading the pitch, just look at this. First of all, let's look at this running of between the wickets. Beautiful. Great communication, that's the key. And then we were talking about the art of reading the pitch. I mean, recently I saw, during the T20s and National T20, I saw Haseman doing a great job. And it's not easy. Good cricket. Excellent cricket by Central Punjab batters. Wonderfully done. Played it with soft hands, and he knew that he's got a single the moment he hit it. Saad Naseem playing a very vital inning for his side. This is what you're expected of a senior player like him. At a time when they were in danger of being bowled out before 50 overs, this partnership of 57 has rescued them from that. Both the batsmen on their haunches because they ran pretty quickly in the past half an hour. It's quite hot out there. Oh, Zafar Gore wanted to go big towards mid-wicket. It's missing leg stump maybe. Samin Gul definitely pleading umpire, but it was missing. Good umpire he is. Kaisar Waheed. Have a look at that. A slower one. Rolled over the fingers. But that pitched way down the leg side. It shouldn't be even appealing for that. You know? Just being optimistic. Fast bowlers being fast bowlers. Have you seen the reviews they take? I mean, it's just only fast bowlers can take those reviews. This one was definitely missing the leg stump by a country mile. Is it? Zafar Gore needs some attention. It's beautiful view of Multan Cricket Stadium and aerial view of Multan city. Very traditional city, Multan. Lots of mosques and shrines. And you associate Sufism with Multan city. Wonderful people, very loving, very caring people of Multan. Every time I come here, I just feel so home in Multan because I live that far from here, just an hour drive to Vihari. Wonderful region. Your hometown, this. So I'm sure you feel the love. And that's great. It's great city. The pottery here is very beautiful. You've been the looking Son for Halwa. it. You've been looking for it. Yeah. Tomorrow I'll look for it. Just the architect has been so wonderfully made. That old school, old walls, those old school walls. It's just excellent city. If you're a history fan, if you're into history, you must come and visit Multan. There's a lot of richness in history. There's a lot of agriculture around too. Specialist cotton is around this area. Mangoes also, if you like them. Who doesn't love mangoes? Well, let's love this partnership. If you're a Central fan, Zafar Gore and Saad, 57 at the moment. This was the pick of the shot, that extra cover 6 by Saad Naseem. Brilliant. A bit of luck also needed, and they did get Zafar Gore. Got this boundary. A very timely partnership by these two. They're not done yet. 57 at the moment. Still going strong, and they need to be.
270, 280 is the target in their mind, and this time it's a single. Didn't come onto his bat as well as he wanted it to. "46 overs gone, 251 for 7th Central Punjab, as we come in the last 4 overs of this very exciting game. Just love the production, love the cameramen. Excellent scenes. You have to give credit to everyone involved. It's definitely a PCB production. Trans Group, 360 Group. They've all been working very hard to bring out these pictures for you. These are wonderful scenes. Cricket has changed over the years. The production of cricket has improved immensely over these years, as we see Imran Khan Jr. now. Zafar Gaur has put it in the gap. He should look to get 2. No, says Saad Naseem. There was 2 available. Probably the tiredness showing on Saad Naseem's body. The shots you saw a few moments ago, just absolutely breathtaking. Top-notch production. Credit to the cameraman and the production crew here. It's pretty hot, and they've been talking in our ear all day and outside. That's Adnan for you, the person who's talking in the yeah, ears. Adnan is just tremendous. Captain of the ship, as they say. And we can see the fielding from that aerial view. Drone helping us find the fielders wherever they are placed. Another change of pace by Imran Khan Jr. Look at this change of pace, how beautifully he does it. Well done. Ah, so nice. How much practice goes into it. Bang! That's through the gap, through the hands of fielder Sajid Khan there. It was well hit. It was straight to Sajid Khan, but he made a mess of it. And this is not the first time. This is probably the second time that the ball has gone straight to Sajid Khan and straight through him. He's just played a test series, 3 test matches. So he's feeling the heat, dropping that catch. Both catches should have been taken. Went straight to him. Very good cricket. All around. It was very well bowled, very good judged by Saad Naseem, and a very good single. The way Imran bowls a slower ball reminds me of the way Aqib Javed used to bowl it, from the back of the hand. Pretty similar. He had this ball where he used to bowl it from the back of the hand. It's in the air. There is a fielder. Should be able to take it. And has taken it. He's not happy because it did come in the way of Sun, but he has judged it perfectionally. Very good fielding. That's Ishfaq Ahmed there at long on, taking a very good catch and ending the inning of Zafar Gaur, who played a very useful knock for Central Punjab, scored 29 runs. But he had to go big. He had to go after the bowling. Even the 3rd wicket to Imran Khan Jr. Well deserved, this wicket, and good catch. Right in the sun, but nicely taken in the end. Another change of pace. Probably Zafar Gaur realized it and wanted to go big, but the elevation was not quite there. The force was not behind him. And lucky that Ishfaq, it went straight to him.
Why wasn't he wearing the glasses, the enhancers, the light enhancers? I mean, you can't complain if you're not wearing light enhancers. Important to wear them. Very valid point, Lena. Very valid point. It's a day game. You know that's gonna be like this. The weather is gonna be hot. You must have those, especially when you have to field on boundary line. Farhan Nisar makes a very good point too. That usually if you see it all around this stadium, there are white seats. The seatings of the stands is white in color. So every time the ball goes up there and it comes through that, it's never easy to judge. White ball against those white seats. So thank you, Farhan, for making this valid point. Yes, you can lose the ball in the background of the white seats. Nicely bowled once again. Single taken. Wabras has to hurry. What was he thinking? Had that been a direct throw, that would have made things very interesting. The replay would be very interesting because he was just walking in the park. Wabras, the captain. 47 gone, 257 for 8, Central Punjab. We're never tired of this beautiful stadium, Multan Cricket Stadium. You can see the view. I just love that stand, if you can see right in front, just over that pavilion. It's a wonderfully structured stand. Probably I've never seen a beautiful stand than this, at least in Pakistan, any stadium. Right over the dressing rooms, gives the best view to the viewers sitting there. Excellent. It's a good stadium. Sameen goal. Nice action. Oh, this will run away for 4. Unlucky for the bowler. It was a well-directed Yorker, but Wabra is doing well, getting it towards fine leg, a boundary. Slightly down the leg side. That's why it cost them 4 runs. But he's a good bowler. His action is nice. He's become strong over the years. His seam position's very good. But sometimes, of course, you can misdirect any delivery that you're trying to just slightly down the leg side. And 4 runs. Oh, again, this time on the right of the wicketkeeper for 4. So luck definitely favoring Wahab Riaz. The last delivery was towards the leg side, it went for 4, and this time on the offside, another boundary for Wahab. The last delivery, he deserved to go for 4 because it was down the leg side. This one was a good delivery. He was unlucky. Just let's take a look. Look at this. Yeah, unlucky. It was a slower one. It was a cutter we tried to do. But the margin of error is so minimum these days in white ball cricket because the batter will go after you. He will go for runs. Again, a slower one, a cutter by Sameen Gul. That has been the order of the day. Ball slower ones into the pitch to create some problems. Edges of the bats these days, they're so thick. Once you get an edge and there's no fielder, it's going to carry to the boundary, third man or fine leg, whichever end of the edge it hits, inside or outside edge. A keeper has no chance sometimes. 1 for 54, Sameen Gul in his last over. Oh, there's an appeal. It's very close, very close. It's pleading. Umpire says no. Oh, looked out, looked very close. Looked very close. 1 run given. Let's see how close that was because looked like a really good shout. Might have been lucky. Let's see.
Oh, I think might have been going down the leg side, but it was a pretty good shout. Very close, considering that Saad Naseem goes deep in the crease. But yes, Kaisar Vaid, well done, good decision. Well bowled. This is an excellent over, although he's given away 2 boundaries, but that was off edges. He's been spot on with those slower ones, Samin Gul. The smile says it all. He knows that those 2 boundaries that he got were lucky boundaries. Fortune favors the brave. The Central Punjab batters have been brave. There were 7 down at one point, and then came the partnership between Zafar Gohar and Saad Naseem, and that put them in a good position. Nicely done, through the gap. Gorgeous shot. This will run away for 4. Saad Naseem now opening up his shoulders. A boundary to end the over. 48 overs gone, 272 for 8 Central Punjab. So look at that, played it late. That is the quality of this guy. Wonderful inning. Yeah, waited for the ball, played it right under his eyes, and last moment just cut it for 4. Backward point. Good shot. And his confidence now. He's been on the crease for a long time. He's done the hard work. He knows exactly what the pitch is doing. And that is the benefit of staying on the pitch. You stay on the pitch and you're bound to do well. That's something we should tell Umar Akmal. He's got so much talent. Stay on the crease, spend some time, and you are going to do well. Let's not go there. Let's not go Umar Akmal's way. It's one flicked, but there is a field up. Very good running by Saad Naseem. Yes, I definitely agree with the point you're trying to make. Probably Umar Akmal should learn from somebody like Qasim Akram too. The way he built his inning, the way he was there, the very positive from the start. But there is no point, I guess. Yeah, absolutely none. Saad Naseem has been around in the circle for a long, long time. Plays in Model Town for Model Town Club, student of Nawab Mansoor. Very good club there in Model Town. He's been the captain of Lahore region for a long time. Played for Pakistan in T20 cricket. And that is his quality. He can take single any time, all day long. Plays it with soft hands. And this is a very, very good inning. Probably the best I have seen from him. It's Alias from the left arm spinner. Petted up for the last batter. He is Ahmed Bashir with him, the fast bowler, not included in the side in this game. Do you think he's keen to bat, or is he praying that his batting doesn't come? Well, bowlers do love batting, but not for a long time. Probably last few deliveries, yes, he won't mind having an exposure out there. He's a young lad, so I won't mind him facing a bit of exposure there. But Wahab Riaz has decided that he's going to go big. Misfield by Rehan Afridi, the wicketkeeper. Given away another run. It's a good change of pace by Imran Khan Senior. Senior and junior, both Imran Khans, have the ability to do change of pace. And that helps when you're bowling in the death overs, the business end of the innings, to have that variety, to have the ability, to have the confidence of bowling the slower ball. That does help. Controls the flow of runs, makes the batsman think. And you can then bowl a dot ball and create that pressure. And maybe next ball you can get a wicket. This time he's played it to the sweeper.
Yeah, you made a very valid point, Lina. It's so important to have all those variations in your armory if you're a fast bowler these days, because T20 cricket has changed a lot, has changed cricket a lot. All those new variations coming in. Let's have a look. The field is set for Wahab Riaz, that mid-wicket area, that cow corner. There are three fielders. There's a fielder at long on, there's a fielder at deep mid-wicket, a deep square leg, very towards mid-wicket. So probably they have worked him well. Wahab Riaz likes to go big on towards that area. So Khalid Usman doing all the homework against Wahab Riaz. Good to see. And that's exactly where he wanted to go, but could not quite get the elevation. Rian Afridi takes an easy catch and ends the inning of the captain, Wahab Riaz. So another wicket going down for Central Punjab. Score is 276. Here's the wicket. Wahab Riaz trying to throw this ball outside the stadium. Couldn't get the shot going, couldn't get the elevation. Nothing going for that shot, and he's caught. Catch taken comfortably by the keeper. Made 12 runs of 8 balls, 276 for 9. Khalid Usman has been spot on with his captaincy. The field position and the bowling changes, although I personally thought that Arshad Iqbal should have been included, but still they have managed it well. Had he been there in the side, things might have been different. They might not have gotten to 276 runs. But still, I think they will be a happy side. Wahab Riaz won the toss, deciding to bat first. 276. Both teams should be relatively happy. Wouldn't be easy to chase, Ali, because chasing never easy. Oh, wonderful batting. Saad Naseem on his absolute best, through extra cover for 4. Khalid Usman had no chance to stop that. A boundary to end the over. 280 for 9, Central Punjab. That's a shot. Beautifully played, made room, improvised, and got that boundary. Well done. Expertly done. The footwork, Lina, spot on. He gave himself room, just moved towards leg side because he knew that the bowler is going to bowl outside the off stump. And the type of form he is in, he's not going to miss out on that. So he's got 6 deliveries, the young man. Ali Asfan, left arm spinner, 4th match, just 5 runs to his name. But at the moment, all he has to do is give the strike back to Saad Naseem. All the butterflies in his stomach. Let's see if he can take that single. It's not easy at this level. As they say, it's not easy. Because we all know that Imran Khan Jr. is such an experienced campaigner. He's got so much variety. But he should be looking to get one. That's all. That's as simple as that for him. Young man probably looking to hit it out of the ground. But you're absolutely correct. I mean, just have to take a single and give it to the more experienced man, the more set man. Oh, hurry, hurry, hurry. Makes it easy in the end. So he's done his part. I think that's good cricket by Ali Asman. He had to give the strike back to Saad Naseem, which he does. And Saad Naseem has 4 deliveries to finish on a high. He himself is on 45. That was well done. As important as Tausif Ahmed's single or Junaid Khan's single. Even also, there is, as Rizwan said, the not from Noman Ali in the second test match is as important as 100. So this single is as important as those singles too. Slower one again, but this time Saad knew that it is going to come his way. One more run. Good score this, 281 for 9. Very difficult to chase. Now they look happier.
I can bet you'll never see any expression on Abdul Razak's face. Nope, never. Regardless the situation, you will never know if he's happy or he's sad or he's excited. Nope. Tell me the name of the tennis player who was like that back in the 80s. 80s. I'll get back to that as Ali Aswan comes back for a second. 284. I don't know about 80s, but I can tell about 90s. Pete Sampras, maybe in 90s I'm talking about. He was similar. I'm talking about the 80s. No idea. Bogue. Yeah, probably. That's how Wahab Riaz lost his wicket. Wanted to go big towards mid-wicket. Lost his wicket. Oh, full toss miss. There was an opportunity for young Asfan. Probably late on the shot. .284 for 9. Excellent score, in my opinion, because this is a score which is going to challenge the KP team. Anything over 275 would challenge them. Chasing in a big match, never easy. Spot on. So this is the last delivery of this inning. What can Asfan do? Can they sneak in with the boundary? Somehow. Oh, he's tried his best. In the gap, he should look to get two. Saad Naseem is too quick. He will definitely come back for two to end their inning at 286 for the loss of 9 wickets. I think this is a job well done by Central Punjab batters after losing a few wickets in the middle and in the opening too. So they've done a wonderful job ending the score at 286. Slow start by the openers and then a few wickets in the middle. Absolutely wonderful work. Won't be easy. It'll take some doing by the KP batsmen. They're also missing few of their main batsmen. Rizwan is not here and Iftikhar is not here. So wouldn't be that easy. Fakhr is not here. Absolutely correct. Saad Naseem has played a wonderful inning. Probably the best I have seen him play at this level. And he will definitely be celebrated in the dressing room of his inning. As we'll look at the batting card of Central Punjab. Ahmed Shahzad looked solid for 35. 63 runs, wonderfully made runs for Hussain Talat. Same goes for Qasim Akram, scored 67 runs, an excellent inning. And in the end, Saad Naseem 46 alongside Zafar Gohar 29 to end up the score at 286 for 9. Here are the bowling figures. 2 wickets for Imran Senior, 3 for Imran Junior. Both of them did well. And then Sajid Khan pitching in with 3 wickets for 62 runs. जी हमारे साथ यंग उभरते हुए ऑलराउंडर कासिम अकरम मौजूद हैं। कासिम, क्या आप हमें सुन सकते हैं? कासिम अकरम 67 रन की शानदार इनिंग खेली। हमारे साथ मौजूद हैं कासिम अकरम। कासिम, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद, आप बहुत शानदार खेले एक ऐसे टाइम पे जब टीम को बहुत ज़रूरत थी ऐसी इनिंग की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी खैर मुबारक। वहाँ पे ये था कि मेरी और उनकी बात हो रही थी सैनी भाई की कि पार्टनरशिप लगानी है। 2-3 विकेटें ऊपर से गिरी हुई थी तो हम यही था कि 3-4 करते रहेंगे ओवर में और लंबा लेके जाएंगे, पार्टनरशिप लगाएंगे अपनी। और इसी तरह वो भी अच्छा खेले और मेरी भी इनिंग बन गई। या अगर हम पिच की थोड़ा बात करें कासिम, कैसा खेल रही है पिच बैटिंग के लिए? पिच अच्छा खेल रही है। एज अ फास्ट बॉलर तो बड़े अच्छे आ रहे थे बॉल उनके बैट पे, बट जो स्पिनर थे स्पिनर अच्छे बॉल कर रहे थे वहाँ पे ना। जी हाँ, और अगर आपकी शॉट की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम पे क्या वो शॉट से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई आपकी? आपको लगता है कि बड़े रन्स कर सकते थे आप? जी, उस टाइम पे मुझे वो शॉट नहीं मारनी चाहिए थी बिकॉज़ वो वहाँ पे मुझे सिंगल करना चाहिए था, 40 ओवर तक लेके जाना चाहिए था क्योंकि जितना अच्छा बल्ले पे आ रहा था बॉल तो थोड़ा सा स्टे करता तो
और बड़ी इनिंग लग सकती थी मेरी। कासिम 286 रन किए हैं सेंट्रल पंजाब ने, आपको लगता है कि आप इसे डिफेंड करने में कामयाब होंगे? जी इंशाल्लाह एफ़र्ट करेंगे और टीम एफ़र्ट से टीमें जीतती हैं। इंशाल्लाह अपनी कोशिश ज़रूर करेंगे, अपनी बॉलिंग में भी वर्क करेंगे, फील्डिंग में भी एफ़र्ट करेंगे, इंशाल्लाह ये मैच जीतेंगे। राइट कासिम, थैंक यू वेरी मच। आपका बॉलिंग में भी बहुत अहम रोल होने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग इनिंग। थैंक यू। Let's have a look at the highlights of Central Punjab's inning. That's how Ahmed Shahzad started off brilliantly with that drive. Rizwan Hussain got lucky that edge didn't carry, but lost his wicket straight after that. Probably nothing shot straight to the man. At that moment, KP bowlers were really on top, but Ahmed Shahzad looked in supreme form. He was very good. Faizan Riaz timed the ball beautifully for a couple of boundaries. Until that happened, he hit it straight to Sajid Khan, who made no mistake. It was a good inning, but the inning of this inning has been Hussain Talat. He's been wonderful with that shot making alongside Ahmed Shahzad. And Ahmed Shahzad was spot on with his footwork. And he was unlucky that he played it straight again to Sajid Khan, who made no mistake at mid-wicket area. Hussain Talat has been magnificent. Wonderful footwork. Umar Akmal started off nicely. A lot was expected until the usual happened. He played it straight to the fielder. He lost that important wicket. And it was this partnership, Qasim Akram and Hussain Talat, that definitely made them come back into this game. This wonderful shot over extra cover. Hussain Talat with his footwork has been immaculate. Alongside Qasim Akram, this area, third area, has been very productive for them. Playing it, and has been helped with some poor fielding at point by KP. A wonderful 50 for Qasim Akram and Hussain Talat. I think that is the main reason that Central Punjab has posted a king size total of 286. In the end, it was all about getting runs. This was a poor shot by Hussain Talat, losing the wicket to Sajid Khan, who bowled really well in those middle overs, taking 3 wickets. And one of Fahim Ashraf and Qasim Akram just giving it away quite cheaply to Sajid Khan. Saad Naseem in the end was wonderful with his footwork, with his shot selection, everything, even luck was favouring them. Zafar Ghosh supported him very nicely. They had to go after runs. They have lost a few wickets, but you cannot blame them because runs were needed. Saad Naseem was brilliant with his placement. Wahab Riaz wanted to go big. He had to go big. Lost his wicket in pursuit of that. And this is what the target is for Khyber Pakhtunkhwa. They need to get to 287 runs to qualify for the final of Pakistan Cup. We're going to take a break here. We'll see in about 30 minutes time.
मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर खुशामदीद। खैबर पख्तूनख्वा बनाम सेंट्रल पंजाब, ये पहला सेमीफाइनल है पाकिस्तान कप 2022 का और 286 रन आज सेंट्रल पंजाब ने बनाए। 9 खिलाड़ी आउट हुए। वहाब रियाज ने टॉस जीता था कप्तान ने और उनने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। खासी बैटिंग से भरी हुई टीम है सेंट्रल पंजाब। अहमद शहजाद 35 रन बना सके। रिजवान हुसैन और मोहम्मद फैजान जल्दी आउट हो गए थे। उमर अकमल भी 5 रन बना सके, लेकिन बड़ी उम्दा इनिंग्स के लिए हुसैन तलत ने उनकी कासिम अकरम के साथ जो पार्टनरशिप थी उसने सेंट्रल पंजाब की टीम को खेल में रखा और आखिर में साद नसीम ने जिम्मेदारी के साथ 46 रन बनाकर अपनी टीम को बेहतर हालत में ला खड़ा किया। और ये हुसैन तलत जिनने अच्छे स्ट्रेट ड्राइव किए, स्पिनर के खिलाफ हमेशा अच्छा फुटवर्क दिखाते हैं, गैप ढूंढते हुए नजर आए, इनको कट भी किया और रिवर्स स्वीप ये हमेशा से ही उनका खासा रहा है। स्पिनर को बहुत अच्छा खेले ये दरमियानी ओवर्स में। दोनों खिलाड़ी रनिंग भी अच्छी थी, स्ट्राइक रोटेशन देखने में आई, एक अच्छी बैटिंग पिच पर। और कासिम अकरम बिलाशुबा वो पहले हाफ की इनिंग्स थी जो काबिल दीद थी। 10 चौके लगाए कासिम अकरम ने, 67 रन बनाए। फुल शॉट के साथ इनिंग्स का आगाज किया। एक्स्ट्रा कवर ड्राइव किया था, उसके बाद अच्छे कट शॉट खेलते हुए नजर आए। स्पिनर को ड्राइव भी किया। बहुत ही अच्छा फुटवर्क, नीट फुटवर्क देखने में आया और हाथों और आंखों का भी कमाल इम्तिजाज। उनकी बैटिंग की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। 3 विकेटें हासिल की साजिद खान ने। उनका पहला स्पेल महंगा रहा था। 3 ही खिलाड़ी मोहम्मद इमरान जूनियर ने आउट किए। उनकी शमूलियत ये एहसन इकदाम था हेड कोच अब्दुर्रहमान का और इमरान सीनियर ने 2 विकेटें हासिल की। अच्छा स्पेल किया समीम गुल ने, लेकिन सिर्फ पहला। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त आ चुके हैं एक बार फिर शाह फैसल। दिलचस्प मुकाबला होने की तवक्को है क्योंकि हालात बैटिंग के लिए बड़े आइडियल हैं। मुल्तान में अच्छी पिच है और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि सेंट्रल पंजाब की जो कुव्वत है वो उनकी बॉलिंग में पिनहा नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तारिक सईद। जी हाँ, बहुत ही अच्छा मुकाबला होने की तवक्को है। रन्स ऑन द बोर्ड, नॉकआउट गेम है और सेंट्रल पंजाब ने अच्छा रिकवर किया। 73 रन पर 4 खिलाड़ी, 78 रन पर 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद एक बहुत ही अच्छा स्कोर उन्होंने पोस्ट किया है। और अब उनकी उम्मीद होगी, जैसे वहाब रियाज ने टॉस पे कहा था, उनकी उम्मीद है कि ये विकेट आहिस्ता आहिस्ता होती जाएगी और रिवर्स स्विंग का भी एक फैक्टर यहाँ पर हो सकता है अगर गेम डीप जाए। और वहाब से ज़्यादा बेहतर एक्सपोनेंट कोई हो नहीं सकता रिवर्स स्विंग का। तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। दूसरी जानिब केपी की बैटिंग लाइनअप, हमें पता है कि बाय नेचर ये एक एग्रेसिव टीम है और अच्छा मुकाबला करते हैं, किसी भी लम्हे हार नहीं मानते। एक शानदार सेमीफाइनल होने की तवक्को है। मोहसिन और अशफाक इनिंग्स ओपन करेंगे। ये मोहम्मद मोहसिन खान हैं, इब्तदाई अयाम हैं इनके लिस्ट करियर के। दूसरा ही मैच है। आमिर अजमत एक और ओपनिंग बैट्समैन थे खैबर पख्तूनख्वा के। तवक्को थी कि उनको मौका दिया जाता, लेकिन ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं थे। साहिबजादा फरहान वो टेनिस एल्बो इंजरी का शिकार हैं। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। पिछले बरस डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे। तो इस तरह रेगुलर ओपनर्स नहीं हैं ये दोनों, मोहसिन और अशफाक। अशफाक कभी कभार कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस में ओपनिंग किया करते हैं। अंपायर कैसर वहीद के एंड से ये पहला ओवर फेंका जाएगा। सुबह जब कोच अब्दुर्रहमान से बात हुई तो मोहसिन के बारे में काफ़ी वो एक्साइटेड थे। काफ़ी अच्छा टैलेंट है, ज़रूर नज़र रखनी होगी उन पर। एक स्लिप के साथ वहाब रियाज फेंट किया और बड़ी तेजी के साथ ये सिंगल पिंच किया। कासिम अकरम यहां ओवर थ्रो कर बैठे और 5 रन मिल जाएंगे मजमूई तौर पर, लेकिन खतरों से खेलना पड़ता है। देखिए विकेट मिल जाती है अगर गेंद लग जाती विकेटों पर। एक ही स्टंप दिख रही थी कासिम अकरम को, उन्होंने निशाना लिया और ये यकीनन आउट हो जाते क्योंकि साइड से पहली नजर में ही नजर आ गया था कि बैट्समैन शॉर्ट हैं। अच्छा पिकअप, अच्छा अटैक किया गेंद को। एक ही स्टंप थी उनके निशाने पर, चूक गए, लेकिन ये खतरा
मोल लेने में कोई हर्ज नहीं था। यहाँ फील्डर मौजूद थे दूसरी जानिब मिड विकेट पर, लेकिन बैकअप करने का मौका नहीं था। और जो ऑन साइड में डीप फील्डर थे मोहम्मद फैजान, वो खासी हद तक फाइन थे बाउंड्री लाइन पर, फाइन लेग पे, इसलिए वो भी नहीं पहुंच सके। लेकिन कोई मुजायका नहीं, नौजवान हैं कासिम अकरम, तो वो क्योंकि गन फील्डर हैं तो आपको हौसला अफजाई करनी चाहिए। अगर वो डायरेक्ट थ्रो के लिए आउट करने के लिए जाते हैं, कई बार आपको लेने के देने पड़ते हैं इसमें, लेकिन इसके लिए तैयार रहना चाहिए कप्तान को। जी बिल्कुल, और वहाब रियाज को आते ही अपना शूज़ चेंज करना पड़ रहा है। राउंड द विकेट आ रहे हैं बाएं हाथ से खेलने वाले बैट्समैन के लिए। और मोहसिन की जैसे मैं बात कर रहा था कि मोहसिन के बारे में कोच अब्दुर्रहमान काफ़ी एक्साइटेड हैं। पाकिस्तान अंडर 19 की नुमाइंदगी कर चुके हैं और देखना होगा कि वहाब रियाज जैसे जहांदीदा बॉलर का मुकाबला वो कैसे करते हैं। और दूसरी जानिब देखना है कि इस मैदान पर वहाब रियाज और सेंट्रल पंजाब के जो बॉलर्स हैं वो नई गेंद कैसे कर पाते हैं, क्योंकि नई गेंद का जो टैलेंट है वो ज़्यादा नहीं है सेंट्रल पंजाब के पास, खैबर पख्तूनख्वा के बरक्स। और ये शहर नया नहीं है, ये पाकिस्तान के कदीम तरीन शहरों में से एक है। मुल्तान सदियों पुराना, तारीख़ का गहवारा, औलिया कराम की सरजमीन, यही शहर है जहाँ पर सिकंदर आज़म ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी जंग लड़ी थी। यहीं पर ज़ख्मी होने के बाद वो चल बसे। गर्द, गदा, गर्मा, गोरिस्तान, ये चार खूबियाँ हैं, इससे बनता है मुल्तान। इसके बाद कुछ कहने को रह नहीं गया तारिक सईद। चलें, वहाब रियाज तैयार हो गए हैं। अब्दुर्रहमान जो हेड कोच हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो नए खिलाड़ियों को आजमाते रहते हैं और खुश होंगे अपनी इस नौजवान टीम की पहले हाफ की कारकर्दगी से, क्योंकि एक मौके पर जब पार्टनरशिप चल रही थी कासिम अकरम और हुसैन तलत के दरमियान तो उस वक्त मुश्किल हो रही थी। लेकिन ये ऐसी टीम है, ये कम बैक करती है, इसको वापस आकर लड़ना या पलट कर वार करना पसंद है। जी बिल्कुल, और जो मिडिल ओवर्स में इनकी विकेट्स लेने की अहलियत है, वाइट बॉल का इशारा कर दिया अंपायर कैसर ने, तो वही विकेट्स लेने की वजह से उन्होंने इस इनिंग्स को रिस्ट्रिक्ट किया 286 तक, कि जिस वक्त पार्टनरशिप हो रही थी कासिम अकरम और हुसैन तलत की, यकीनन 315 का स्कोर काफ़ी मुमकिन नज़र आ रहा था। एक और वाइड गेंद, वहाब रियाज को यहाँ पर मोहतात रहना होगा। परेशानी हो रही है उनको दाएं और बाएं हाथ के बैटर का सामना करते हुए। उमर अकमल, यह खासे अरसे के बाद हम विकेट कीपिंग ग्लव्स के साथ इनको देख रहे हैं। 2015 के वर्ल्ड कप में बाज़ मौके पर विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए थे। लेकिन गौरतलब बात यह है कि उमर अकमल जो हैं उन दिनों इसी तनाज़े के सबब, क्योंकि उस ज़माने में जो टीम इंतज़ामिया थी उसकी ख्वाहिश थी कि विकेट कीपिंग करें, उससे बेहतर बैलेंस आएगा पाकिस्तान की वनडे टीम में, लेकिन ये तैयार नहीं थे अपनी विकेट कीपिंग को जारी रखने के लिए। और वो भी एक सबब था इनके पाकिस्तान टीम से बाहर होने का। लेकिन यहाँ आप क्योंकि वापस आना चाहते हैं क्रिकेट में, तो यहाँ खुद विकेट कीपिंग कर रहे हैं। एक और वाइड वहाब रियाज की। और तारिक, दिलचस्पी से खाली बात नहीं है कि जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के सीज़न का आखिरी मैच हो रहा था, बलोचिस्तान की तरफ से खेल रहे थे और वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान ज़ख्मी हो गए थे, तो वहाँ पर उमर अकमल ने विकेट कीपिंग नहीं की और बलोचिस्तान को उस मैच में 4 विकेट कीपर्स से कीपिंग करवानी पड़ी बहालत मजबूरी। विकेट कीपिंग जो है वो अकमल ब्रदर्स के घर की बांधी है, लेकिन खासी बाहर निकल गई आउट स्विंग होकर। कामरान अकमल
कि बाद से दरअसल सेंटर पंजाब को मुस्तकिल विकेट कीपर अभी मिला नहीं है। अली शान विकेट कीपिंग करते रहे, इसके अलावा मोहम्मद जुनैद जो हैं कायदे आज़म ट्रॉफी में विकेट कीपिंग कर रहे थे। मोहम्मद अखलाक एक और आर्जी विकेट कीपर हैं इस टीम के साथ, इन आउट होते रहते हैं। काफी स्ट्रगल कर रहे हैं वहाब रियाज। ये तीसरी वाइड है इस ओवर की, चौथी वाइड है रादर, और ऑफ साइड पे भी वाइड की, ऑन साइड पे भी वाइड की। अपने रिदम में लग नहीं रहे इस वक्त, काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। आमतौर पर ये जब ओवर द विकेट आते हैं बॉलिंग करने के लिए वहाब रियाज बाएं हाथ के बैट्समैन के सामने इफेक्टिव होते हैं, गेंद को बाहर निकालते हैं। लेकिन नई गेंद पर बॉलिंग करने की ज़्यादा आदत भी नहीं है और इस वक्त खासी तेज़ हवा भी चल रही है। अक्रॉस वहाब रियाज अगेंस्ट द विंड आ रहे हैं। जी काफी तेज हवा है और ये भी डिस्टर्बिंग हो सकती है, जिससे वहाब रियाज की तरह एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स होते हैं, उनका रिदम जो है वो चूकने में ज़्यादा मसला नहीं चाहिए होता उन्हें, और हवा की रफ्तार यकीनन उसमें उसका एक वजह बन सकती है। ये दो अच्छी गेंदें की इन्होंने। थोड़ा सा अपने स्पेल में जब रिदम में आ जाएं तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होगा वहाब रियाज का, ख़ास तौर पे मोहसिन के ख़िलाफ़, क्योंकि वो काफ़ी नए बैट्समैन हैं। इशफाक तो काफ़ी कॉम्पैक्ट हैं, ज़्यादातर उन्होंने अपना नाम फोडे क्रिकेट में बनाया है। खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ियों ने बहुत नाम कमाया है इस सीज़न में। जो 5 टूर्नामेंट्स हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे तमाम, ये इन्होंने जीते हैं। ये भी बहुत सारे रन्स बन जाएंगे वाइड का, और साथ साथ 2 रन्स दौड़कर बनाए। अभी भी ये ओवर जारी है, एक गेंद अभी भी बाकी है। अंडर 13 का टाइटल जीता केपी ने, अंडर 16 का, अंडर 19 का, नेशनल T20 का, कायदे आज़म ट्रॉफी, और अब पाकिस्तान का अपने ये टाइटल का दिफा कर रहे हैं। बिल्कुल क्लीन स्वीप किया उन्होंने डोमेस्टिक सीजन को इस साल, और अगर आप इसमें शामिल करें पिछले साल का पाकिस्तान कप और पिछले सीजन का नेशनल T20। एक और वाइड बॉल, वहाब रियाज बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे अपने रनअप के, जब बिल्कुल टॉप पर जब पहुंचे तो वहां पे भी कुछ स्ट्रेचिंग कर रहे थे। वहाब रियाज जहां तक मुझे याद पड़ता है नेशनल T20 कप के दौरान 2020 में यहीं पर जब ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए खेल रहे थे तो इनको इसी एंड से इनको मसला दरपेश हुआ था बॉलिंग करते हुए। बहुत लंबा ओवर ये इनका निकल गया था और उस मैच में भी इनको दुश्वारियां हुई थी। इसी एंड से ही बॉलिंग कर रहे थे वहाब रियाज। और अब राइट हैंडर को वाइड कर दी, विकेट कीपर इसे रोकने से कासिर रहे और 5 रन मजमूई तौर पर मिल गए। 20 रन बन चुके हैं इस ओवर में, अभी तक सिर्फ 5 गेंदें हुई हैं और 6 रन सिर्फ बल्ले से आए हैं। 14 एक्स्ट्रा के रन पहली 5 गेंदों में। और उमर अकमल जो हैं उनका भी ग्लव्स के साथ ये एक ट्रायल है। वहाब रियाज जैसी बॉलिंग कर रहे हैं, दाएं बाएं जाने दूर दूर गेंदें निकल रही हैं। ये गेंद सही जगह पर गिरी, इससे एक ही रन हासिल कर सके अशफाक अहमद। पहले ओवर में 21 रन किसी किस्म का खतरा मोल लिए बगैर केपी को मिल गए। खतरा भी मोल नहीं लिया और ज्यादा कोशिश भी नहीं की। अगर आप देखें 4 ओवर थ्रो के रन्स भी थे और 13 एक्स्ट्रा के रन, 15 एक्स्ट्रा के रन आए। काफी डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट है ये सेंट्रल पंजाब के लिए। अच्छे मोमेंटम के साथ वो गए थे ब्रेक में, अच्छी रिकवरी थी, 8वीं विकेट की पार्टनरशिप जो थी वो भी अच्छी थी साद नसीम और जफर गौर की। लेकिन ये स्टार्ट जो है ये यकीनन काफी डिफ्लेटिंग होगा।
अब फ़हीम अशरफ के ज़िम्मे ये काम लगाया गया है कि वो चीज़ों को वापस ऑर्डर में लेकर आए। काफ़ी तजर्बेकार खिलाड़ी हैं अब फ़हीम अशरफ, 2 फाइफर हैं उनके नाम इस लेवल की क्रिकेट में, और सेंट्रल पंजाब चाहेगी कि आज वो काफ़ी विकेटें हासिल करें। यहाँ नीचे रही गेंद, उमर अकमल ने इस मरतबा उम्दगी से गेंद को कलेक्ट किया, लेकिन ये चीज़ देखनी होगी केपी के बैट्समैनों को, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि जुन जुन दिन गुजरेगा ये विकेट स्लो और लो होता जाएगा। इसीलिए टॉस जीतकर पहले बैटिंग ली थी वहाब रियाज ने, लेकिन उसका फ़ायदा तभी उठाया जाएगा जब आप अच्छी डिसिप्लिन बॉलिंग करेंगे, और पहले ओवर में कतई तौर पे कप्तान ये काम नहीं कर सके। 21 रन पहले ओवर में बने, इसके बावजूद स्लिप है। अहमद शहजाद वहां पर खड़े हुए हैं, 4 फील्डर ऑफ साइड में, 1 रन रोकने के लिए, कट करने के लिए गए अशफाक। तो एक अच्छा हेड स्टार्ट मिल गया है पहले ओवर में अशफाक को, ऐसे में वो अपना खेल खेल सकते हैं। ये दरअसल स्पेशलिस्ट हैं रेड बॉल क्रिकेट के अशफाक। जब ये 6 टीमों का नया निज़ाम मुतारिफ कराया गया था 2019 में, तो पहले सीज़न में उन्होंने 4 सेंचुरी बनाई थी, 4 फर्स्ट क्लास सेंचुरियाँ अशफाक अहमद ने। 1 डाउन खेलते हुए बड़े माने हुए क्रिकेटर्स में इनका शुमार किया जाता है, लेकिन 50 ओवर के क्रिकेट में हमने इनके खास कारनामे सुने नहीं हैं कभी। जी बिल्कुल, और अगर पहली 2 गेंदें इस ओवर की देखी जाएं, पहली 3 गेंदें तारिक, 2 गेंदें नीचे रहीं और तीसरी गेंद पे काफ़ी बाउंस हुआ, अशफाक को अपने पंजों पर उठकर खेलना पड़ा उसको। ये चीज़ सेंट्रल पंजाब के लिए अच्छी निशानी है। विकेट में मौजूद जो अनइवन बाउंस है, ये जो ड्राइनेस है, स्ट्रोक प्ले में मुश्किल पैदा कर सकती है। फिर गेंद को टाइम करने में कामयाब नहीं हुए अशफाक। नासिर हुसैन ऑफिशिएट कर रहे हैं मीडिया सेंटर एंड से। ये अच्छी लेंथ पर गेंद गिरी थी और रन पर लगी। ये प्रोफेसर हैं नासिर हुसैन, और यही बता रहे थे कि इनका गांव है यहाँ इसी सदर्न पंजाब में, मुल्तान से कुछ फासले पर। वे पढ़ाते हैं लाहौर में टाउनशिप कॉलेज में। रन स्कोरिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, अशफाक चूक गए, गेंद को प्लेस नहीं कर सके। लेग स्टंप हाफ वॉली थी, सीधा कासिम अकरम के पास खेल दिया। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, क्या अच्छा फिनिश कर सकेंगे? 5 गेंदों में कोई रन नहीं दिया फ़हीम अशरफ ने। इस गेंद को इत्मीनान के साथ नजर में रखते हुए विकेट कीपर के लिए छोड़ा। अच्छा ओवर फ़हीम अशरफ का मेडन रहा। 2 ओवर्स के बाद 21। पाकिस्तान डोमेस्टिक सीजन 2021-22, और अगर आप विनर्स कॉलम में देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के अलावा आपको कोई और नाम नज़र नहीं आएगा। और अब पाकिस्तान कप में भी लास्ट 4 में और ग्रुप स्टेज इन्होंने टॉप पे फिनिश किया, तो एक मरतबा फिर वो फेवरेट हैं इस टूर्नामेंट में प्रोग्रेस करने के लिए। लेकिन आज उनको अच्छा खेलना होगा। 286 रन के जवाब में रिफतुल्लाह मोहम्मद, अहमद सैद, अब्दुर्रहमान का ये कोचिंग ट्रियो जो है काफ़ी अच्छे नताइज दिए हैं उन्होंने इस सीज़न। हुसैन तलत अब अराउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे लेफ्ट हैंडर मोहसिन को। अच्छा खेल दिया, स्क्वायर लेग की जानिब, और दूसरे रन के लिए भी पलट आए। थ्रो आई, उमर अकमल ने स्टंप्स के आके आकर इस गेंद को लिया था, लेकिन लगता है कि पहुंच गए थे, क्योंकि पहला रन बड़ी तेजी के साथ
बनाकर मुड़े थे वापस मोहसिन। जो ऐसा लगा कि इशफाक वेट कर रहे थे कि जैसे ही मोहसिन पहुंचे हैं और अगर वो आना चाहते हैं तो इशफाक भी तैयार थे। देखना होगा कि क्या उन्होंने बल्ला ड्रैग किया है अपना। अगर अच्छी टेक्निक के साथ बल्ला ड्रैग किया हो तो उनके पहुंचने के इम्कान ज़्यादा हैं, लेकिन उमर अकमल का कलेक्शन भी देखना होगा। लगा ये कि उन्होंने विकेटों के सामने से बॉल पकड़कर विकेटों की तरफ लेकर आए, जो यकीनन कुछ सेकंड्स बचाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। ये देखिए विकेटों के आगे से बॉल उठाया और बल्ला क्या ग्राउंड कर दिया था। देखना होगा, अच्छी टेक्निक नहीं थी ये नौजवान मोहसिन की जानिब से। थ्रो बड़ी आला थी अली असफंद की, उनको अपने दाएं जानिब खासी हद तक दौड़ कर जाना पड़ा, जो कि उनके गेंद उल्टी तरफ जा रही थी। और यहाँ पर सभी मुंतजिर हैं, टीवी अंपायर यहाँ पर साकिब खान हैं, उनके फैसले के। खासा दिलचस्प हो सकता है, बड़ी बेताबी के साथ सभी फील्डर्स देख रहे हैं। ज़िमाम एनक्लोजर्स सामने जो लाइट्स लगी हुई हैं, यहाँ ये मुश्किल में लग रहे हैं, ये बैट्समैन मुश्किल में हैं और लगता है कि काम तमाम हो जाएगा। ये जो पहला फ्रेम हमने देखा था, ये टेक्निक देखें, बिल्कुल उन्होंने बल्ले को ड्रैग आखिरी लम्हे पे किया। थोड़ा पहले से ड्रैग करते तो पहुंच जाते और उमर अकमल को दाद देनी होगी। विकेटों के आगे से बॉल उठाया उन्होंने और कुछ सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड बचाने में कामयाब हुए। शायद फैसला कुन साबित हो जाए ये। लेकिन शायद हमें ठहरना पड़ेगा और देखना होगा कि बेल्स जो हैं, ये बेल्स किस वक्त ग्रुप से निकल रही हैं। क्योंकि गेंद अगर यहाँ हाथों में होती है तो यहाँ तक बेल्स जो हैं वो गिरती हुई नजर नहीं आ रही। जिस वक्त बेल्स आपको गिरती हुई या उखड़ती हुई नजर में आती हैं, तब तक जो बल्ला है वो आगे आ चुका है। क्या अंपायर को कोई एक और जाविये से देखने का मौका मिल सकेगा? काफी मुश्किल फैसला है थर्ड अंपायर के लिए। और ये देखिए बल्ला हवा में जिस तरह वो लेकर आए, किसी भी नौजवान के लिए ये अच्छी टेक्निक नहीं है। एक फ्रेम का मसला है कि बेल्स कब डिसलॉज हुई और कब बल्ला ड्रैग अंदर कर गया। हाँ, जो बेल्स हैं दरअसल वो वाजे नहीं है सूरत हाल, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बेल्स का रंग है वो उमर अकमल की जो आस्तीन के कपड़ों का रंग है वो उनसे मिलता है, वो कैमोफ्लेज हो रहा है। और अंपायर का इशारा आउट। काफी मुश्किल फैसला था, लेकिन अंपायर ने फील्डिंग साइड के हक में इसको करार दिया और सेंट्रल पंजाब को पहली कामयाबी मिली। नौजवान मोहसिन इस बड़े मौके का फायदा नहीं उठा सके, लेकिन क्रेडिट जाएगा, अच्छी फील्डिंग यहाँ सेंट्रल पंजाब की। थ्रो डीप से अच्छी थी और उमर अकमल की कलेक्शन भी बहुत ही शानदार थी। जहाँ ये लेग साइड में खेले थे, आहिस्ता खेले थे इस ख्याल से कि फील्डर तक पहुंचने में गेंद को वक्त लगेगा, लेकिन ये उल्टी तरफ दौड़ कर गए अली असमान। बड़ी लाजवाब थ्रो और उसके बाद ये कलेक्शन उमर अकमल की। आला क्रिकेट सेंट्रल पंजाब की जानिब से। मोहसिन चलते बने 2 पर 22 पर 1। रनिंग भी चेक हो जाएगी कि ये 2 रन थे, इजी 2 रन थे, क्या मसला है? हाँ हाँ, वो जो पहला साइड ऑन दिखाया था उससे पता लग रहा था कि बेल्स घूम रही थी उसकी शायद। लेजी है ही नहीं इसमें, भाई को क्या था। कामरान गुलाम है नए आने वाले बैट्समैन। और सेंट्रल पंजाब ने पिछली 7 गेंदों में कमबैक किया। पहले फहीम अशरफ ने मेडन ओवर करवाया और उसके बाद पहली गेंद पे विकेट मिल गई रन आउट की सूरत में। कामरान गुलाम ही स्ट्राइक लेंगे। चौवन मैचेस खेले हुए हैं कामरान गुलाम ने, 1 सेंचुरी बना रखी है उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में। काफी अच्छा सीजन रहा इनका। PSL का भी चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स के लिए।
या HBL PSL में ये अच्छा आगाज़ कर लेते थे और पावर प्ले में ये अच्छा खेलते हुए नज़र आए पेसर्स के खिलाफ। लेकिन जब पावर प्ले ख़त्म हो जाता था, फील्ड खुल जाती थी, उसके बाद फिर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में अक्सर आउट हो जाते थे 30-35 रन्स बनाने के बाद। लेकिन अच्छी इनिंग्स खेली और ये बड़ी अच्छी फील्डिंग थी। ये अली असफन जो नए खिलाड़ी हैं, फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, गेंद उनके उल्टी तरफ जा रही थी और वहाँ पहुँच के बाएं हाथ से थ्रो करना ये काबिल तारीफ़ है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार कोशिश थी और अब अपनी बॉलिंग के आने से पहले ही उन्होंने टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया है और जब उनकी बॉलिंग आएगी तो ज़रूर उन पर भी नज़र रखनी होगी। बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे सेंट्रल पंजाब की जो कोचिंग टीम है, काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं उन्हें अली असफन से और जब वो बॉलिंग करेंगे तो ज़रूर हम देखेंगे कि उनकी मुशाबहत एक पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल स्पिनर से काफ़ी ज़्यादा है। यकीनन एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट दिखे हैं ट्रेनिंग में। यहाँ दाद देनी होगी वहाब रियाज को भी, अपने आप को बॉलिंग लाइनअप से फौरन हटा लिया उन्होंने पहले ओवर के बाद और हुसैन तलत ने अच्छा कंट्रोल दिया है अभी तक अपने कप्तान को। और हुसैन तलत के बारे में भी इस टूर्नामेंट में उनकी बॉलिंग के बारे में काफ़ी जो है वो मुतासिर कुन कारकर्दगी रही है। 12 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया है। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम बहुत बगौर जायजा ले रहे हैं प्रोसीडिंग्स का। यहाँ अगले बरस 50 ओवर की क्रिकेट का वर्ल्ड कप है जिसकी मेज़बानी भारत को करना है और पाकिस्तान की जो वनडे टीम है वो अभी हतमी नहीं है कि कौन से जो खिलाड़ी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो उस वर्ल्ड कप के लिए शमूलियत के हकदार होंगे, क्योंकि 50 ओवर की जो क्रिकेट है ये पाकिस्तान ने ज़्यादा नहीं खेली ये पिछले कुछ बरसों से। तो इससे पाकिस्तान को दरअसल अपनी टीम बनाना है अभी उस आलमी कप के लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये होम सीरीज़ लाहौर में होने वाली है, वो बड़ा अच्छा मौका है इब्तदाई तौर पर सेलेक्टर्स के पास देखने के लिए। आसिफ अफरीदी को वहाँ आजमाया जा रहा है, मुमकिन है कि मोहम्मद हारिस को भी मौका मिल जाए जो कि दूसरे विकेट कीपर हैं इस वक्त मोहम्मद रिजवान के साथ। अगले ओवर में बात करेंगे इसी बाबत। 22 पर 1। पिछली 12 गेंदों में अच्छा कमबैक किया है सेंट्रल पंजाब ने, सिर्फ 1 रन बना और 1 विकेट हासिल की। अशफाक और कामरान गुलाम अच्छी फील्डिंग की, गेंद की रफ्तार को आहिस्ता किया, डाइव लगाकर अहमद शहजाद ने। हाथ उनका पहला ही जख्मी है, इस वक्त कोहनी की तकलीफ के आलम में है अहमद शहजाद। अहमद शहजाद नॉर्मली इस पॉइंट पे फील्डिंग करते हैं लेकिन अब स्क्वायर लेग पर आए हुए हैं। पावर प्ले काफ़ी इंपॉर्टेंट है खैबर पख्तूनख्वा के लिए, जैसा कि देखने में आ रहा है कि बॉल काफ़ी नीचे रहना शुरू हो गया है और फ़हीम अशरफ विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, ज़्यादा रूम नहीं दे रहे। अशफाक लगता है कि काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें 5 रन ज़रूर ओवर थ्रो पे मिले लेकिन उसके बाद काफ़ी डॉट्स बॉल्स खेली हैं उन्होंने। सेंट्रल पंजाब ने अपने पहले 20 ओवर्स में 56% डॉट बॉल्स खेली थी, लेकिन बाद में इनिंग्स को
रवानी जो है वो कासिम अकरम की आमद के बाद मिली। ये एक ऐसा आप कह सकते हैं कि पहलू है, ये कमज़ोर कड़ी है पाकिस्तान क्रिकेट की। ये वनडे मैचेस में, वनडे इंटरनेशनल मैचेस में भी डॉट बॉल्स जो खेलने की रेशो है खासी ज़्यादा है। जी बिल्कुल टिपिकल एग्जांपल, ये पिछली बॉल आपने देखी कि हार्ड हैंड्स के साथ सीधा फील्डर पे खेले। फील्डर काफ़ी पीछे हैं, 4 में से 3 फील्डर जो रिंग पे हैं वो बिल्कुल जो 30 गज का दायरा है उसके एंड से आ रहे हैं। ड्रॉप एंड रन अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जैसा तारिक ने कहा कि देखा नहीं जा सकती। ये देखिए यहाँ भी बॉल पीछे था, काफ़ी वक्त मिला उन्हें, लेकिन फोर्स कर दिया उन्होंने, और जिसका मतलब ये है कि गेंद फील्डर के पास तेजी से चली गई और 1 रन का मौका नहीं मिला। और शानदार लाजवाब स्ट्रेट ड्राइव, 4 रन्स। शॉट का पोज दिया, गेंद की लेंथ तक पहुंचे और उसके बाद पूरा फेस दिखाया। बैलेंस बहुत ही जबरदस्त था, ज्यादा स्ट्राइड नहीं ली, लेकिन आप देखें कि जिस तरह गेंद को लाइन अप किया, हेड बिल्कुल गेंद की सीध में था और पंची स्ट्रोक, ज्यादा फ्लरिश भी नहीं थी, लेकिन टाइमिंग इतनी शानदार कि किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। ज्यादा फॉलो थ्रू के बगैर इस तरह का पंची ड्राइव, ये कामरान गुलाम की खासियत है। अब स्क्वायर लेग पर पीछे भेज दिया गया अहमद को, फाइन लेग को आगे बुलाया गया है। ज्यादा ये 5-4 की फील्ड से बॉलिंग करते हैं क्योंकि राइट हैंडर को इन स्विंग करते हैं फहीम अशरफ। नई गेंद पर 27 पर 1। सत्ताईस पर 1। कामरान गुलाम ने 4 रन बनाए हैं 10 गेंदों पर। जो पिछले ओवर में बात हो रही थी स्ट्राइक रोटेशन के बारे में, 10 बॉलों में 1 ही स्कोरिंग शॉट है कामरान गुलाम का। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ये भी है कि जब बॉल खेलते हैं बैट्समैन, उसके बाद भी उनकी बिल्कुल भी अपनी इंटेंट शो नहीं करते कि वो 1 रन देख रहे हैं या 1 रन ढूंढ रहे हैं दायरे के अंदर। यही चीज़ सेंट्रल पंजाब के इनिंग्स के शुरू में भी दिखाई दी। T20 के मैचेस में आप ज़्यादातर जो बैट्समैन है वो परवाह नहीं करते हैं बाउंड्री की फिक्र में, वो 4 का ही सोचते हैं। उसमें अगर 1 रन बन जाए, जो कि आमतौर पर बन जाता है जब आप 4-3-2-1 की सोच से बैटिंग करते हैं हर गेंद पर। लेकिन वनडे क्रिकेट जो है ये बिल्कुल ही ये मुख्तलिफ गेंद का खेल है और ये फील्ड में रद्दबदल यहाँ किया जा रहा है। अहमद शहजाद दोबारा स्लिप में आ रहे हैं। साद नसीम जो हैं वो लेग साइड से अब एक्स्ट्रा कवर पर चले गए। लेकिन वनडे क्रिकेट में आप 1-2 रन्स की या विकेटों के दरमियान रनिंग की जो इफादियत है उससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते इस दौर में भी। तारिक, जो एक और भी फर्क पड़ सकता है कि जब आप बॉल खेलते हैं और फील्डर को दिखाते हैं कि आप 1 रन ढूंढ रहे हैं, तो वो ज़्यादा करीब आने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि आपका एंगल वो कट डाउन करें। ऐसे में आपका जो फोर्सफुल स्ट्रोक है वो आप गैप में खेलें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अगर नतीजा ना भी आए, लेकिन अगर आप इंटेंट अपने मुखालिफ टीम को शो करें तो वो ज़ाहिर है उसका भी फ़र्क पड़ता है। गली में आ गए हैं अहमद शहजाद। गेंद को निकाल दिया और बर वक्त पहुंच गए मोहम्मद फैजान। एक और पेसर हैं, हम उनको देखेंगे बॉलिंग करते हुए। मोहम्मद फैजान को आज बैटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं कर सके। सेंट्रल पंजाब की टीम जो है उसके पास पेस नहीं है। वहाब रियाज के अलावा बाकी जो बॉलर्स हैं इस वक्त फहीम अशरफ और हुसैन तलत, ये मीडियम पेसर हैं। आमतौर पर ये 125-130 की रफ्तार के इर्द गिर्द बॉलिंग करते हैं। यही बात हम कर सकते हैं मोहम्मद फैजान के बारे में भी। और बैकफुट पर फिर खेला गैप में, दूसरे रन के लिए मुड़े हैं अशफाक।
लेकिन इस पिच पर शायद उतनी रफ्तार की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़े। अगर आप लेंथ को हिट करते हैं तो आप इतनी पेस के साथ भी बैट्समैन को परेशान कर सकते हैं मुल्तान में। बिल्कुल, बल्कि जब कासिम अकरम से बात हो रही थी अली यूनुस की इनिंग्स ब्रेक पर, तो उन्होंने कहा जितना बॉल फास्ट बॉलर का बॉल ज़्यादा अच्छा बल्ले पे हरा रहा था। जितना आप मीडियम पेस बॉल करेंगे, विकेट के अंदर बॉल करेंगे, विकेट बॉल छोड़ नहीं रहा उस तरह, तो अगर आप हार्ड लेंथ हिट करेंगे विकेट टू विकेट तो आपको रन बनाने में मुश्किल होगी बैट्समैन को। लेकिन हैरत होती है कि पंजाब जो कि आमतौर पर पंजाब और फास्ट बॉलिंग, ये दो नाम जो हैं या ये दो जो लफ्ज़ हैं वो एक ही सांस में आमतौर पर ये नाम लिए जाते हैं, लेकिन इन दिनों सेंट्रल पंजाब से आपको फास्ट बॉलर्स उभर कर सामने आते हुए नज़र नहीं आते। वहाब रियाज के बाद हमने किसी फास्ट बॉलर को लाहौर से आते हुए नहीं देखा। लाहौर हालांकि गढ़ रहा है फास्ट बॉलिंग का, दुनिया भर में उसकी शोहरत है इस शहर की। ये आखिरी थे लाहौर से फास्ट बॉलर वहाब रियाज। तारिक, आप काफ़ी फॉलो करते हैं लाहौर की क्लब क्रिकेट को भी, इस पे बात करेंगे अगले स्पेल में। इस वक्त 5 ओवर्स का इख्तिताम हो गया, 31 पर 1। सेंटर प्लीज, सेंटर थोड़ा पीछे करो। यस, Mohsin Khan, the only man out, he was run out courtesy to a very good throw by Ali Asfand and a wonderful work by Umar Akmal. He scored 2 runs. Ashfaq Ahmad is on 11. Kamran Ghulam, with the help of a brilliant boundary, he scored 4 runs at the moment as Fahim Ashraf continues his spell. Very good, excellent shot through the gap. Stand and deliver. That is Kamran Ghulam for you. Wonderful boundary to start off this over. What a young player, a beautiful batsman, bats well, can hit all over the place, all kind of shots. Last over he played a beautiful straight drive and now he's backed it up with this cover drive. Every time you watch Kamran Ghulam, he's an improved package. Look at this shot. Really nicely played. Oh. Held his pose, beautiful. Again, stand and deliver. That is a carbon copy of the last shot that he played. Wonderful batting by Kamran Ghulam. Repeated his shot and in what style. Just held his pose and with good reason, you know. He just right feet movement and just a step towards the right direction. Head in a completely great position. Can look at it all day. Makes you say, wonderful batting by Kamran Ghulam. The record holder, 1,245 runs he scored in the last season. That is 4-day cricket. The maximum runs a batter has scored in a season. He's been the part of Lahore Qalandar's winning team too. Sensible, very sensible. He'll have to hurry. Makes it easy in the end, Ishfaq. Ali, Kamran Ghulam would have to bat long because their batting looks very thin. Sameen is listed at number 6, I think. So he will have to bat long, play a long innings, get 100 if KP wants to win. And he seems in that kind of form where he can get 100, just has to control his emotions, bat sensibly. Absolutely, Kamran Ghulam got his first 100 in one-day cricket. Sorry, this level of cricket, List A cricket this season. Scored 100. Adil Amin got a 90 odd in the last game. A lot will depend on these two batters if KP has to win this match. There's Rehan Afridi, he's got potential, he can bat too. Khalid Usman, very handy batter. Sajid Khan has got 100 at first class level. But they've got a long tail too.
I'm really looking forward to see Sarwar Afridi play. I've heard a lot of good things about him, but haven't seen him play. If they are able to chase this total with so many of their main batsmen missing, Fakhar and Rizwan and Iftikhar, I think they would have done a really good job because, you know, half their side is missing as far as batsmen are concerned. So to chase in excess of 280 would be just marvelous. Well, let me tell you, Lena, this KB side, they don't depend on individuals. I get what your point is, that big names, big players, but they're such a great unit. It's nicely collected for one. So there's such a good unit. They play for each other. They're such a good team. They've got match winners till the end. Anyone can turn the match on his own. We'll continue talking about it. 6 overs gone, 41 for 1 is KP. It's a very exciting start, this one. That's highest successful chase is at this ground, Multan Cricket Stadium. Karachi Dolphins chasing 349 runs against Multan Tigers back in 2012 and 13. SNGPL also scoring 284. Multan Tigers 266 and Multan 256 for the loss of 3 wickets against ZTBL in 2018 and 19 season. Scores can be chased down. That is the ground because it's a free-flown ground. It's an excellent pitch. All you have to do is just stay there, apply yourself, play every delivery on merit, and runs will come. Of course, scores can be chased down, but it depends on what kind of batsman you have in the team. So the batsmen they're missing, they certainly feel, you know, that they're not in the team. Those are very capable batsmen who can have the ability to hit long and big, can use the long handle. Straight to the man. But the other thing you said is very important, how this team gels, how they play for each other. Maybe they speak the same language. I mean, there's so many factors. They've done so well in the past. So they're a good team and can't be written off. Absolutely. And if you look at their side from last 3 or 4 or maybe more than that years, these are the similar names that we see. We hardly see changes in this side. They've been playing together for a long time. They play for each other. We can see that those backup players also. It's nicely guided towards third area. One more run for Ishfaq, who's got a role to play here. He's got to be there with Kamran Ghulam. Rafatullah Mohammad, Ahmed Said, Khalid Usman, they're all a very good bunch of people. Very nice, human, humble people. And it reflects in their team too. They're not so worried, not showing too much emotion. They believe in their team. And the team has done well. There is a reason why they believe in their team. The team has done so well in the past few years. They won everything under the sun. So that is the reason they should be believing. Here's a graphic. Absolutely. I mean, look at that. National T20, National Under-19 Championship, National Under-19 Cup, Qaid-e-Azam Trophy, National Under-13 Cup, National Under-16 Cup. You name it, they won it. That shows their strength that goes deep down till that Under-13 level. That's excellent to see. And maybe the other regions should emulate them. See what they're doing right. Why are they winning everything? What is the reason? And maybe just follow them and talk to them. In the end, Pakistan will gain. Absolutely, 100%. And this year's Qaid-e-Azam Trophy, I was very surprised that they changed captains regularly. Even after 2 games, there was a new captain and they'll still be winning it. And even a winning captain was dropped from the side. They still won it. That is the quality of this side. Wonderful to see. Has to be the food and the language. Four different captains in this year's Qaid-e-Azam Trophy, and they still won it. How amazing is that? Just fantastic spirit. They just play for each other. They have a good plan. They don't panic.
They believe in themselves. They believe in the talent of each other. And they've well backed up by so many trophies. 42 for 1. And the cool and calm customer, Abdul Rahman, the coach of KP. Doesn't matter. Whoever coaches them, it's just in their culture. The unity is in their culture. That is what I believe makes them a great team. That never give up approach. Wonderful. End of 7 overs. It's 42 for 1, KP. Here's the bowling card. Wahab Riaz gave 21 runs in 1 over. Fahim Ashraf has been good, 15 and 3 overs. And Hussain Talab has been very good, just 6 runs in 3 overs. And the wicket that fell was a run out. I'm sure Wahab Riaz will definitely make a comeback after that bizarre over where he gave away 21 runs courtesy to as many, I don't even remember how many extras were there. There were a couple of, there was 14 wides already. And because there were couple of boundaries through on those deliveries. Fahim Ashraf will have to do a lot of work. They'll have to get a lot of wickets if Central Punjab has to win this game. Because 287 is not that big of a target that will say they're in the game. Because KP will be in the hunt of this chase till Khalid Usman, I guess. Yes, there will be. But if a wicket falls here, another wicket, then they'll be in trouble because they haven't got a very big batting lineup. So this partnership is very, very important. They've got to take this score forward because like we've been discussing, their key players are missing. They're on national duty. So this then becomes a big key pair. Kamran Ghulam scored 1,245 runs in the last 4-day tournament. And that's how the field is set for Kamran Ghulam. There's a fielder at mid-wicket, a fine leg, and deep square leg in place. I'm sure playing for Lahore Qalandars in the winning cause would have given a lot of confidence to Kamran Ghulam. And hats off to the management and the coaching of Akif Javed to give him that continuous opportunity to play at number 3. And that is how you make players. Just give them continuous opportunities at the number is comfortable at. And now we can see that the confidence level increasing with every delivery he's facing. Excellent for Pakistan cricket. Yeah, you'll have to give it to Akif Javed and Lahore Qalandars. He got a few good scores, but he got quite a few scores in the mid-30s. But still, they persisted with him, gave him the opportunity, kept giving him the chances. So obviously, that's going to argue well for him and Pakistan in the future. Being persistent with a player, even if at times he was mediocre, even then. But they know his talent, they know he's supremely talented, and that is just excellent work by Lahore Qalandars. Very solid in defense too. Looks like a proper batter who can bowl. Very handy cricketer, Kamran Ghulam. He's been around. I've been looking at him at Ramzan cricket in Karachi. But then there was a sudden change in him when he played the last season for KP. He scored 1,245 runs then and then playing for PSL. Very good cricketer in making, I would say. And he started off as a bowler. Under 19, he was a bowler and who could bat a bit. And then like many great players, he became a batsman. Smith, one of the prime examples, 44 for 1.
Santhalat will continue. Let's have a look at the options that are available to bowl for Central Punjab. Ali Asf on the left-arm spinner. Mohammad Faizan can bowl his medium pacer. Zafar Gohar also. Qasim Akram. Plenty of them. Oh, that's poor bowling. That's definitely poor bowling. Onto the leg stump. Easy pickings for somebody like Kamran Ghulam. He's not going to miss out on these deliveries. 4 more runs added to the total. That's a good shot. Upping the ante and getting 4 runs on the leg side. Good pivot. And now he looks like he's in great form. Enjoying his cricket, smiling. We're talking about how the KP team is so good. I think one of the reasons is that they like smiling. They're simple people. So that helps. Spot on. Kamran Ghulam got 100 against Northern in Islamabad this season. So he's in runs as he guides the next one towards square leg. 1 more run. This is good cricket. When you keep on rotating the strike, that doesn't let you get the pressure on you. These are familiar faces. Abdul Razak, Mohammad Wasim, the chief selector. They played under 19 together. They've been excellent service of Pakistan cricket. Mohammad Wasim always so dapper. Great pair of sunglasses. Nice sneakers. Wow. Updated. Always. Good bouncer. Very good bouncer. And a few words too. 1 for the over. 1 for the over. Saying tell us that out of frustration because they're searching for a wicket. But we know these KP side, these batters, they're so solid that these few words aren't going to say much to them. Ashfaq, we all know that he's used to playing long innings. He's a 4-day specialist. He's been the captain of KP2. Well, look at that, way over the head of Ashfaq. That's a good shot, but straight to the fielder. Sounded really nice. Must be a good bat in his hand. Because the sound, it came till here, till commentary box. A few heated moments between... Have a look at that. Nicely done. Nice high elbow. Right to the pitch of the ball. Footwork excellent. Temperament excellent. Trying to steal a single but couldn't. A rocket like Qasim Akram. This is what youngsters bring to your side, that energy. And he's definitely future of Pakistan cricket, an off spinner. And a great batter. We saw that in his inning today. It's shown the class. Fact that he is the under-19 captain, he was, it just, you know, it makes, it just argues well for him, maybe at some point leading Pakistan. Oh, nicely done, through the gap. Excellent use of the wrist by Ishfaq this time. He should look to get 3. No. No, says Kamran Ghulam. There was definitely 3 there, but denies it. Nice wrist work. Have a look at that. Through the gap. Placement was perfect. The only problem was running between the wickets. There was easy 3 there because Fahim Ashraf took a lot of time to throw it back. They could have easily run 3.
The idea was right on that shot, but hit the bottom of his bat, so that's why I didn't go to the boundary. Otherwise, a good shot. 51 for 1, 9 overs gone. Four overs for Fahim Ashraf. He's given away 17 runs. He's taken no wicket. My fellow commentator Lena is such a huge fan of his hairstyle. Well, actually, it's our producer who wants to know where he got the haircut from, not so much me. Yeah, we can fix an appointment with Fahim Ashraf. We can definitely talk to him that Rehan wants a haircut like him. Have a look at that. Probably a blow dry would do. A bit of gel. Can't blame him. He's been in the ground for a long time. Sarcasm sometimes is the key to everything. Oh wow, have a look at that for timing. Excellent batting continues for Kamran Galan. Rocketed onto the back foot and placed it perfectly through that point area for 4. Taking some good shots, the batsman. This one, nicely cut away. Waited for it. And then just played it in the gap. No trouble. Shows the form of this man. He's nearly middling everything that has been offered to him. And if you give him width, he's gonna put it away. 55 for 1 KP in pursuit of 287 runs. Again middled. That is some confidence. He's just got to be wary of not throwing away his wicket, Kamran Ghulam. He's played some fantastic shots, the cover drives, the straight drive was fantastic, so good to watch, fabulous to watch. So this is the point where he often throws away his wicket. So he's got to be very wary of the period when he's 25 to say 40. And once that period crosses, he can then go on his merry way. Nicely driven again. Could not quite find the gap. Absolutely. And at this age, at this level that Kamran Ghulam is, he's represented Lahore Qalandars, he's a record holder. He should be able to dominate at this level, at regional level. The talent is there, the skill is there, the temperament needs to be there. There are fielders everywhere. How do you find a gap? Maybe between mid-wicket and mid-on, very difficult. But he's found a way, but an excellent piece of fielding by Hussain Talat. This lad can do no wrong today. He's been excellent with the bat, wonderful with the ball, and now doing his bit in the field. Very handy cricketer, Hussain Talat. Just look at this piece of fielding. Good dive, commitment, and the right result. Commitment, as you said, that is the right word. He's definitely hurt. He's got a bruise there. But he's a strong man, he'll be back soon. Very good cricket. Excellent cricket by both batters. Played it with soft hands. He knew it was on the left of Qasim Akram. Ran well and took single. 10 overs gone. 57 for 1 is Khyber Pakhtunkhwa.
Kaisar Waheed signaling that is the end of the first power play as 10 overs have passed. This is not a bad power play. 57 runs, just 1 wicket down, 5.7. Not a bad way to start, especially when they're chasing a big score. Their main batsmen are missing, so this is not. I think it's pretty good work by the KP team. I think that first over from Wahab Riaz where he gave away 22 runs, that will definitely haunt them. Because with that sort of a start, that really puts the morale of the team down. You're leading fast bowler, you're captain of the side, and you give away 14 runs of wides. That doesn't give the right sort of message to the remaining team. The partnership is now 35. I can't forget Wahab Riaz's face when they lost the national T20 to the same team. He was not a happy chappy, not a happy camper, like I said. So if they lose today, I mean, my heart goes for him. Yeah, also when Peshawar Zalmi got out of PSL, he almost had tears in his eyes. So he's an emotional person. He's full of love for the game. Faizan starts off with a wide. This is not good cricket by Central Punjab bowlers. Very passionate cricketer, Wahab Riaz, like you're saying. Whether he's playing regional cricket, Pakistan, playing for Pakistan, he just gives his 100% and wants to win, which is the right way to go. Umar Akmal, that's the message. Another lovely hairstyle. This one is tucked away towards leg side. Will run away for 4. It does. Wonderful batting, but this time it's Ishfaq Ahmed playing it with the wrist for another boundary. You should have a word with Umar and ask him where he got such a nice haircut from, and maybe you can have one next time we're sitting next to each other. Grow your hair out, wear a cap. Thank you very much, Lena. I'm good. $62 for 1, KP. I believe this is the defining partnership because these two are the most talented, skillful, and experienced batters of KP. Ashfaq, we all know that, very experienced, and Kamran Ghulam is full of confidence, full of shots, full of runs. And the target 287, if they continues, it won't be long that they chase it down. It's a long way to go. They've still got to bat the next 15, 20 overs, take the score further, keep the run rate going and not let pressure build on them. Because what happens in a chase is that, you know, the required run rates goes up and you're in trouble. They're managing it well, the run rate. They're almost 5.8 maybe at the moment. So there is not much trouble there at the moment. But if they keep the wickets in hand, probably then it will be easy. At the moment they're going at 5.72. And with the likes of Adil Amin, Rehan Afridi, Khalid Usman. No is the call, and rightly so. You don't run on with Qasim Akram's throw. That will be end of Faizan's first over and end of 11 overs. It's 62 for 1, KP.
साथ इधर आजा तू पॉइंट पे कामरान लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट ओके सर थोड़ा सा बाहर है और सेंटर प्लीज और मेरा भाई ये फ़ज़ाई मंजर है इस मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के इलाके का। दही इलाका है ये मुल्तान के मुज़ाफ़ात में, और वहीं पर इस वक्त गेंद और बल्ले के दरमियान एक कशमकश का आलम है। 5.6 रन बनाने की औसत, अच्छी पार्टनरशिप आगे बढ़ती जा रही है जिसमें 40 रन कामरान और अशफाक बना चुके हैं। जफर गौहर से अब उनका आमना सामना होगा इनफॉर्म लेफ्ट आर्म स्पिनर से। वैसे पुल कर दिया मिड विकेट की जानिब और गेंद बाउंड्री के पार उतरी। ये छक्का बिला कोशिश खेला बैकफुट से कामरान ने। शानदार शॉट खेली कामरान गुलाम ने, थोड़ा सा पीछे हटे हुए मिड विकेट के ऊपर से उठा के खेले। निहायत ही शानदार छक्का। खुशामदीद कहा बॉलर को कामरान गुलाम ने। लूजनर या वार्म अप गेंद की इन दिनों क्रिकेट में गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बैट्समैन से आप कभी भी रहम की उम्मीद ना कीजिए। ये देखिए आप अपना हाथ खोल रहे हैं, यही काम पहले कर सकते थे जफर। एक और शॉट गेंद, लेकिन फील्डर हैं ऑफ साइड में रिजवान हुसैन। देखिए ज़्यादा खुश नहीं है, गेंद को अगर लेट खेलते तो इस पे भी बाउंड्री मिल सकती थी। जी कामरान गुलाम पहुंचे 31 पर, बड़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। आते ही इन्होंने बड़े सीधे बल्ले के साथ शानदार स्ट्रोक खेले। आज के दिन में बहुत ज़्यादा टर्न देखने में नहीं आई मुल्तान की इस पिच से। गो के गेंद ठीक तरीके से पेसर की बल्ले पर नहीं आ रही थी, कई गेंदें नीचे रही हैं। लेकिन स्पिनर अगर अच्छी लाइन और लेंथ को अपनाते हैं तो मुल्तान में विकेटें मिलती हैं स्पिनर्स को रिवायती तौर पर। अभी कुछ देर पहले जब मैं ये पीछे मीडिया सेंटर में खिलाड़ियों के नामों की वो तख्ती देख रहा था, तो यहाँ जो 5 मरतबा टेस्ट मैच में बॉलर्स ने 5 या उससे ज़्यादा विकेटें ली हैं, उनमें से 4 बार ये कारनामा स्पिनर्स ने अंजाम दिया है। चारों पाकिस्तानी स्पिनर्स थे, मां सिवाय जेरूम टेलर के जो वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर हैं। किसी फास्ट बॉलर ने यहाँ पर 5 विकेटें हासिल नहीं की टेस्ट मैच में मुल्तान में। बिल्कुल सही कहा तारिक आपने, जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं स्पिनर के अगेंस्ट अशफाक और कामरान गुलाम, बड़े मंझे हुए तरीके से विकेट्स इनके हाथ में हैं। एतमाद कामरान गुलाम की शॉट्स में नज़र आ रहा है आपको, और शायद इसीलिए स्पिनर्स को लाने का फैसला किया है वहाब रियाज ने। यहाँ 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं इस सेंट्रल पंजाब की टीम में। अली असफंद भी आएंगे गेंद करने के लिए। इस बार बेहतर इख्तिताम करने में कामयाब हुए जफर गौहर इस महंगे ओवर का, जिसमें 9 रन बने 71 पर 1। ये टर्न हुई लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एक ओवर किया फैजान ने जिसमें 5 रन बने। वही इंजिमामुल हक एंड से अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। लॉन्ग ऑन है, स्क्वायर लेग भी डीप है। लॉन्ग ऑन की तरफ ही खेलकर 1 रन हासिल कर लिया गया। 50 रन की पार्टनरशिप कामरान और अशफाक के दरमियान।
पहली विकेट 22 पर गिर गई थी। उसके बाद से दोनों खिलाड़ी बहुत एतमाद से खेलते हुए नजर आए हैं। अच्छी बैटिंग केपी की जानिब से। बड़ी जिम्मेदाराना बल्लेबाजी कर रहे हैं अशफाक और कामरान गुलाम, अपनी टीम को आगे लेके बढ़ रहे हैं। अच्छा शॉट, सीधे बल्ले के साथ फील्डर तेजी से गेंद के ऊपर आ रहे हैं, दूसरा रन लेने के लिए दौड़ना चाहते हैं। अच्छी फील्डिंग फहीम अशरफ की जानिब से, उतना ही अच्छा थ्रो। 1 रन के इजाफे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 73। फहीम अशरफ के लिए ये दिलचस्प फॉर्मेट है। ये जो 50 ओवर की क्रिकेट है, ये टेस्ट मैच की पाकिस्तानी टीम में अक्सर खेलते हुए नजर आते हैं। T20 मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में मुस्तकिल खेलते हैं। HBL PSL में कई कामयाबियां यूनाइटेड को इन्हें दिलाई हैं। लेकिन जब बात 50 ओवर की क्रिकेट में आती है तो फहीम अशरफ का किरदार हमने कम देखा है, या डोमेस्टिक क्रिकेट में भी और पाकिस्तान के लिए भी। अच्छा बॉल सॉफ्ट हैंड के साथ खेले, फील्डर तेजी से बॉल के ऊपर है। जी बिल्कुल तारिक, सही कह रहे हैं आप। फहीम अशरफ की कारकर्दगी जो 50 ओवर की क्रिकेट में है, कोचिंग पैनल खैबर पख्तूनख्वा का रिफतुल्लाह महमद और उनका स्टाफ, पुरएतमाद बैटिंग और बॉलिंग में भी कोई ख़ास पेनिट्रेशन नहीं है। ख़ास तौर पर ये पेस बॉलिंग है सेंट्रल पंजाब की, खासी फ्रेंडली लगती है। वहाब रियाज एक ही ओवर बमुश्किल कर सके थे, उनको हटना पड़ा। फिर फहीम अशरफ के साथ पहले इसी एंड से, पवेलियन एंड से हुसैन तलत आए, वो भी ख़ास तासुर कायम नहीं कर सके। और अब फैज़ान जो हैं आसानी के साथ इनकी गेंदों को भी दाएं बाएं सरकार का रन ले रहे हैं ये दोनों खिलाड़ी। बॉलिंग जो है वो ताकत नहीं है सेंट्रल पंजाब की। 75 पर 1। आदिल अमीन जो कि अच्छी फॉर्म में हैं, लेकिन क्या रेहान अफरीदी जो हैं ये इस ग्राफिक्स के मुताबिक उनका नंबर 4 है, क्या वो आएंगे आदिल अमीन से पहले? मुझे शक है इस बात पे। हालांकि वो अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है रेहान अफरीदी, लेकिन मुझे लगता है कि आदिल अमीन ही उनसे पहले बैटिंग को आएंगे। अगर तारिक साहब आपको लगता है तो यकीनी तौर पर आपका तजर्बा बेहतर कह रहा होगा। क्या लगता है कौन सा बॉलर तारिक जो विकेट इस वक्त ब्रेक थ्रू लेने में कामयाब रहेगा? अभी एक ही विकेट आई है, वो भी रन आउट। क्या बात है। देखिए केपी के जो स्पिनर्स है वो शुरू में खासा स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे और खासे महंगे साबित हुए। खालिद उस्मान और उनके साथ साजिद खान भी, लेकिन जो गेंद नर्म हुई थी बाद में उनके खिलाफ खेलना इतना आसान नहीं रह गया था। इसलिए इस स्पेल में ये मौका जानकर खेलना चाहिए इन दोनों खिलाड़ियों को भी। ये कोशिश भी करेंगे, रन्स बनाते हुए आपको नज़र आएंगे। अच्छा खेलते हैं बैकफुट पर कामरान गुलाम। अशफाक ये आपकी स्क्रीन पर जो हैं, ये अब इनकी यही जिम्मेदारी है या इनका किरदार यही है कि पूरे 50 ओवर बैटिंग करें, बाकी खिलाड़ी इनके गिर्द खेलते हुए नजर आएं। और इशफाक अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। एक एंड उन्होंने बखूबी संभाला हुआ है और दूसरे एंड से कामरान गुलाम तेजी से रन्स बनाते हुए। स्वीप करना चाह रहे थे, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अंपायर के फैसले से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है जफर गौर, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो भी गेंद लेग साइड
पे बल्ले को मिस कर जाए अंपायर उससे वनडे क्रिकेट में वाइड करार देते हैं। एक क्लास से ज़्यादा दूर नहीं थी। अच्छा बॉल बल्ले का ऊपरली किनारा लेती हुई स्लिप होती तो काफी खतरनाक साबित हो सकती थी। शानदार फील्डिंग फ़हीम अशरफ की। इस बॉल के इख्तिताम के साथ ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। 14 ओवर्स के इख्तिताम पर 81 एक विकेट के नुकसान पर। मोहसिन बदकिस्मत रहे, 2 रन बनाकर रन आउट हुए। और ये बड़ी अच्छी थ्रो बाउंड्री लाइन से फेंकी थी अली असफंद ने। उमर अकमल ने उसे कलेक्ट किया और इस तरह ये इकलौती विकेट मिली। उसके बाद से अशफाक और कामरान गुलाम इनने बड़ी अच्छी पेशकदमी की है। अशफाक संभल कर खेल रहे हैं। 41 गेंदों में 25 रन उन्होंने बनाए हैं। सिर्फ एक चौका वो इन 41 गेंदों में लगा सकें। कामरान गुलाम का अंदाज ज़्यादा जारहाना है। अब तक उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया। ये इस पार्टनरशिप में आप झलकियाँ देख सकते हैं। अच्छा स्ट्रेट ड्राइव कामरान का विकेट की दोनों जानिब अच्छे ड्राइव्स करते हुए नजर आई। ऑन द ऑफ खेला था। ये देखिए बैकफुट पर हमेशा ही अच्छे पंच करते हुए नजर आते हैं। पेस का इस्तेमाल करते रहे। उनकी बैटिंग पार्टनर अशफाक थे और ये छक्का था। इसे जफर गौहर की गेंद पर कामरान गुलाम ने लगाया। अपनी फॉर्म को एक बार फिर कैश करा रहे हैं। अभी हाल ही में ये इस्लामाबाद में सेंचुरी बनाकर आए हैं नॉर्दर्न के खिलाफ, जो इनकी पहली सेंचुरी थी लिस्ट ए क्रिकेट में, तो इसलिए फॉर्म में है कामरान गुलाम। वहाँ पे आज सिर्फ 1 ओवर कर सके, वो भी खासा लंबा था। 21 रन उन्होंने दिए। वाइड बॉल पे कंट्रोल नहीं था। वहीं अशरफ विकेट हासिल नहीं कर सके नई गेंद के साथ। 1 ओवर मेडन ज़रूर उन्होंने किया था। और स्पिनर्स में जफर गौहर ने ही 2 ओवर्स किए हैं, वो भी खासे महंगे साबित हुए हैं। तो अब बॉलिंग में तब्दीली करने का वक्त आ गया है कि अली असफंद को हम बॉलिंग करते हुए देखेंगे, जिनके मुतालिक बहुत सुनते हुए आए हैं
कि जुल्फ़कार बाबर से ये बड़ा मुतासिर हैं और उन्हीं की तरह ये लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन करना पसंद करते हैं। 4 मैचों में 2 विकेटें ली हुई। फैसलाबाद से अली असफंद का ताल्लुक है। यंग, एनर्जेटिक और बड़ी शानदार फील्डिंग करके एक रन आउट हासिल किया आज उन्होंने। अब देखते हैं कि बॉलिंग में क्या जौहर दिखाते हैं अली असफंद। अपना पहला ओवर कराएंगे। वहाब रियाज ने लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर खड़ा किया है और दूसरे डीप स्क्वायर लेग पर यहाँ पर रिजवान हुसैन है। ये खासे लंबे कद के हैं और दिलचस्प उनका बॉलिंग एक्शन है। हाई आर्म बॉलिंग एक्शन। बैकफुट पर उठा के खेले, मिड विकेट के ऊपर से किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। शानदार 4 रन। इस 4 रन के इजाफे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 85। थोड़ा सा पीछे पड़ा, उसका भरपूर फायदा उठाया अशफाक ने। ये बहुत ज्यादा गेंद पीछे गिर गई थी और ऐसी गेंद करने के बाद जाहिर है बैट्समैन से रहमदिली की आप नहीं रख सकते तवक्को। अभी हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं वेस्ट इंडीज में। अली असफंद बॉलिंग क्रीज पर सेटल होने में यकीनी तौर पर कुछ वक्त इनको लगेगा क्योंकि बड़ा मैच है इनके करियर का, ये भी जो टेलीवाइज हो रहा है। या इनका जो बॉलिंग एक्शन है उसको देखकर आपको पहले ये लगता है कि शायद ये लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, हालांकि ये फिंगर स्पिनर हैं। और मुझे एक ऑस्ट्रेलिया के पीटर टेलर एक ऑफ स्पिनर हुआ करते थे, वो याद आ जाते हैं इनको देखकर, हालांकि ये बाएं हाथ से स्पिन करते हैं। और हल्की सी झलक इनमें जुल्फकार बाबर के एक्शन की भी नजर आ रही है, जैसे वो 2 दफा हाथ ऐसे पीछे करते हैं। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। 15 ओवर्स के इख्तिताम पर 1 विकेट के नुकसान पर बढ़ता हुआ स्कोर 87। यस, मोहम्मद सरवर ये नए खिलाड़ी हैं और ख़ासा मुतासिर किया है इन्होंने अपने कोचिज़ को और साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के मद्दा हैं उनको। पहले सीज़न में 24 क्रिकेटर्स को आजमाया है इस साल अभी तक इस पाकिस्तान कप में खैबर पख्तूनख्वा ने। रास्ते उन्होंने ये दरवाजे खुले रखे हैं नए खिलाड़ियों के लिए भी। बहुत क्रिकेट हो रही है उस इलाके में और मोहम्मद सरवर जो हैं ये सेकंड 11 में कारकर्दगी दिखाकर ये आए हैं इस मेन टीम में। और बड़ा मुश्किल होता है विनिंग कॉम्बिनेशन में अपना जगह बनाना, और ये एक गोल्डन चांस है यंगस्टर्स के लिए जो केपी के भरपूर दे रही है अपने आने वाले नौजवान प्लेयर्स को। और टॉप एज लेकिन क्लियर कर जाएंगे फाइन लगे फील्डर वहाब रियाज के ऊपर से 4 रन। स्वीप शॉट खेलने के लिए गए, ज्यादा जल्दी खेल गए अशफाक। पहले भी स्वीप शॉट इन्होंने अटेम्प्ट्स किए हैं लेकिन ज्यादा नेचुरल लगते नहीं है ये शॉट खेलते हुए। काफी लंबा खींचा बॉल को उन्होंने, इसीलिए बॉल बल्ले पे पूरी तरह से नहीं आ सका। लेकिन इस ऐसी क्रिकेट में 4 रन आना यकीनी तौर पर फायदेमंद साबित हो सकते हैं।
क्या बात है राणा जी। सॉफ्ट हैंड के साथ खेले, बॉल को आने दिया अपनी तरफ। जिक्र हो रहा था कि केपी ने 24 खिलाड़ियों को आजमाया है इस सीज़न में सबसे ज़्यादा, और नए खिलाड़ियों को यह मौके इसलिए भी मिल जाते हैं इस टीम में क्योंकि इनके जो बड़े खिलाड़ी हैं वो अक्सर और बेशतर पाकिस्तान टीम के साथ होते हैं। अभी जो होम सीज़न है उसमें 8 खिलाड़ी पाकिस्तान के टेस्ट और वनडे स्क्वाड का हिस्सा रहे। इससे जो खैबर पख्तूनख्वा की क्रिकेट की डेप्थ है उसको हम बखूबी समझ सकते हैं। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं आदिल अमीन, ये हमेशा ये इस टीम के लिए दस्तयाब रहते हैं, बड़े कारगर रहते हैं। और सीनियर खिलाड़ी जो इंटरनेशनल खेल के आते हैं उनके साथ खेल के यकीनी तौर पर इनको भी तजर्बा हासिल होता होगा और इनके एतमाद में इजाफा होता होगा, और जिसकी भरपूर परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही है। हमेशा केपीके की टीम टॉप पर। बैकफुट पर जाकर खेले इस बॉल को, 1 रन के इजाफे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 94 16 ओवर के इख्तिताम पर 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा जल्दी यार। अली असफंद अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। ले लो, क्या बात है कासमा। इस बार अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। खैबर पख्तूनख्वा की जो थोड़ा सा इनके जो बैटिंग करने का अंदाज है इनके खिलाड़ियों का, उस पर हम कुछ उसकी बात हो जाए। ये रन्स बहुत बनाते हैं, इफेक्टिव हैं। ये देखिए एक और अच्छा स्ट्रोक, इस मरतबा भी रन्स मिल गए 4। नया शानदार तरीके से इसे प्लेस करने में कामयाब हुए। खूबसूरत कवर ड्राइव किया कामरान गुलाम ने। जी तारिक, खैबर पख्तूनख्वा में जारहाना मिजाज बल्लेबाज ज्यादा देखने को मिले हैं और शानदार शॉट इसी दौरान नहायत ही खूबसूरत स्टाइलिश फ्रंट फुट पर आकर खेले, फील्डर काफी दूर। रन बनाने की औसत पहली बार 6 रन तक पहुंच गई है, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस वक्त मुकम्मल इख्तियार में हैं ये दोनों खिलाड़ी, खासतौर पर कामरान गुलाम। सेंट्रल पंजाब की टीम को जल्द वहाब रियाज को अपने मुतालिक सोचना होगा, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी इन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने जिस तरीके से सहल होकर खेल रहे हैं, लेकिन मुमकिन है कि वहाब रियाज 1-2 ओवर और इंतज़ार करें, क्योंकि वो उसी वक्त ही शायद अब एक्शन में नजर आएंगे जब गेंद रिवर्स स्विंग होने काबिल हो। लेकिन क्या वो मुतहम्मिल हो सकते हैं इस बात के कि वो मजीद इंतज़ार करें? जिस तरह ये पार्टनरशिप बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ती जा रही है, 78 रन की। बड़ी समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं कामरान गुलाम, चार्ज करते हैं, अशफाक उनको स्ट्राइक रोटेट करके देते हैं। 100 रन मुकम्मल हुए 17वें ओवर में। 16 ओवर्स और 4 गेंदों में खैबर पख्तूनख्वा के, सेंट्रल पंजाब की टीम ने तकरीबन 21 ओवर्स में अपने 100 रन मुकम्मल किए थे। ले लो, ठीक है। तो ये भी एक फ़र्क रहा है कि इन दोनों खिलाड़ियों ने स्ट्राइक रोटेशन अच्छी की है, विकेटों के दरमियान अच्छी दौड़ लगाई है, लेकिन सेंट्रल पंजाब के जो खिलाड़ी थे इब्तिदा में वो ज़्यादा बाउंड्रीज ढूंढ रहे थे। 17 के बाद 100 पर 1। राणा जी बाहर हो, थोड़ा ऊपर आ रहा ना।
स्पिनर्स ने 5 ओवर में अब तक 34 रन दिए हैं, कोई विकेट हासिल नहीं की। और दरअसल किसी भी बॉलर ने कोई विकेट हासिल नहीं की और गेंद खासी बाहर इस बार पड़ी। रिवर्स स्वीप करके 4 रन कोशिश की थी। फहीम अशरफ ने अच्छा फासला तय किया गेंद तक। तो ये जो बॉलर्स का जीना है और ज़्यादा दूभर हो जाता है अगर बैट्समैन इस दौर में लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने रिवर्स स्वीप खेलना शुरू कर दे, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आप टर्न भी नहीं कर सकते। इसीलिए काफी हैरानी से देख रहे थे जफर बैट्समैन की जानिब। अच्छा बॉल, अच्छी कॉल थी कामरान गुलाम की। जोरदार अपील, अंपायर गए हैं थर्ड मैन की जानिब। एक बार फिर कासिम अकरम थे, उन्होंने विकेट कीपर की तरफ थ्रो फेंकी। यही एक तरीका रह गया है शायद सेंट्रल पंजाब के लिए विकेट हासिल करने का। जिस बेजार कुन अंदाज में ये कार्रवाई जारी है उनके बॉलर्स की जानिब से और जिस तरह ये दोनों अच्छा खेल रहे हैं। देखिए अशफाक की कॉल थी, सामने इतना अच्छा रद्द अमल उनको मिला नहीं और अगर ये डायरेक्ट गेंद हिट कर जाती तो उसी सूरत में मौका था, वापस तो पलट आए और बड़ी क्विक आए हैं वापस। थर्ड अंपायर की जानिब से इशारा, सबज लाइट जली यानी खतरे से बाहर हैं खिलाड़ी। ये जब नया नया थर्ड अंपायर का तजुर्बा किया गया था बहुत पहले 1992 के वर्ल्ड कप के बाद, शायद जनूबी अफ्रीका में भारत की टीम दौरे पर थी और तो उस वक्त ये रिवायत चली थी। ये लाइट्स थी, अंपायर जो सफ़ेद लाइट के ज़रिए उस वक्त वो डिसीजन पेंडिंग को ज़ाहिर करती थी और सुर्ख लाइट के ज़रिए आउट दिया जाता था। सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी थे जिन्हें टीवी अंपायर ने आउट करार दिया था इंटरनेशनल क्रिकेट में। और इस तरह एक और हिस्ट्री में सचिन तेंदुलकर का नाम शामिल हुआ। यहाँ पर भी सचिन तेंदुलकर 94 रन पर खेल रहे थे, डबल सेंचुरी के करीब थे इसी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जब राहुल द्रविड़ ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। उस पर भी तनाज़ा हो गया था। तो राहुल द्रविड़ जो कायम मकाम कप्तान थे उनको बड़े सवालात का सामना करना पड़ा था ये बराबर वाले प्रेस बॉक्स में जब मैच के इख्तिताम पर, तारीखी टेस्ट मैच के इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। कॉट बिहाइंड की अपील की शायद वाइड से बचने के लिए और शायद इसी वजह से कि बहुत बड़े प्लेयर को जब इस तरह मैच डिक्लेयर किया जाए तो क्योंकि हमसाया मुल्क में उनको क्रिकेट का ले लो, क्या बात है जफरी। सीधे बल्ले के साथ खेले, सीधा जफर गौहर के हाथों में। किसी स्कोर का कोई इजाफा नहीं हो सका इस बॉल पर। अशफाक अहमद ये ज्यादा बड़े स्ट्राइकर नहीं है क्रिकेट बॉल के। स्पिनर को आज स्वीप शॉट खेलते हुए बार बार नजर आए हैं। यहाँ एक और बाउंड्री मिल जाएगी। खराब फील्डिंग, अहमद शहजाद के पास खासा वक्त था लेकिन ये डाइव करते हुए गेंद से आगे निकल गए। कोई बात नहीं अहमद, शाबाश। 4 रन और मिलेंगे अशफाक को। काफी लंबा स्वीप किया उन्होंने। अहमद शहजाद काफी दूर से दौड़ के आए, रोक सकते थे बॉल को और पहुंच गए थे बॉल तक। 4 रन का मजीद इजाफा इस 4 रन के इजाफे के साथ। तो मैं कह रहा था कि ज्यादा बड़े बड़े आपको शॉट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे अशफाक, लेकिन ये बड़े कारगर हैं और इनके तजुर्बे की भी ज़रूरत थी इस टीम को टॉप ऑर्डर में और अभी तक ये अच्छा फैसला रहा है इन टीम इंतज़ामिया का इनको खिलाने का। 106 पर 1।
Zafar Gohar leaving the field. That might help. They might bring some luck because Central Punjab is definitely looking for a wicket. 106 for 1 at the moment. As we see the captain Wahab Riaz coming back into the attack after a miserable first over where he gave away 21 runs. That probably set up the tone, Shah Faisal, for Central Punjab's bowling. That indeed was a very poor effort from the skipper. Interesting to see he's still coming back from the same end where he bowled that first over from. You would assume if he didn't get his rhythm, he would try the different end. Have to watch and see. Slightly older ball though. That's what he likes. See if he can get that ball to tail in or away from the right-hander. Nicely played. Nicely played towards third area. That has been the quality of this partnership. That rotation of strike has been very good by these two batters. Talking about the old ball, in the last few overs, we've seen deliberate efforts by the fielders to throw the ball into that rough area to get that ball going and ready for reverse swing as quickly as possible for somebody like Wahab Riaz or Fahim Ashraf, in fact. Oh, that won't help, but the fielder is a little inside and he couldn't stop it. 4 more runs for Ishfaq and KP. That's a poor effort considering you're trying to defend the run. Faizan couldn't help it. 4 more runs to the total. It's really sloppy. It was played fine, but he almost got to the ball, and once you get there, you're expected to stop it. No slide. The dive was very, very clumsy. He actually rolled over the top of the ball. Ishfaq will take it. Nice roll of the wrist. Wahab Riaz once again struggling with his line. Nicely done. This is where these two have been very good. Whenever they strike a boundary, they try to take a single on the very next delivery. The last over, we saw Ahmed Shahzad doing a bit of sloppy work in the field. This over, Faizan. This effort won't help Central Punjab because this partnership is growing, Shah Faisal. 90 and just 98 deliveries. They need to break this partnership. Talk about strike rotation. We saw that these two batters were a bit sluggish to begin with. But since, look at their strike rates now. Kamran Ghulam, 46 of just 50 deliveries, almost a run a ball. And Ishfaq, 47 of 58. And the partnership, 90 of 99. A fielder at deep square like mid-wicket, fine leg, mid-on is up in the circle. On the leg side, if you talk about offside, there's a mid-off, extra cover, point and deep cover to go with the fielder at third. The way Kamran Ghulam is playing, it doesn't look like that he's gonna get out. Nearly every delivery from the middle of the bat. That's right, but if you're Wahab Riaz, I'm just thinking what do you want to do to break this partnership. I don't see anything, just a regulation field, 5 fielders inside the ring. You're the main strike bowler. Good idea to bring someone in the ring, ask the batsman to go over the top, because Central Punjab definitely needs wickets. Yeah, but the way these two are striking and the way the fielders are helping them, I doubt that they're going to bring in any fielder, because at the moment it doesn't look good for Central Punjab. Have a look at that, another sloppy piece of fielding. This time it's Hussain Thalat's turn to do it. Hussain Thalat, you don't expect that from him, but it's like a pandemic. It spreads all over the team. 19 gone, 1-1-3 for 1. You can hear from the stump mics, Umar Akmal calling out his fielders to back the bowler. It's hard work. But if you don't support your bowler, it's even harder. Desperate need of a wicket, Central Punjab. Change of ends for Ali Asfan. He was bowling from Inzamam Haq end earlier. And now coming on to bowl from Waqar Yunus end.
कासिम आउट हो गई कासिम Oh, he'll have to hurry, but Qasim Akram could not quite gather the ball cleanly. Otherwise, there would have been an opportunity for him. Little bit of urgency from Umar Akmal from behind the stumps. It's really created some pressure on the batters. This one was to the left of Qasim Akram. He lost his footing at the wrong time. It could have been an opportunity. Good effort Qasim, good effort Qasim. Easily collected single. Ali, I have to say that Central Punjab, there's some very big names. They have distinguished careers at the moment. The sloppy effort in the field, they should really look at it and think of their pride. They should give it their all, because you can't allow, when you're on the field of play with such big name and distinguished careers, you have to give it your all, because otherwise it can turn out to be very embarrassing. Big names, you said. Big names, big troubles, because we've seen troubles in Central Punjab team throughout this Pakistan Cup. Raza Ali Dar named captain early on, being changed after a few games. Qasim Akram we saw captaining the side, and in the end it was Wahab Riaz settling in that he will lead the side. Well, on the other hand, big names, big characters. Big responsibility too. 20 overs gone, 115 for 1, KP. Yet another beautiful drawn shot. Our production team has really been on the button today. See the beauty of Multan Cricket Stadium in its full glory. And the surroundings. For once, this stadium was pretty much outside the city. But now the city has expanded. Good to see a few die-hard fans in attendance. Wahab Riaz once again 2 straight. He should really be telling himself that he's the man to take this team forward and give him that breakthrough. But for some reason he's not found his rhythm. It does happen at times. What a time to not have that rhythm going in a big match semi-final. Lot was expected of Wahab Riaz. He has the potential, he's done it before. And I still believe when the ball gets rough, relatively old, and if he can get that reverse swing going, that will be very difficult for the batters. They can still make a comeback in this game through Wahab Riaz, because he is that bowler who can change the course of the game on his own. Ashfaq is on 49, just one shy of his 50. Like I said in previous over, it's just a regulation field. 3 fielders on the offside in the ring and 2 sweepers. That's a good one. Surprise delivery, 1 for the over, says umpire Kasser. That should help Wahab Riaz. Some aggression. That is what you want to see, especially from the leader of the team. Because if you're down and out and you lead a ball poorly like he did early on in his first over, it puts pressure on the remaining fielders who are relatively young, except a few. That's better. That left arm over the wicket angle and pace and bounce there for Wahab Riaz, much better. The way Umar Akmal fluffed that one, that wouldn't fill Wahab Riaz with any confidence, I have to say. Imagine that was nicked. Went under the bat, actually. Was late on it, Ashfaq. That's been pulled away towards that square leg fielder. And Ashfaq Ahmed will bring up his fantastic 50 in this all-important semi-final. He's done that in just 63 deliveries, the 4th of his career. But what a great time to do that in a big match against a big team. Wonderful effort.
We've seen Ashfaq in the past stand up to his team in difficult conditions. And like Ali said, he was needed after that early loss of young Mohsin. He's really responded with a lot of character, a lot of skill as well. He's not known for his prowess with the white ball, but an important contribution in the semi-final. And this time it's Kamran Ghulam doing the same, reaching this milestone on just 59 deliveries. What a well-played inning this has been from Kamran Ghulam too. An amazing performer, 12th of his career. And rightly applauded by his teammate. They knew the importance of his inning. At a time when they lost a quick wicket, he was the one who came in and started playing those shots and brought the team out of that shell they were in. The partnership of 97, total 119 for 1 KP. This performance wouldn't surprise many. Kamran Ghulam has started to make a name for himself in the white ball cricket after that remarkable season with the red ball, carrying on the good work. Ali Aswan, the coaches were very upbeat about this young talented left-arm spinner. Puts plenty of effort before he delivers the ball. Does remind me of Zulfikar Babar in terms of his action, but he's not coming between the umpires and the stumps like Zulfikar did. And a bit of Raza Al Hassan also. If you just look at him closely when he's about to deliver the ball, it reminds me of Raza Hassan from Sialkot. This one is swept nicely. Ahmed Shahzad does well this time. He made a mess of it last time, but this time he's done well. Two more runs added to the total. 122 for 1. His mannerisms are certainly like Raza Hassan, but that run up and a big leap before the ball. It's in the air, falling short of the short third. Really does give it a rip. As he gets a little stronger in terms of his fingers and wrist, I think he'll be able to impart some revs on the ball and get some spin. We'll have to hurry. Makes it easy in the end. And this one run has brought up a 100 partnership between Kamran Ghulam and Ashfaq Ahmed. What a wonderful time to get this 100 partnership. At a time when they lost Mohsin Khan on just 2 runs. It's these two men who stood up for their team and scored this wonderful 100-run partnership. All too easy at the moment for KP batters. That's end of 22 overs, 124 for 1. Really milking the youngster with ease. 5 runs of the over without taking any chance. Kamran Ghulam, like I said, is carrying on from his good form from the PSL. That shot was probably right up there with the shot of the day. Off the back foot. Good pull shot. That drive also sublime. Look at the way he threaded the needle. And once again off the back foot, the cut shot. He's very, very good against spin. Had plenty of time to pick his spot on that one. He does celebrate a richly deserved 50 for a very, very talented youngster. He's tenacious, he's gritty, and he does fight for his team. Well played, Kamran Ghulam. Wahab Riaz needs a wicket. They need to break this partnership right now because they only require 163 more runs of 168 deliveries at the moment, Khyber Pakhtunkhwa. And these two are looking very solid. Again, excellent running between the wickets by these two men.
Wahab Riaz got to do something about this. Got to stop these singles. And Ali, let me put you on the spot. When you say Wahab Riaz needs a wicket, what does he need to do to take a wicket? It's a tough question. But they'll have to see there if the ball, if they can start reversing. I think at the moment that is their best chance, because we've seen spinners not doing much. There's no assistant from the pitch. Wahab Riaz coming round the wicket, change of angle. But the way the pitch is behaving and the way these two are playing, it looks a mighty task to get one wicket at the moment. But still, the best chance, in my opinion, is through reverse swing. Exactly, that's better from Wahab Riaz coming around the wicket. And you know, when he comes from right behind the umpire, trying to shield himself from the batters, that's where you think that he's looking to get the ball to reverse. Well, he's such a rhythm bowler that you can clearly tell the way he's running in that he's not got the rhythm right. Even the first over when you were commentating. Have a look at that again. Look at it. He's coming from right behind the umpire, not hiding the ball at this moment. He's showing it to the batter, but there will come a time where he will hide, and there is very little movement at the moment. But you see, there's slight gingerness in his run-up. That usual rhythm is not there. Yeah, that's why that first over where he gave away 21 runs must have dented his confidence a lot. And when a fast bowler runs like this, and you are your premier fast bowler, it's not a good news. And Wahab Riaz clearly has been struggling to get that rhythm. He's such a key member of this team. A lot was dependent on him. After winning the toss, batting first, we all were hoping that with the bowling lineup they will put KP in trouble. But it's all too easy at the moment. You've seen Wahab in the past when he's at his real best. He does have a smile on his face. He really enjoys his cricket. Today he's looking very intense. I was fortunate enough to be there at Mohali in 2011, the semi-final between Pakistan and India, where he took 5 wickets. I think I've never seen him bowl with that rhythm again. The way he bowled there, I think that was magnificent. The way he was running in, it showed that he was in great touch, in great rhythm. But he's been disappointing today. It's not for lack of trying, it has to be said. He's trying his best. He's changed a pair of shoes. Probably that will do the trick for him. Bang! Nice! That is nice! The voice, the sound of the bat is just amazing. Although there was a fielder placed there. But the way, the authority that he played that shot was magnificent. Have a look at that. Halfway delivery from the middle of the bat. Wonderful. He took the ball right in the middle of his body. He got inside the line a little bit, and he was in complete control. That was a cracking pull shot. Straight to the fielder, though. Overdone. 129 for 1. $129 for 1 at the moment. The only wicket going down was wire run out. It was an excellent throw by Ali Asfand and well collected by Umar Akmal. He scored 2 runs. Since then, it's been Ashfaq Ahmed and Kamran Ghulam, both scoring 5 runs each. Ashfaq doing it on 68 deliveries. Kamran Ghulam a touch quicker, 66 deliveries. 29 for 1. Ashfaq talking about his innings. Equally as important as that of Kamran Ghulam. Helped along by some poor bowling to begin with. But he's very strong on the onside. He uses his wrist to the good effect. Had a little bit of luck along the way. That top edge sweep shot. Wahab Riaz was spraying the ball around with pace, and Ashfaq was profiting. Very handy knock from the little right-hander from Peshawar. Putting his team in command here in this first semi-final.
Very regulation field. 3 fielders in the ring on the offside. Sweeper is at deep cover and long off. ओए यारा क्या बात है तेरी Coming in with the arm, a little variation from the youngster. Once again, like I said, it was regulation. There's only 2 fielders on the onside as well in the ring. Excellent, Ali, excellent, Ali. Quickly onto the back foot. That has been the key factor of this partnership, the footwork. We saw them coming down the track. We saw them going back quickly, adjusting to the length very quickly. And then you get a loopy holes, easy deliveries, half volleys like this for to get it to the other end. Khyber Pakhtunkhwa needing 157 runs from 26.3 overs. It's looking too easy at the moment. Definitely needed an opening Central Punjab at this moment, because this game is drifting away from them. All too easy, like Ali would say. Plenty of gaps. And they don't need to do anything different, these two. They've kept it simple. They've not tried different shots. They've played every delivery on its merit. Just like that. A gentle half volley, played towards long off, a 1 run taken, a rotated strike. It's all good. Like I said, KP don't need to change anything. The team that needs to make the running is Central Punjab. Keep an eye on Wahab Riaz. What's up his sleeves at the moment? I don't see anything. Call is for 2. It's in the hole. Almost got there, but Ishfaq said no. They're definitely missing Waqas Maqsood. Left-arm fast bowler, played 4-day cricket for them. He's such an excellent white ball cricketer, and I'm amazed not to see him today. 24 overs gone, 133 for 1 KP. That wicket column, Central Punjab needs to really have some figures in there. Wahab Riaz has recovered well. Not well enough to make a breakthrough, but he's kept the scoring down in his 3 overs after that horrible first over. Young Aswan has got through 5 overs, none for 23. Experienced Zafar Gohar was taken for plenty as well. The senior man really hasn't come to the fore for Central Punjab today. Neither with the bat, nor with the ball. Another change, Wahab Riaz, after a burst of 3 overs. Hussain Talat has been given the responsibility. Another one with the bag of tricks. And a very good exponent of reverse swing as well. Ali Yunus. Gotta keep an eye on that ball, see if it does do anything. Central Punjab will be hoping for that. He's bowled well lately. He's improved his all-round cricket abilities, not just batter, but as a bowler too. He's taken 12 wickets in this tournament. That shows that he has got the skill. But as far as reverse swing is concerned, I don't know, I'm not sure if he has that sort of pace behind him to get that reverse swing effective. He's got a mid-wicket, deep square leg, long, fine leg in place. Oh, that's an excellent running. Excellent running by Kamran Ghulam, is it? No, it's Ishfaq Ahmed. Hit and run. Well, basically looking at the field, just the regulation, 5 fielders in the ring as we watch this last single. Both of these went through with the shot. Ishfaq, he made the call. And Kamran Ghulam really trusted him. Never looked back. Just talking about this field and the thinking from Central Punjab. If I'm a KPK batter, is telling me that I need to make a mistake to get out, because Central Punjab aren't looking to get them out. If you look at their batting lineup, it's just about a couple of wickets there. If they can get this partnership, if they can break this, get a wicket of Adil Amin, suddenly the game can change.
But the question is the same, that how are you going to break this partnership? In my opinion, Hussain Talat has the best chance because he's relying on those variations, those cutters, those slower ones. And the type of bowler he is, this pitch will suit his style of bowling. As we see some happy faces here in the ground, witnessing this first semi-final. But this space, there is no trouble. And that's the shot that they've scored plenty of runs on in that direction. Wahab Riaz or Hussain Talat. Sometimes we've seen Babar Azam play this shot pretty well, and we've seen the skippers around the world have started to place a fielder right there to stop that single. Make them think about something else. Haven't seen this from Wahab Riaz yet. Yes, if all those innovations, those new shots coming into play, those new fielding positions. I believe this is a very handy shot when you got a third fielder inside the circle. We've seen it being very useful for Babar Azam. Plays it late, plays it fine. It's very effective, and when you've got that fielder of third inside the circle, it's a boundary. So you can't be giving away runs both sides of the wicket. I know it's a cliche and it's a 50-over game, but if anywhere you can bring in a fielder from, and if you want to bowl that line outside the off stump, you can bring a fielder from the onside and plug that gap and see if the batsmen are prepared to go across the line with the low bouncing wicket. You'll make them think differently, you make them take a chance. But at the moment, plan A for Central Punjab, and they're persisting with it, waiting for the batsman to make the mistake. How well this man has played. We've been talking about Kamran Ghulam's class, but the way he has been there with him, supported him well. His defense is immaculate, very well balanced player. Has been pulled, there is a fielder. Oh, nearly made a mess of it. We have an end of over, 25 gone, 138 for 1 it is. डोगर अंदर आओ। एक 149 रन की खैबर पख्तूनख्वा को ज़रूरत है। 2 सेट बैटर्स इस वक्त पिच पर हैं और इस बैटिंग पिच पर जिसके रवैये में खातिर खा तब्दीली नहीं आई, वक्त गुजरने के साथ साथ आपको मुश्किल होनी नहीं चाहिए यहाँ से। तो यही एक फ़र्क भी रहा है अब तक कि खैबर पख्तूनख्वा के जो बैट्समैन टॉप ऑर्डर से सेट हुए वो लंबी इनिंग्स खेलने के मूड में नज़र आते हैं। अशफाक 60 रन पर हैं, 59 रन बनाए हैं कामरान गुलाम ने। सेंट्रल पंजाब के जो बैट्समैन थे वो सेट होकर आउट हुए और ये एक और बड़ा शॉट खेला मिड विकेट की जानिब। इस बार 4 रन के लिए एक टिपक आती हुई गेंद गई थी बाउंड्री पार उतरने से पहले। अपने तजर्बे का भरपूर फायदा उठा रहे हैं अशफाक। थोड़ा सा पीछे किया, बॉल को उठा के खेले मिड विकेट के ऊपर से, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। अशफाक ने जो सुबह आते ही सब्र किया उसका फल मिलना शुरू हो गया है अशफाक को। आज अच्छा दिन इनका गुजरा है, एक अच्छा कैच भी इन्होंने बाउंड्री लाइन पर लिया था। कासिम अकरम का वो टॉप एज से कैच आया था, उसे दौड़कर जा लिया। बैकफुट पर खेलकर 1 रन हासिल करेंगे और इनको हमने
कम ही देखा है इस वाइट बॉल क्रिकेट में खेलते हुए। ये स्पेशलिस्ट हैं रेड बॉल क्रिकेट के, लेकिन क्योंकि इनके सीनियर बैट्समैन नहीं थे इस बार, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान, तो इनको वो जिम्मेदारी सौंपी गई ओपनिंग करने की, और बड़ी खुश उसलूबी के साथ इन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई है। और अभी तक एक एंड संभाल के रखा है अशफाक ने, और कामरान गुलाम ने उनका भरपूर साथ निभाया। दो रन के लिए कॉल किया है और ले लेंगे ये 2 रन कामरान गुलाम। मिड विकेट पर खासा बड़ा गैप था, फील्डर को कट ऑफ करने के लिए दूर से आना पड़ा। तो पार्टनरशिप जारी है। 26 ओवर्स के बाद स्कोर है 146 से, खिलाड़ी आउट। ऊपर आ जा, इस सीजन में इसकी दफा बाहर हो जा। ये कराची डॉल्फिन्स का रिकॉर्ड है, उन्होंने मुल्तान टाइगर्स के खिलाफ यहाँ सबसे बड़ा स्कोर बनाया था रन चेज करते हुए 349 का। सुई नॉर्दर्न गैस ने 284 रन बनाकर मैच जीता। रन यहाँ पर बनते हैं, रन्स के खिलाफ रन्स बनते हैं, ऐसा नहीं है कि विकेट जो है वो दूसरे वक्त में बिल्कुल ही बैटिंग के काबिल ना रहे। जी बिल्कुल, थोड़ा सब्र करना पड़ता है इस विकेट पर। जब नया बॉल होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होती है, वरना जैसे अशफाक ने सब्र किया और उसका फल उनको मिला है। उन्होंने विकेट पर स्टे किया और भरपूर साथ निभाया उनका। कामरान गुलाम ने जफर गौहर को लाने का फैसला किया है। या जफर गौहर ने ये 4 ओवर किए थे वकार यूनुस एंड से, अब उनको इंजिमामुल हक एंड से पहली बार बॉलिंग दी है वहाब रियाज ने। अभी तक ज़्यादा कारगर रहे नहीं है, इस पिच से उनको मदद नहीं मिली। सेंट्रल पंजाब की बॉलिंग खासी कमज़ोर है, इनके पास फास्ट बॉलर नहीं है, इनके पास ऐसे पेसर नहीं है जो कि नई गेंद का इस्तेमाल कर सकें, गेंद को स्विंग कर सकें। जफर सामने से, जफर शाबाश। ऐसे में सिर्फ स्पिनर्स पर इन्हिसार करना कि कामयाबी मिल जाए, ये तो एक दीवाने का एक ख्वाब हो सकता है। लेकिन हाल ही में टेस्ट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है फ़हीम अशरफ की पुराने बॉल से। अगर पुराने बॉल से फ़हीम अशरफ कुछ जादू चलाएं तो मैच में वापसी और विकेट हासिल करने में कामयाब हो सकती है सेंट्रल पंजाब की टीम। और बॉडी लैंग्वेज जो है सेंट्रल पंजाब की, कुछ इसकी भी बात होनी चाहिए। अगर इनके जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं या हमारे जो डायरेक्टर अगर दिखा सकें इनको एक एक करके कि इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है क्या, क्या मैच में अभी ये खुद को किस हद तक मैच में रखे हुए हैं, कितनी इनको उम्मीद हो सकती है, हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। गेंद हवा में, लेकिन पार कर गए मिड विकेट पर हुसैन तलत को। गेंद आहिस्ता हो गई, डीप में पहुंचकर 2 ही रन पर इक्तिफा किया अशफाक ने। दो रन के इजाफे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 149। बॉल बल्ले पे पूरी तरह नहीं आया। हुसैन तलत ने काफी अच्छी कोशिश की थी, लेकिन बॉल उनकी पहुंच से काफी दूर। अभी तक इनके जो स्पिनर हैं वो ऐसे नहीं लगे जो कि नॉन टर्निंग पिचेस पर या फ्लैट पिचेस पर मुखालिफ बल्लेबाजों के लिए परेशानियां पैदा कर सकें। 150 पर 1।
ये सेंट्रल पंजाब की टीम आप देख सकते हैं कि पहला मैच हार गए थे केपी के खिलाफ यहीं पर, फिर केपी को इन्होंने 15 रन से रावलपिंडी में शिकस्त दी चंद दिन पहले, बाद में सिंध को हराया। ये आखिरी दोनों मैचेस जीतकर सिंध के खिलाफ बड़े मार्जिन से जीतकर फैसलाबाद में सेमीफाइनल में पहुंचे। और ऐसी ही जीत दरकार होती है मोमेंटम वापस लाने के लिए। जो क्लोज मैचेस जीतती है टीम तो बड़ा अच्छा रिदम बन जाता है उनका। जी हाँ, क्योंकि मुल्तान में और फिर फैसलाबाद में ये 3 मुसलसल मैच हार गए थे और इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो खुशकुन नहीं है। तो कासिम अकरम को ऐसे में आजमाया जा रहा है, क्या यहाँ से फाइट बैक करने की सलाहियत है सेंट्रल पंजाब में? क्या अभी भी इस टीम में इतनी, हम कह सकते हैं कि इस टीम में एक उम्मीद बाकी है? क्या कासिम अकरम इस टीम को फिर से उम्मीद दिला सकते हैं? अच्छा दिन रहा है कासिम अकरम का आज बैटिंग में। तो कुछ देर पहले बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही थी, मुझे कासिम अकरम की बॉडी लैंग्वेज जो है, इन्हीं की बॉडी लैंग्वेज सबसे अच्छी लगी है अब तक। और अली असफन बड़े क्विक रहे हैं और बड़े पॉजिटिव रहे हैं फील्डिंग में भी। यहाँ ये वहाब रियाज के आप देख सकते हैं कि इस वक्त कंधे गिरे हुए हैं, चेहरे पर एक उदासी है। और पहले ओवर में इतनी ज्यादा वाइड बॉल्स इन्होंने कर दी, 14 गेंदों पर मुश्तमिल था इनका जो पहला ही ओवर था। फ्रंट से लीड नहीं कर सके वो, और फिर आज इन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का भी फैसला कर लिया। हालांकि यहाँ जो पहले 10 मैचेस हुए थे टीमों ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की थी। अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाह रहे थे लेकिन अटैकिंग क्रिकेट खेली है खैबर पख्तूनख्वा ने अभी तक। इस बार रूम बनाकर खेलने की कोशिश की, क्योंकि ऑफ साइड में कोई फील्डर नहीं है, मिड ऑफ के अलावा कोई भी फील्डर बाउंड्री पर नहीं है, इसलिए कोशिश करेंगे यहाँ से लेग साइड की गेंदों को भी ऑफ साइड में खेलने की। वही करना चाहा लेकिन सीधा खेल गया, मौका है, फैजान ने कैच जा लिया। इस बार जान गए थे कासिम अकरम के रूम बनाकर एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलना चाह रहे हैं, उन्होंने हाथ खोलने का पूरा मौका नहीं दिया और यूं विकेट गिर गई। और जिस मकसद के लिए लेके आए थे कासिम को, वो मकसद पूरा किया कासिम ने। बड़ी शानदार प्लानिंग की, ऑफ स्टंप के सारे फील्डर्स को ऊपर लेकर रूम बनाने का मौका दिया और अशफाक ने उसको अवेल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से विकेट गंवा बैठे अशफाक। काफी देर से क्रीज पर मौजूद थे, काफी खूबसूरत बारी खेल रहे थे। अशफाक की इनिंग्स का खात्मा हुआ, 50 रन मुकम्मल करने के बाद वो ज्यादा जारहाना मूड में थे। बहुत उम्दा इनिंग्स ओपनिंग बैट्समैन की, 86 गेंदें उन्होंने खेली, 152 पर 2, 130 रन की पार्टनरशिप। बॉलर रेडी है यार, बॉलर रेडी है। कासिम अकरम ने एक उम्मीद दिला दी है सेंट्रल पंजाब को, उन्होंने खतरनाक पार्टनरशिप का खात्मा किया जिसमें 130 रन बने। इस मैच की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। लेकिन फिर सवाल ये है कि इतनी देर से क्यों लाया गया कासिम अकरम को, जबकि दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स से वो गैर फाल साबित हो रहे थे कामरान गुलाम और अशफाक अहमद के सामने। ये विकेट टेकर हैं कासिम अकरम, आप इनको कभी भी
आप इनको अंडररेट नहीं कर सकते ऑफ स्पिनर के तौर पर भी। अच्छी ऑफ स्पिन बॉलिंग का मुजाहरा। 10 विकेटें ली हैं कासिम अकरम ने आज की कामयाबी मिलाकर इस चैंपियनशिप में। या ये देखिए कासिम अकरम ने ज़्यादा तेज़ गेंद करने की कोशिश नहीं की यहाँ पर, और ये जान गए थे, रीड किया था इन्होंने कि अशफाक खेलना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, इससे उनको यहाँ पर अपने जो हैंड्स हैं फ्री करने का उन्होंने मौका नहीं दिया और अच्छा कैच लिया बाउंड्री लाइन पर मोहम्मद फैजान ने। आदिल अमीन नए बल्लेबाज। अहमद को देख ली खुद ही। अपने मैचेस की सेंचुरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं आदिल अमीन। बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, रन्स और कैचेस की इनके हाँ कोई कमी नहीं, तजुर्बे की कोई कमी नहीं आदिल अमीन के। लेकिन ये सेमीफाइनल में ये हमेशा एक दबाव होता है जब आप नए नए आते हैं रन चेज में खेलने के लिए, सूरत हाल कैसी भी हो। 1 रन का मजीद इजाफा, इस 1 रन के इजाफे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 153, 2 विकेटों के नुकसान पर। फाइट बैक कर रही है सेंट्रल पंजाब की टीम। इसे उठाकर खेला, जबरदस्त शॉट, 6 रन। कामरान गुलाम ने भरपूर तरीके से कदमों का इस्तेमाल किया और विद द स्पिन हिट लगाई। बॉलर के सर के ऊपर से उठा के खेले, काफी देर बॉल फिजा में रहने के बाद कदमों का इस्तेमाल, भरपूर फायदा उठाया, काफी लंबा छक्का। ये आज के दिन का खासा बड़ा शॉट था, बल्कि सबसे बड़ा शॉट था कामरान गुलाम ने जो लगाया। क्या बात है कासिम। बहुत से लोगों को इन्होंने सरप्राइज किया है अपनी जो वाइट बॉल बैटिंग है उसके जरिए। जिस तरह पिछले बरस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में रन्स के अंपायर लगाए थे, रिकॉर्ड बनाया था कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का। उसके बाद ख्याल ये था कि शायद ये खुद को मुख्तस कर देंगे रेड बॉल क्रिकेट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपने लिए जो है वो जो कहते हैं कि आपको स्काई इज़ द लिमिट, ये कोई लिमिट रखना नहीं चाहते। अच्छा खेले T20 मैचेस में भी अपनी बिसात से बढ़कर, और यहाँ आज बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं। ये मैच विनिंग इनिंग्स भी हो सकती है इनकी, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी सेंचुरी की जानिब भी बढ़ रहे हैं। 159, 2 विकेटों के नुकसान पर 29 ओवर्स के इख्तिताम पर। नेक्स्ट टाइम जरा देख ले, नेक्स्ट टाइम मिडल थोड़ा पीछे। ये थैंक यू। बहुत रेडी रह रहा बच्चे। कासिम अकरम कंटिन्यू कर रहे हैं और फाइन स्वीप कर दिया इस बार खूबसूरत तरीके से, और एक के बाद दूसरा रन भी मुकम्मल किया तेज दौड़कर। विकेट हासिल करने के बाद जो बात हो रही थी बॉडी लैंग्वेज की, वो बिल्कुल तब्दील हो जाती है, खुद ब खुद ही तब्दील हो जाती है पूरी टीम की। देखिए काम जो उमर अकमल हैं वो भी इन्वॉल्व होने लगे हैं। अचानक फील्डिंग का मेयार बेहतर हो गया है। इससे पहले ख़राब क्रिकेट देखने में आ रही थी, कंधे झुकते जा रहे थे। हेड डाउन हो रहे थे। कासिम एक बार फिर बॉल करेंगे आदिल को। थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं सेंटर पंजाब विकेट हासिल करने के बाद। चलो चलो चलो।
ये 5 फील्डर दायरे में रखना ज़रूरी है और वहाब रियाज ने लेग साइड के जो फील्डर हैं कवर के अलावा उनको निस्बतन करीब खड़ा किया हुआ है। इस बार गेंद को गैप में खेला, इससे रन मुमकिन था, वरना कोशिश यही है वहाब की कि एक रन के लिए आसानी से ना जा सकें दूसरे एंड पर। आदिल अमीन, ये अच्छी कप्तानी है वहाब रियाज की। यही चाह रहे हैं वहाब रियाज के सिंगल रुकेंगे तो वो बड़े शॉट की तरफ जाएंगे जैसे अशफाक ने किया। एक और गेंद खाली गई, रिजवान ने गेंद का रास्ता रोक लिया। अच्छे क्रिकेटर हैं कासिम अकरम, लाहौर से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कैप्टन हैं। और इस बार शानदार शॉट, नया जोरदार छक्का और गेंद सीधी गई जहीर अब्बास इनक्लोजर में विद द स्पिन। पिछले ओवर में लेफ्ट आर्म स्पिनर को लॉन्ग ऑफ पर हिट लगाई थी और इस बार लॉन्ग ऑन को ऑफ स्पिनर को कदमों का इस्तेमाल किया, निहायत ही शानदार तरीके से बॉल और बैट का कनेक्शन, काफी दूर जा गिरी बॉल। या बहुत ही उम्दा फुटवर्क और उसके बाद शॉट की उठान भी। ये मुल्तान स्टेडियम में लगने वाले ये बड़े छक्कों में से एक था। ये देखिए जो क्लीज थी वो उनका फुटवर्क की था और लगता है कि अब इन्होंने वो डांसिंग शूज पहन लिए हैं। जी, इससे पहले भी इन्होंने दूसरे एंड से बड़ा जबरदस्त छक्का मारा था, काफी बुलंदोबांग। यहाँ जो बड़े बड़े छक्के मैंने देखे इसी एंड से दानिश कनेरिया ब्रायन लारा को बॉलिंग कर रहे थे और इतने दूर दूर छक्के आए थे ये हमारे दाएं बाएं। एक तो इसी इलाके में ही आया था, जहीर अब्बास इनक्लोजर में डबल सेंचुरी बनाई थी ब्रायन लारा ने उस दिन। वो लारा की आखिरी टेस्ट सेंचुरी भी थी, उनके करियर की आखिरी टेस्ट सेंचुरी थी जो मुल्तान की सरजमीन पर बनी। 168, 2 खिलाड़ी आउट। चलो चलो यार चलो। जफर गौहर अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, सामना करेंगे उनका आदिल। ले लो सीधे बल्ले के साथ खेले। एक्सीलेंट कासिम। खुद ही लो। सेंट्रल पंजाब की टीम, ये देख सकते हैं इनकी जो सर्कल की फील्ड है इस वक्त 30 गज के दायरे के अंदर, उसमें शॉट फाइन लग है। अहमद शहजाद हैं, साद नसीम शॉट थर्ड पे हैं। पॉइंट पोजीशन पर हम देख सकते हैं रिजवान हुसैन को, मिड ऑफ कवर पर एक एक फील्डर, क्योंकि 40वें ओवर तक जो फील्डिंग करने वाले कप्तान हैं उन ज़रूरी होता है कि वो 5 फील्डर दायरे के अंदर ही खड़े करें वनडे क्रिकेट में। इसलिए जो स्पिनर हैं ये उनकी ज़िंदगी अजीरन की हुई है इस कानून ने, इस फॉर्मेट में। बैकफुट पे जाके पंच किया कामरान गुलाम ने, इस बॉल को 1 रन हासिल किया। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्माइलिंग फेस के साथ पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं कामरान गुलाम। स्वीप किया इस बॉल को, फील्डर वहां पर मौजूद हैं। 1 रन तेज से हासिल किया, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं। अच्छी कॉल, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन तेज से हासिल किए कामरान गुलाम और आदिल ने। 2 रन के इजाफे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 172। 2 विकेटों के नुकसान पर निहायत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं कामरान गुलाम और आदिल की जोड़ी। स्वीप शॉट्स हैं
इसने भी ज़िंदगी अजीरन की है स्पिनर्स की। ये बहुत ही अच्छी दौड़, बिल्कुल वाज़ेह था, कोई शुबा नहीं था कि दूसरे रन के लिए नहीं मुड़ना। अच्छी क्रिकेट आदिल अमीन की जानिब से। क्या बात है तेरी जफरी। जफर गौहर के इस ओवर से सिर्फ 4 रन आए, 172 पर 2। पानी का वक्फा। अफरीदी को खेलने के लिए आना है। खालिद उस्मान ये बड़ी अच्छी बैटिंग किया करते हैं रिवायती तौर पर, अच्छे मैच फिनिशर हैं कप्तान खालिद उस्मान। साजिद खान भी ये अपनी बैटिंग में प्रमोशन के लिए कोशिश रहते हैं। वहाब रियाज के अभी 6 ओवर्स बाकी हैं, इनसे उम्मीद हो सकती है। इनका पहला ओवर खासा महंगा था जिसमें 21 रन बने। फहीम अशरफ के 5 ओवर्स बाकी हैं और सिर्फ एक ही विकेट सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स के नाम रही है जो कासिम अकरम ने हासिल की, मोहम्मद अशफाक की। पहले खिलाड़ी रन आउट हुए थे। ये दूसरा ओवर था जब मोहसिन खान रन आउट हुए और ये बड़ी ही आला काविश थी। अली ने बाउंड्री लाइन पर गेंद को दे फेंका और रन आउट करार दिया गया मोहसिन खान को। बड़ी अच्छी कोशिश अली असफंद की, नए क्रिकेटर की। टीवी अंपायर ने सोच विचार के बाद और गौर ख्वास के बाद अपना फैसला दिया। ऑफ साइड में खेलने के लिए गए, ज़्यादा सामने और ज़्यादा ऊपर खेल दिया। फैज़ान ने कैच लिया कासिम अकरम को, ये कामयाबी हासिल हुई। लेकिन सिर्फ 2 विकेटों से बात बनेगी नहीं। और ये वो शख्स है जो सेंट्रल पंजाब का रास्ता रोके हुए है। ये कलीदी विकेट है इस मरहले पर दोनों ही टीमों के लिए, कामरान गुलाम की। और अगर कामरान गुलाम को आउट करने में कामयाब होते हैं तो मैच में यकीनी तौर पर वापस आने की राह हमवार कर देंगे। वहाब रियाज खुद आए हैं बॉलिंग कराने के लिए। देखना है कहानी कहां बदलती है। बड़ा प्लान किया था कासिम अकरम के साथ मिलके वहाब रियाज ने अशफाक की विकेट लेने के लिए। तो वहाब रियाज के हाथ में
हमने जब जब नई गेंद देखी है इतनी कामयाबी इनको मिलती नहीं रही। ये गेंद 15 ओवर्स पुरानी है, वो इससे कि 2 नई गेंदें इस्तेमाल की जाती हैं दोनों एंड से इस 50 ओवर के फॉर्मेट में। अब ये वो वक्त है जब वहाब रियाज का शो शुरू होता है सही मानों में। क्या वो विकेटें दिला सकते हैं अपनी टीम को आज? और शानदार शॉट, कामरान गुलाम ने खूबसूरत ऑफ ड्राइव किया खड़े खड़े, और वहाब रियाज का खैर मकदम किया इस स्पेल में। और इससे पहले शानदार इसी जगह पर 2 या के बाद दीगरे चौके लगाए थे फ़हीम अशरफ को कामरान गुलाम ने। किसी फील्डर को कोई हिलने का मौका नहीं मिला। इस एंड से वेलकम किया कामरान गुलाम ने, बड़े स्टाइलिश बल्लेबाजी कर रहे हैं। पूरा मिडल हुआ बॉल, हेड स्टील, शानदार क्रिकेटिंग शॉट कामरान गुलाम की जानिब से। एक और अच्छा शॉट, लेकिन रन नहीं मिलेगा। क्रिकेट फील्ड पर हमें 2 तरह के वहाब रियाज देखने को मिलते हैं। एक वो जो मोहाली और जो एडिलेड ओवल वाला वहाब रियाज, और एक वो जो एजबेस्टन बर्मिंघम वाला वहाब रियाज। तो आज जो है वो एजबेस्टन बर्मिंघम वाला वहाब रियाज हमें नजर आया। सीधे बल्ले के साथ खेले, मना किया स्कोर लेने के लिए। कामरान गुलाम बड़ी शानदार पारी खेल रहे हैं 79 रन्स पर। वहाब रियाज के लिए लेग साइड में 2 फील्डर हैं, और ऑफ साइड में इस वक्त मिड ऑफ है, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप थर्ड मैन। लेकिन तेजी के साथ निकली, क्या इस बार तवक्को नहीं कर रहे थे कामरान गुलाम। चौका खाने के बाद अच्छी वापसी वहाब रियाज की, ऐसी ही बॉल्स की वजह से मशहूर है, मकबूल है वहाब रियाज। तेज रहा बॉल, क्विक हुआ, बल्ला लेट आया सीधा विकेट कीपर उमर अकमल के हाथों में। पुराने बॉल से जैसे जिक्र कर रहे थे कि रिवर्स करने की सलाहियत भी रखते हैं वहाब। लेट कट खेले थर्ड मैन की जानिब, फील्डर तीसरी गेंद के ऊपर आए फ़हीम अशरफ। 1 ही रन्स का इजाफा होगा इस बॉल पर। इस 1 रन्स के इजाफे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 177। कामरान गुलाम पहुंचे 80 पर 20 रन्स की दूरी पर अपनी सेंचुरी से। बड़े मैच में बड़ी पारी खेलते हुए कामरान गुलाम शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका भरपूर साथ दिया अशफाक ने और अब आदिल अमीन ने। कोच अब्दुर्रहमान खासे खुश होंगे अभी तक अपनी टीम की कारकर्दगी से। इस मैच के तकरीबन 82 ओवर्स हो चुके हैं और इस वक्त फेवरेट हैं ये मैच जीतने के लिए भी, एक और फाइनल खेलने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा, अब्दुर्रहमान सादरन पंजाब के भी कोच थे पिछले 2 सीजन्स में, इसलिए जानते हैं इस मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के यहाँ के मकामी हालात को भी। फाइनल की जानिब 4 रन्स मिल जाएंगे। एक और ख़राब गेंद और अच्छा इम्प्रोवाइज भी किया बैट्समैन कामरान गुलाम ने, वो 80 के पेटे में जा पहुंचे। 32 ओवर्स के अख्ताम पर बढ़ता हुआ स्कोर 181। आदिल ने भरपूर फायदा उठाया इस बॉल का, पीछे पड़े हुए बॉल को काफी टाइम मिल गया था आदिल को। शानदार 4 रन हासिल किए, 2 चौके आए इस ओवर में। Come on, boys. Come on, boys. Come on. $181 for 2.
Khyber Pakhtunkhwa has really got hold of this run chase thanks to a magnificent second wicket partnership. Kamran Ghulam is still carrying on, eyeing that three-figure. Another 106 runs needed in 18, well, a little less than 18 overs now. Milks away another single. A very good afternoon in the com box. Ali Yunus. Very good afternoon to you too, Shah Faisal. It's been so pleasing to see Kamran Ghulam's 81 runs. The way he has built his inning. It's excellent to see a very great prospect for Pakistan cricket, this young lad. Single-handedly taking the match away from Central Punjab. Excellent, Qasim. Seriously, it's been very disappointing. The body language of central fielders, their bowlers, especially the leader, Wahab Riaz. They just don't seem to be in the ground. It's set up. You could hear the crack of Adil Amin's bat as he smashed this one over square leg for another boundary. Zafar Gohar, another one. He's having a bad day with the ball. A rang long hop. Too easy for Adil Amin. Wrong length. This is not what you expect from a bowler like Zafar Gohar. Look at that, half length, easy pickings. And as you said, way too easy. Could have hit it anywhere. That car corner, that favorite area of these batters these days. Third 50 of the innings. This one is from the bowling side. Zafar Gohar has got his 50. Another sweep shot, roll of the wrist. Protection down there though. Very lackluster performance from Zafar Gohar with the ball. 51 of his 7.5. Less than 100 required now. We've got 17 overs to go after this delivery. Kamran Ghulam on 81. Oh, that one again. Very well picked up by Kamran Ghulam. The length was not quite there, but the way he rocketed back onto the back foot, played it towards that cow corner again for another boundary. Well, this time was a change of pace from Zafar Gohar, slightly quicker. And look at Wahab Riaz. He doesn't send a good signal to his team. Look at Zafar Gohar, quicker with the arm, but Kamran Ghulam is a very, very good player of spin. He used his crease very nicely, went deep, found the gap as well. Nothing that Central Punjab could do about this onslaught from these KP batters. But if you look around the field, the Central Punjab fielders, the shoulders have slumped already, like Ali, you were mentioning. Look at the senior pros, Ahmed Shahzad, Wahab Riaz. Don't see that spark in them. I have to be very honest, if anyone that I saw that with that kind of spark, that I saw that only in Qasim Akram in the field. Other than that, these big name players have really failed to make a mark on this game. Agreed. I thought when they scored 286 runs, I thought we've got a game on. But the way they have fielded, the way they started this inning, I think that set up the tone. That first over from Wahab Riaz, in my opinion, they lost it right there. He was wayward, he was all over the place. Where's that drone ended up in? Looks like a bird. It's on that side. It's right at the Inzimam ul Haq Pavilion as we watch Fahim Ashraf. Starts off with a short and wide, allowed the batter to free his arms and easily completed the second run. It doesn't look very good if you're a Central Punjab supporter. Absolutely. You expect better, considering they've got so many big names, big players in the side. Players like Fahim Ashraf, who's the member of the current Pakistan side. And if you're bowling at this line, at this length, the
The action replay you can see just wavered outside the off stump, easy picking for the batters. Even the type of form Adil Amin is in, is not going to miss out on those. Adil Amin is coming off the back of a very good 92 in the last round. He's in good nick. He's already made a good start, 21 of just 15. Yeah, you're talking about the big names in central Punjab. And a lot expected of them, the likes of Ahmad Shahzad and Rizwan Hussain knocking on the door. Hussain Talat has been on the periphery of the Pakistan team. Saad Naseem has played for Pakistan. Umar Akmal, Qasim Akram, Zafar Gohar, Fahim Ashraf just coming back from the test squad. Wahab Riaz. I mean, when you see these names, like I said earlier, if nothing, they should be playing for their pride. This game has been televised. There's a lot of eyeballs on it. And they've had good careers. They have still a lot of fans who expect a lot better from them. They must be very disappointed to see their stars perform like that. Absolutely. But not to forget how well Kamran Ghulam and Ishfaq has played. Nothing taking away from their heroics, especially Kamran Ghulam. The way he started off his inning with those true extraordinary drives through extra cover. I think that was the moment that actually I thought won the match for KP. That showed the intentions of Kamran Ghulam, the way he was middling the ball. Excellent batting. Change of pace, but too much width. Kamran Ghulam is seeing them pretty well. Collects himself another single. Fahim Ashraf did bowl a pretty decent first spell, but that breakthrough never came that Central Punjab needed after that run out of young Mohsin. Change of pace. Zafar Gohar is one of the better fielders of Pakistan. Even he can't help it. That's the situation of Central boys at the moment. Well, I have to say, we keep saying this, he's got good reputation as a very good fielder. Every time we've covered domestic cricket, we've seen Zafar Gohar really struggle in the field at times. Could it be that lack of interest, lack of concentration? Either of that, not good for a top-class professional. Especially when a chief selector is in the house. You can't be that lazy, can't be that casual. Well, the ball is hitting the middle of the bat pretty regularly. Even though Fahim Ashraf is trying. Even up until this stage, as we watch this delivery, we haven't seen any reverse swing just yet, Ali. Been working on the ball rigorously. No movement yet. Yeah, the only person that could have gone that reverse swing going was Wahab Riaz, but his rhythm is definitely not there. And you can clearly see the difference between the two camps. Central fielders down and out. And on the other hand, Central Punjab, the KP bowlers, the KP boys, they're so happy, they're so gelled in together, they're smiling. Why not? Because they know they've got this match in their bag. 198 for 2. It comes as no surprise why this KP team is very successful. Every time you see them play, it's not necessarily the same bunch of players, but their character is the same. Wonderful partnership for that second wicket. Ashfaq did eventually get out for 71, but Kamran Ghulam just 14 away from that magical moment. 198
in 34 overs. Central Punjab bowling, Ali Yunus. Well, nothing really to talk about it. Just one wicket for Qasim Akram in his 2 overs for 11 runs. It's been all struggle for the remaining bowlers. The most disappointing, top of the order, top of the list, Wahab Riaz, the captain. One who should have stood up at this big occasion. Zafar Gohar, a lot was expected of him. 8 overs, 55 without a wicket. It's been hard work. It's been a struggle. Well, the leg spin of Saad Naseem into action. Starts off with a flighted delivery. Well, he's a part-time spinner, probably a little bit better than that. But every time a part-time leg spinner comes in, is every opportunity that his line and length may not be as accurate as regular bowlers. Shah Faisal, let me remind you, he started off his cricket as a leg spinner, then transformed himself into a batter who can bowl, and now he's just a batter. And you can expect this. Cracking pull shot, too much time for Kamran Ghulam. He's not going to spare those asking for trouble. This is really deflating from Central Punjab. Length, halfway, easy pickings to these batters, especially Kamran Ghulam, who's on 90 runs now. Another short delivery. This time he gets away cheaply with just a single. Kamran Ghulam realizes that he missed out on that opportunity. '91, Kamran Ghulam, just 98 deliveries. Oh, nicely done. Worked through his wrist, just one more run. What a big player, what a big match player Kamran Ghulam is turning out to be for KP. He's almost there to get his second 100 of this tournament. What a time to get it. No surprise to the supporters of the domestic cricket when they see KPK in this dominating position. Well, we all thought in the commentary box that after losing 3 to 4 main players, KP might not be the same team that they are. But have a look at this performance. Too slow through the year. All the time in the world for Kamran Ghulam. Inching closer to those 3 figures. 35 gone, 206 for 2. We've been talking about KP's beautiful run all around the cricket. Earlier we showed you this graph, a little bit of change in that, a little bit of mistake on our end. This is the complete updated graph. National T20, National Under-19 Championship, National Under-19 Cup, Quaid-e-Azam Trophy they won, National Under-13 Cup, National Under-16 Cup. So you can clearly see where this cricket is going from Khyber Pakhtunkhwa. It's right from 113 level till the Quaid-e-Azam Trophy cricket. They're all winning it. That is marvelous to see, Shah Faisal. Almost a clean sweep of the domestic event, barring that one where Southern Punjab lifted a trophy, but KPK's dominance is there for everyone to see. Kamran Ghulam collects another single, and you can also reflect that by the number of players that are playing for Pakistan from that region as well. Ever-growing number of players from KPK and the previously known as the FATA coming through and play for Pakistan. Absolutely, and that's how they've got to the semi-finals. They won against Central Punjab, Southern Punjab. They won just one loss against Balochistan there, then against Northern, and Sindh they've lost again. Southern Punjab they won and lost to Central Punjab in the last game, and won against Balochistan to qualify for the semi-final. What a wonderful team they are. Very slowly off the surface. Yeah, just 3 losses in this year's Pakistan Cup.
7 victories. And the last victory against Balochistan really propelled them to the top of the table. That's why they're playing the number 4 in the group stages, Central Punjab, allowing them a relatively easy passage into the final. And Faisal, imagine you add the remaining players who are playing for Pakistan. Add Shaheen Shah Afridi, Rizwan to this side, Iftikhar to this side. They can represent Pakistan. Fakhar Zaman also. This KP side, they are magnificent. Sif Afridi, Haris, the upcoming lads from KP to represent Pakistan. What a team, what a region. Fahim Ashraf had decided to pitch it short. And look at Kamran, Umar Akmal rather, really struggling. For a moment, I've mistaken him for Diego Maradona. Well, that's my mistake. Way too easy at the moment. Just milking Fahim Ashraf for a 1. Kamran Ghulam is all set to score another 100. We've been talking about his abilities and the way he has transformed as a batter. Wonderful to see. Ahmed Shahzad looked good for his 35 but lost his wicket. Disappointing in the field, lazy in the field. The captain also just not quite there in the ground. This time Adil Amin smashed it for a single. Fahim Ashraf is trying his best, but nothing's working for him. Complete difference in body language of both the teams. KPK very relaxed. Like I said, it's not the same individuals that represent KPK, but their attitude and character is the same. Look at Saad Naseem. He's done and dusted for the day, it looks like it. There are huge questions for Central Punjab management. Would they want to carry on with these players with no future in Pakistan cricket? Glorious. Kamran Ghulam got onto it in a flash. Slightly short of a length. He just rocked onto that back foot and smashed it away. .98 he moves to. 38 gone. 214 for 2. Good pickup shot. The length has been the problem. They've not quite got the length right, these Central Punjab bowlers. And the type of form Kamran Ghulam is in. Very quick on his feet. The footwork's brilliant. We were talking about Central Punjab. What can they do from here? I still believe if you're going to lose like this, better lose it with youngsters. At least they will show some energy in the ground. But having stars with no energy, with no motivation, isn't going to help their cause. Because with this new domestic structure, it's so difficult for these non-performers to sustain their place in their side. I still believe that when they made Razali Dar the captain, I thought that was a great move. But then changing him halfway there hasn't worked. It's been confusing for Central Punjab. Still believe you give opportunities to the young players and you may lose the tournament, but you will be able to make a team maybe in a couple of years' time. But with the body language of this sort of body language, you're not going anywhere. You make a good point, Ali. It looked like it took the edge, didn't it? But once again, Umar Akmal fluffing his lines. Regulation take, just couldn't gather it properly. Maradona, you said? I really doubt if Diego Maradona ever played in the goal. He was good at the other side of it. Look at this last delivery. The drag wasn't on. He kept his back foot grounded. But I did hear a little noise as that ball went past the bat through the stump marks. No one would know if
was a clear-cut chance or not, but now I think the focus will shift on Kamran Ghulam. He's batting on 98. 105 deliveries he took. On the cusp of that magical 3 figures. No change from Wahab Riaz in the field. Regulation 5 fielders in the ring, 4 in the deep. He isn't asking him to do anything different. Wahab Riaz. Disappointing. Yeah, I agree. It has been disappointing, but on the other hand, how well this young lad has played. Kamran Ghulam on 99 runs now. Just one away from his wonderful 100 in the first semi-final of this Pakistan Cup. These are the type of players you need in your side. Handy cricketers. Too short, too wide. Gets away cheaply with that. 37 gone, 217 for 2. Mohsin Khan got himself run out, courtesy to a wonderful throw from young Ali Asfand. Scored 2 runs. Ashfaq Ahmed, a very good inning of 71. Qasim Akram getting his wicket. Adil Amin, 28, 25 deliveries. But the one name that stands out is Kamran Ghulam. 99 runs of 107 deliveries. Can well be the match-winning inning. Talking about that run out from Ali Asfand. Now he's got the ball in his hand from the media center end. Starts off with a full toss that allows Kamran Ghulam to get onto the strike on 99. Keep an eye on Wahab Riaz. Well, keep an eye on the KP dugout as well, because they're all anticipating the big moment. All too easy, but Kamran Ghulam, take a bow. This has been a magnificent innings. Keeps churning those runs in any format that he gives an opportunity. The KP dugout, the balconies on its feet, and a big hug. The crowd are on their feet. What a magnificent knock. Well played, Kamran Ghulam. Wow, the inning of the highest order. Wonderful inning by Kamran Ghulam. Second 100 of this Pakistan Cup. He's just taken this game away from Central Punjab. From the moment he came into play, it's been one heck of an inning. Come on, yaar. Come on, boys. Come on. Well, Kamran Ghulam, he's really been terrific today. Like I said, he's growing in reputation with each passing day. This one, Adil Amin gets in on the act, finds the gap. Another short one from Ali Asfand, and all Adil Amin had to do is to pick his spot all along the ground. This chase has become all too easy now. That's poor bowling. Inexperience showing. Ali Asfand halfway down. It's not going to bother any batter. It's a very uninspiring atmosphere in the team as well for young Ali Asfand. He's very talented, but he sees dropped shoulders all around him. Will make it a lot difficult for him. No, you don't blame the youngster. When your senior pros, your big players, they're going to be like that, so you don't expect much from young Asfand. .224 for 2 at the end of 38 overs.
Kamran Ghulam's 100 has been the highlight of the day. He's lit up this Multan Cricket Stadium with some wonderful strokes, none better than this straight drive, followed by another pull shot. Watch out for that cover drive as well. Sumptuous. And off the back foot, riding the bounce very nicely. Excellent player of spin. Took Zafar Gohar downtown. Wahab Riaz was greeted with this magnificent boundary as well. Picked up the length very quickly when it was shot. And he deserves all the accolades. Zafar Gohar back in action. Swept nicely for one. Adil Amin has supported Kamran Ghulam very nicely. He's on 34 now. And a wonderful 100 by Kamran Ghulam. He must be a very happy man, Coach Abdul Rahman. His expressions doesn't change much. He's very proficient with his job. .62 needed. 11 and a half overs with plenty of wickets in hand. Off the inside edge, Zafar Gohar was pleading, but I think he got a bat to it. Kamran Ghulam. Rare moment in lapse of concentration. Just got to his 100. I think still in that celebration mode maybe. Took it casually. Way too easy, but that was off the bat. What was Zafar Gohar appealing for? That's what he's signaling to. Way too easy at the moment, just milking these balls and taking singles. They now require 60 runs to win of 68 deliveries. Khyber Pakhtunkhwa to qualify for the final. Remember, we've got second semi-final day after tomorrow. It's going to be a very good match between Sindh and Balochistan. Lots of big players too playing in that game. Must-watch game. Since the end of that first power play, come back to it after this ball as Kamran Ghulam milks another single. Wahab Riaz has persisted with this 5 fielders in the ring and 4 on the deep since over number 11. At no stage has he tried to do anything different, just allowing the game to drift. And this is really disappointing to see from someone who's shown really good promise in terms of captaincy when he did that in PSL. He was very enterprising. Not today. Yeah, that's why I'm not a huge fan of fast bowlers being the captain, because once you get that first over wrong, all that thing comes to your decisions as a captain. And that has happened with Wahab Riaz here against KP. 39 overs gone, 2-8 for 2 KP. Ali Yunus has left the seat for Lina Aziz to come in. Don't agree with Ali, because I'm a big fan of fast bowlers, captains. And well, let him go home and face Waqar Yunus at home, because he defied him being captain. Younger brother doesn't like the idea of his elder brother being the captain because he's a fast bowler. he's not going home for 3-4 days. That's why he's saying that. Well, he may have to stay a little bit longer. Excellent innings by Kamran Ghulam. What an innings. Top-notch innings. Laced with boundaries all over the ground, all corners, all nook and corners. And the bat sounded so sweet. A top edge will go over the head of Umar Akmal. Will it have enough legs? Probably not. This has really died as a contest. It seems pretty long time ago. No fight from Central Punjab. No enterprise. Well, you know, when nothing's happening, I don't know why can't they make some changes in the field?
Call is for 2. Like have someone in the batsman's eye line, maybe have a slip, do something different, make the batsman think. But the captaincy has been bland, and I mean the shoulders drooped a long time ago. Not great captaincy. Ali, come on, Ali. Even Ali Asfand lets one go through his hands. You're absolutely right. Catching fielders, slips, or just the simple fact of bring more people in the ring, make them hit over the top. Yeah, do something different. Because these two are doing so well. I mean, they're not going to fold out when the field is open. 235 for 2. Kasser Wahid signaling the start of the power play. Well, that will force Wahab Riaz to make that fielding change that he hasn't done since over number 11. And the responsibility of bowling in the power play has been given to Qasim Akram. He's got some good confidence. He batted well, picked up the wicket. So this force change might help the Central Punjab team. They should have done it themselves. Chance of a run out, but nothing. Yeah, this just sums up the whole day for Central Punjab. They've been listless, and they're the started team. And the way Umar Akmal moved towards the ball, really he once used to be a very good athlete. This is another short one, asking for trouble. Luckily this one goes straight to the sweeper. Yeah, talking of Umar Akmal, he used to be a brilliant fielder and a very good athlete in his prime. Once used to be a very good athlete. Please elaborate. Well, he's not anymore. That's the bottom line. That's a good one. But such a talented player. Does it make you sad talented. at times? Extremely sad. I mean, the talent he had and the way he could hit the ball, footwork, good cutter, puller, could play the straight drive so well, the straight six. I mean, fantastic player. One fails to understand how he could do this to himself. Short delivery, straight to the sweeper. You say this nicely. He could do this only to himself. No one can do that to him. And on reflection, I mean, he's pretty senior now, pretty mature. But it looks like he still hasn't had that realization. But I'm sure one day he will have. But probably the time would be gone by then. Which is a sad story, to be honest with you. Yeah, one day. 240 for 2. Come on, boys. Come on, Ali. Come on, Ali. Come on, Ali. एक और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप जिसमें इन्वॉल्व रहे हैं कामरान गुलाम। 88 रन की हो चुकी है आदिल अमीन के साथ।
ये अच्छा शॉट लगाया है। अहमद शहजाद लॉन्ग ऑफ से जा रहे हैं, लेकिन उनसे पहले पहुंच गए थे साद नसीम। फ्लाइट में हालांकि यहाँ डिसीव करने में कामयाब हो गए थे अली असफंद, लेकिन क्योंकि सेट है, गेंद पर बड़ी अच्छी नज़र है, इसे एडजस्ट करने में कामयाब हुए। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और सेंचुरी के बाद ये नॉट आउट जाना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी इनिंग्स खेलने के आदी हैं कामरान गुलाम इन बड़े फॉर्मेट्स में। और कोई जवाब नहीं था आज। सेंट्रल पंजाब की जो बॉलिंग है बिल्कुल बेअसर लगी है। पिच ज़रूर फ्लैट थी, लेकिन नए आइडियाज़ देखने में नहीं आए। और सिर्फ 3 बॉलर्स के साथ आप इतना बड़ा मैच खेलने के मुतामिल हो भी नहीं सकते। लीना जी, आप इत्तेफाक करेंगी, क्योंकि बैट्समैनों से भरी हुई लग रही थी ये टीम। बिल्कुल लॉपसाइडेड थी। जितने बैट्समैन उन्होंने खिलाए उस हिसाब से जैसे टीम का बैलेंस होता है वो अच्छा नहीं था। इनका शायद ख्याल था कि केपीके के सारे मेन बैट्समैन मिसिंग है तो ये 3 बॉलर से उनको काबू कर लेंगे, लेकिन इनको पता लग गया कि ऐसा होना बड़ा मुश्किल है और बड़ी ये कैप्टनसी पुअर थी। उठाकर खेला, यहाँ मौका है, अहमद शहजाद ले पाएंगे कैच? जी हाँ, सामने दौड़ लगाई और जरा सा जरूरत से ज्यादा आगे निकल गए थे, लेकिन आखिर में गेंद को अपने दोनों हाथों में उन्होंने बेकाबू नहीं होने दिया। विकेट गिर गई। कामरान गुलाम बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हुए। पहली कामयाबी अली असफंद की आज की शाम। बहुत अच्छी बेहतरीन इनिंग्स खेली और ये कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन बल्ले पे सही तरह बॉल नहीं आई। अच्छा कैच लिया, ड्राइविंग कैच अहमद शहजाद ने, और वो अमूमन ऐसे कैचेस को बड़ा एंजॉय करते हैं क्योंकि डाइव अगर डबल भी कर लें तो वो उसको एंजॉय करते हैं। कामरान गुलाम अभी भी 109 बनाने के बाद भी खुद से नाला नजर आते हैं। 244 पर 3। Last time round the wicket. How to go, sir? 2. हम सब मोहम्मद सरवर को बैटिंग करते हुए देखना चाहते थे और आ गए मोहम्मद सरवर। उनका ये पहला लिस्टेड टूर्नामेंट है। 10 मैचों में 375 रन हैं, एक सेंचुरी भी है। 119 रन की इनिंग्स इन्हें खेली थी। अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। खासे बड़े और ताकतवर स्ट्राइकर के तौर पर मोहम्मद सरवर ने मनवाया है। तो देखना ये क्या स्पिनर को ये स्ट्राइक कर सकते हैं। मिड ऑन को पीछे कर दिया है वहाब रियाज ने और उसे खाली जगह पर खेला अपने पहले रन के लिए। तो 42 ओवर्स के बाद 245 पर 3। कामरान गुलाम आमतौर पर मैचेस को फिनिश करते हैं, लेकिन ये बल्ला भी इनके हाथ से मुड़ गया था और उतनी एलिवेशन नहीं मिल सकी। अहमद शहजाद दाएं बाएं जाते इस कैच को लेने में कामयाब हो ही गए। बहुत लंबी इनिंग्स थी कामरान गुलाम की और तकरीबन शुरू से ही वो खेल रहे हैं। तो हो सकता है कि थक भी गए हों। फटीक भी सेट इन कर जाती है जब 100 बना चुके होते हैं और कई दफ़ा कंसंट्रेशन भी आपकी जो है वो हट जाती है कि 100 हो चुके होते हैं। और कई बार बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने से या ज़्यादा इन्हेमाक करने से भी आप जहनी तौर पे भी थक जाते हैं और उसमें भी आप ऐसे शॉट्स खेल जाते हैं। क्योंकि आज जब पहली विकेट बड़ी जल्दी गिर गई थी, उसके बाद बड़े इन्हेमाक के साथ इनको ये इनिंग्स खेलना पड़ी, क्योंकि बड़ा मैच था, नॉकआउट मरहला था। केपी की टीम पर ज़्यादा दबाव था क्योंकि वो 7 मैचेस जीत कर आए हुए थे। फेवरेट होने का भी एक दबाव होता है, उससे भी निपटा कामरान गुलाम ने।
और इस बात से भी उन्होंने पूरा इस बात का ख्याल किया कि उनके बहुत से की प्लेयर, बड़े प्लेयर्स नहीं हैं आज मौजूद, और उन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी। जब फ़खर जमान और रिजवान और इफ्तिखार ना हो तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कामरान गुलाम पे, खासकर जब वो अच्छा PSL खेल के आ रहे हो तो। लवली बॉलिंग कासमा, कासिम अकरम से बहुत ज़्यादा बॉलिंग कराई नहीं कप्तान वहाब रियाज ने। हालांकि आज के दिन वो हर जानिब पेश पेश नजर आए। आपने पहले ही ओवर में विकेट भी हासिल की थी। सेंट्रल पंजाब की टीम बमुश्किल इस सेमीफाइनल तक पहुंची थी और यहां अभी तक अपसेट नहीं कर सकी है। हालांकि एक मौके पर आई लगता था कि वो 300 रन से आगे निकल जाएंगे जब कासिम अकरम बैटिंग कर रहे थे हुसैन तलत के हमरा। ये वाइड के रन्स मिलेंगे, 3 रन्स मजमूई तौर पर गिनती की जाएगी। लेकिन ये बॉलिंग ऐसी थी, इतनी ज़्यादा कमज़ोर, कोई पेनिट्रेशन नहीं कि शायद ये अगर 300 रन्स भी बन जाते, 320 भी बन जाते तो भी ये रन्स बन जाते दूसरे हाफ में। जी हाँ, जब बॉलर्स हो ही नहीं आपके पास, एक आपके पास ऐसा बॉलर है वहाब रियाज जो विकेट्स ले सकता है और बाकी कोई ऐसे बॉलर्स नहीं है। पुल किया, एक और मौका, सीधा खेल दिया और दूसरी कोशिश में नहीं ले सके अली असफंद। गेंद उनकी तवक्को से ज्यादा तेज आ गई बाउंड्री लाइन पर और रिबाउंड पर वो दोबारा तकरीबन कैच कर चले थे। और ये ब्रेक थ्रू दे दिया था कासिम अकरम ने और बड़े डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं और राइटली सो। ये देखिए, ये कैच होना चाहिए था, ये दूसरी अटेम्प्ट और ये कैच गिर गया। तो बॉलर बड़ी मेहनत कर रहा होता है, प्लान कर रहा होता है और जब कैच ना पकड़ा जाए तो जाहिर है बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। एज ए टीम भी आप जो है गिर जाते हैं, आपके शोल्डर्स पहले ही गिरे हुए हैं क्योंकि आप की टीम जो है उसको मैच पे कोई काबू नहीं है। या ये ज़रा गौर से देखना पड़ेगा कि क्या जो पस मंज़र में जो ये सफ़ेद सीढ़ियां हैं इस स्टेडियम की मुश्ताक मोहम्मद इनक्लोजर के ऊपर, क्या ये उनका तो असर नहीं था कि गेंद को पूरी तरह देख नहीं सके, ज़रा सा आगे निकल गए थे अली और यहाँ बैट्समैन आगे निकल गए थे। बाल बाल बचे हैं आदिल अमीन। ये बाल बाल बचे हैं या स्टंपिंग छोड़ दी उन्होंने, इस पर बात करेंगे। 43 ओवर्स के बाद 251 पर 3। गेंद आहिस्ता आहिस्ता पहुंची उमर अकमल की जानिब और वो खुद वो गिर भी गए थे। उमर अकमल पूरी तरह फिट नजर नहीं आते 50 ओवर विकेट कीपिंग करने के लिए। और देखें वो रेगुलर विकेट कीपर हैं भी नहीं। ये भी एक बात है कि आप जब इरेगुलर विकेट कीपर से कीपिंग कराएंगे, वो नेचुरल विकेट कीपर नहीं है। बेशक उनके ख़ानदान में सब विकेट कीपिंग करते हैं लेकिन वो नेचुरल विकेट कीपर नहीं है, तो उसका नुकसान ज़रूर होगा आपको। यहाँ तो बॉलिंग की तरह यहाँ पे भी स्पेशलिस्ट की जरूरत थी सेंट्रल पंजाब को। इनको दरअसल एक बैट्समैन विकेट कीपर चाहिए था। इनके पास विकेट कीपर बैट्समैन तो थे लेकिन अपनी टीम में बैटिंग को बढ़ाना चाहते थे अब्दुल रज़ाक, इसलिए उनने ऐसे बॉलर्स खिलाए जो बॉलिंग से ज़्यादा बेहतर बैटिंग कर सकते हैं और ऐसा विकेट कीपर खिलाया जिसकी भी पहचान बैटिंग ही है। और यहाँ लेग साइड में खेलने के लिए गए, गेंद रुक कर आई लेकिन दूर चली गई ये असफंद से। यहाँ स्पिनर्स को मदद मिली है दूसरे हाफ में अगर आपने अच्छी लेंथ को हिट किया हो यहाँ। जी हाँ, बिल्कुल ग्रिप भी की है बॉल और इनका एक्शन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प एक्शन है।
लेकिन बॉलर्स कैप्टन ने सपोर्ट नहीं किया स्पिनर्स को। अगर विकेट नहीं गिर रही थी तो आई लाइन में, जैसे हम पहले भी कह रहे थे, कोई फील्डर लाते, स्लिप ले आते, शॉर्ट लेग ले आते, बेशक 4-5 बॉलों के लिए, तो बैट्समैन सोचने पे मजबूर हो जाता है। उसको सोचने पे मजबूर नहीं किया, फील्ड अंदर कर लेते, दायरे में ज़्यादा फील्डर्स आ जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी वहाब रियाज ने नहीं किया। बच्चे थोड़ा जल्दी निकल। शाबाश 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 शाबाश। ये देखिए डाइव जरूर की, लेकिन गेंद दूर जा रही थी। लेकिन ये मैच जो है उन दो पार्टनरशिप्स ने खासा आसान बना दिया है, जिनमें इन्वॉल्व थे कामरान गुलाम, 255, 3 खिलाड़ी आउट। दो 256 पर 3 खिलाड़ी आउट, और ये बहुत रिलैक्स कर रहे हैं केपी के प्लेयर्स। उनको पता है कि तकरीबन जॉब इज़ डन। अरशद इकबाल अब जो आज नहीं खेल रहे हैं, वो भी अच्छे मूड में अपने फेलो टीम मेंबर्स के साथ। ये आप देख सकते हैं सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स का इकोनॉमी रेट वहाब रियाज 9 से ज़्यादा है और साद नसीम का 8 से ज़्यादा है। विकेट कॉलम्स जो हैं उन्होंने देखिए फास्ट बॉलर्स ने एक भी विकेट हासिल नहीं की, जबकि जो केपी के फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने शुरू से ही अपनी धाक बिठा दी थी। तारिक क्योंकि फास्ट बॉलर्स हैं नहीं, वो मीडियम पेसर्स हैं, पार्ट टाइमर्स हैं। हुसैन तलत की अगर आप बात करें तो उनको आप फास्ट बॉलर तो नहीं कह सकते आप, वो पेस है नहीं उनके पास, मीडियम पेस करते हैं वो। विकेट में कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको कोई मदद मिले। ठीक है, सेंट्रल पंजाब की पहचान है फास्ट बॉलिंग और यही अब उनकी कमज़ोरी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 ही फील्डर हैं इस वक्त दायरे के अंदर। हालांकि इनकी टीम आसानी से नाकामी के करीब जा रही है, तो आप एक आध फील्डर जो है और आगे बुला सकते हैं, बैट्समैन को दावत दे सकते हैं। मिड ऑफ के फील्डर पर को आगे लाया जा सकता है। खुद वहाब रियाज जो बाउंड्री पर खड़े हुए हैं, मिड ऑफ पर आए, यहाँ पर बैट्समैन को दावत दी जाए कि आप अगेंस्ट द टर्न खेलने के लिए जाएं। मिड ऑफ और मिड ऑन दोनों आगे आ सकते हैं, और दावत जैसे आप कह रहे हैं कि दी जाए, और उनको इसी तरह के जो होते हैं टैक्टिक्स, उससे आपको विकेट मिल जाती है। अगर आप 2-3 फील्डर और, जैसे हमने अभी कहा, कि वो अंदर दायरे के आ जाएं, तो फिर बैट्समैन मजबूर होगा कि वो उनके सर के ऊपर से खेलने की कोशिश करे और शायद डिसीव हो जाए फ्लाइट से या लेंथ से, या मिस क्यू कर ले। यहाँ ये वहाब रियाज मौजूद थे और यहाँ पर 2 रन्स बन गए। देखिए अगर इस तरह 1-2 भी ये बनते जाएंगे तो किसी मुश्किल के बगैर खैबर पख्तूनख्वा की टीम जो है वो आगे निकल जाएगी। सरवर 12 गेंदें खेल चुके हैं। आदिल अमीन 1 स्ट्रोक के फासले पर हैं अपनी निस्फ सेंचुरी से। एक बार फिर सरवर ने ऑन ड्राइव किया, स्ट्राइक वही रिटेन करेंगे। 45 ओवर्स के बाद 261 पर 3। जब इशफाक की विकेट गिरी थी उस वक्त प्रेशर डाल सकते थे। उस वक्त इन्होंने, आदिल अमीन आए और उनको खेलने दिया फ्री होके। अब उनकी 50 होने वाले हैं, तो उस वक्त अगर दायरे को टाइट किया जाता, फील्डिंग को टाइट किया जाता, कोई शॉर्ट लेग, कोई स्लिप इस तरह लगाई जाती, तो फिर उससे कुछ विकेट हासिल हो सकती थी, क्योंकि उनका स्कोर बुरा नहीं था। टारगेट 288 जो है 87, वो कोई बुरा टारगेट नहीं है। Bowling change, right arm over the wicket. अली असफंद
को हटाकर फहीम अशरफ को गेंद दी गई है। इसी एंड से उन्होंने पहले स्पेल में 5 ओवर्स किए, फिर 2 ओवर्स का एक और स्पेल किया, लेकिन कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। अब एक इजाफी फील्डर को बुलाया है फहीम अशरफ ने दायरे के अंदर, लेकिन गेंद शॉट कर दी और किसी मुश्किल के बगैर डिस्पैच किया सर्वर ने। 4 रन और कम हो गए केपी की हदफ से। जी हाँ, बहुत अच्छी शॉट, लेंथ को बहुत अच्छा जज किया। ये देखें, जरा सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, अपनी क्रीज में रहकर उसको पुल कर दिया और 4 रन हासिल किए लेग साइड पे। अच्छी शॉट, बगैर किसी तकलीफ के 4 रन गिफ्ट दिए फहीम अशरफ ने उनको, और उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी गिफ्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। फाइनल को आगे इस वक्त बुलाना चाह रहे हैं। साद नसीम को कहा गया है कि वो लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ चले जाएं, और जो ऑन साइड में 2 फील्डर डीप थे, डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट पर, उनको भी बाएं तरफ हटा दिया गया। अभी लीना जी, आपने जिक्र किया कि जो फास्ट बॉलर्स हैं सेंटर पंजाब से फास्ट बॉलिंग की कमी है, तो क्योंकि फास्ट बॉलर्स जो हैं वो ज़्यादातर पंजाब से वो लाहौर में ही पैदा होते रहे हैं, और लाहौर में इस वक्त जो ज़्यादातर क्लब क्रिकेट के मैदान हैं वहाँ आपको स्पाइक्स पहनने की भी इजाज़त नहीं है जब आप फास्ट बॉलिंग करते हैं, तो इसलिए भी लोग कतराते हैं वहाँ तेज़ बॉलिंग करने से। इस बार गेंद कुछ देर तक हवा में रही, खूबसूरत तरीके से खेलने में कामयाब हुए। एक और चौका, आदिल अमीन की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल हो गई। लाजवाब इनिंग्स, 48 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्का लगाया और अपनी टीम को जीत के बेहद करीब ले आए। अच्छी कवर ड्राइव, बॉल को में विक थी और उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। बेहतरीन कवर ड्राइव, फुल फ्लरिश ऑफ द बैट के साथ कवर ड्राइव खेली। 20वीं निस्फ सेंचुरी आदिल की अपने करियर में। ये भी इस टीम की बैटिंग लाइन का एक अहम सुतून है, मुस्तकिल रुकन है आदिल अमीन, और ये अनसंग हीरो हैं केपी के। ये बड़े नामों में शुमार नहीं किए जाते, लेकिन हमेशा आपको कहीं ना कहीं नज़र आएंगे किसी न किसी कोशिश में, टीम की जीत में इनका किरदार अहम होगा। तो ये खामोश हीरोज़ में से हैं इस टीम के। इनके जो प्लेयर्स हैं उनकी जो मेच्योरिटी है लाजवाब है। जो अभी आपने अनसंग हीरो की बात की, वो ये मेच्योरिटी का साइन है कि वो अपना जो रोल है उसको ज़बरदस्त करते हैं और लाइमलाइट की कोई ख्वाहिश नहीं है उनको ख़ास। एज लॉन्ग एज उनकी टीम जीते और टाइटल्स जीतती रहे तो वो खुश हैं। तो ये एक मेच्योरिटी का साइन है और आई थिंक इनकी मैनेजमेंट को क्रेडिट है जिन्होंने इतना इनको एक देखे ना, इनको इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लाइमलाइट में है या नहीं। दूसरी जानिब सेंट्रल पंजाब की जो टीम है, इनको बहुत सोचना पड़ेगा। इनको कुछ नौजवान खिलाड़ियों को सामने लाने की ज़रूरत है, नया खून इस टीम में शामिल करने की ज़रूरत है, शायद सोच भी तब्दील करना होगी। एक वो जो विनिंग मेंटालिटी है वो इस टीम में नज़र आती नहीं है काफ़ी अरसे से। आज की शिकस्त के बाद ये ज़रूर सोचेंगे क्योंकि इससे पहले ये फाइनल में हारे नेशनल T20 के, आज ये सेमीफाइनल में अगर हार गए तो यकीनन इनका थिंक टैंक जो है वो बैठेगा, इस बात पे भी गौर करेगा कि एक कप्तान होना चाहिए, फास्ट बॉलर्स कहाँ से आएंगे। और आपने जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया कि स्पाइक्स पहनने की भी क्लब क्रिकेट में इजाज़त नहीं है, उसके बारे में भी थिंक टैंक्स जो हैं वो सोचेंगे ताकि एक शहर जो मशहूर था फास्ट बॉलिंग के लिए, उस पर क्यों फास्ट बॉलर्स निकल रहे, उस पर भी गौर किया जाए। 273 फॉर 3, 46 ओवर्स गॉन।
दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन इसका मौका नहीं दिया हुसैन तलत ने। और ऑलराउंडर्स की बजाय आइंदा इनको स्पेशलिस्ट की तरफ भी सोचना होगा। इन साहब को जो आपकी स्क्रीन पर हैं, अब्दुल रज़ाक। एक और अच्छे क्रिकेटर हैं, नौजवान उभरते हुए इमरान डोगर आपको नजर आए थे अब्दुल रज़ाक के बराबर में। ये बड़े बासलाहियत ओपनिंग बैट्समैन हैं, बाएं तरफ स्क्रीन के हैं। इनको खिलाया जा सकता था, इनको बुलाया भी, लेकिन उतना मौका नहीं मिला। ये टेक्निकली बड़े सॉलिड हैं। रज़ा अली डार जो हैं, इनसे भी इस्तेफादा किया जा सकता था, लेकिन स्पेशलिस्ट लाना होंगे इस टीम को बैटिंग और बॉलिंग दोनों में। जब आपके पास वो ऑलराउंडर उस पाए के नहीं है, तो फिर स्पेशलिस्ट ही एक हल रह जाता है मुश्किल का। देखिए ये भी हो सकता है क्योंकि रज़ाक इतने अच्छे ऑलराउंडर थे खुद, तो शायद उनकी इंक्लिनेशन, उनका जो तरीक़ाकार, वो ये समझते हैं कि ऑलराउंडर्स उनको मैच जिता जाएंगे। लेकिन आज के बाद वो भी सोचेंगे कि जैसे आप कह रहे हैं कि स्पेशलिस्ट भी ज़रूरी हैं और टीम का बैलेंस भी उससे बेहतर होगा। आज इनकी टीम में कोई बैलेंस नज़र नहीं आया। जैसे कि 8 या 9 बैट्समैन नज़र आए, लेकिन कोई फास्ट बॉलर्स नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से इनको नुकसान हुआ। बॉलिंग कासिम। कैसर वहीद अंपायर्स के लिए ये अच्छा मैच साबित हुआ है। अच्छी अंपायरिंग की है दोनों ही अंपायर्स ने यहाँ पर। और अगर अंपायर्स जो हैं अननोटिस जा रहे हों, तो उसका एक ही मतलब लिया जाता है कि अंपायरिंग अच्छी हो रही है। एक और ओवर जाता रहा, 277, 3 खिलाड़ी आउट। जी हाँ, ये बात आपने सही कही कि एम्पायर्स अगर अननोटिस जाएं तो उसका मतलब है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा उनका दिन गुजरा या मैच गुजरा। और अगर एम्पायरों की बात हो रही हो कि ये डिसीजन शायद ऐसे होता या वैसे होता, तो दैट मीन्स कि शायद उनको भी अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। लेकिन आज का मैच इनके लिए बड़ा, दोनों एम्पायर्स के लिए बहुत अच्छा गया, जिसको कहते हैं ना अन इवेंटफुल मैच। अब 10 रन्स रह गए हैं केपीके के लिए ये मैच जीतने के लिए, और ओवर्स 3 हैं, तो कोई ख़ास टेंशन की उनके लिए कोई बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। आराम से ये टारगेट उनको अबूर कर लेना चाहिए। साद नसीम एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत अरसे से इस टीम के साथ मौजूद हैं, लेकिन देखना होगा बास क्रिकेटर्स के मुतालिक सेंट्रल पंजाब को कि क्या वो विनिंग रन्स बना सकते हैं या ऐसी विकेटें ले सकते हैं जो टीम की जीत के काम आए। क्योंकि आज भी ये पहले 6 में शामिल नहीं थे, इनको बैट्समैन ख्याल किया जाता है, लेकिन आज 7वें नंबर पर साद नसीम बैटिंग करने के लिए आए। इस तरह मोहम्मद फैज़ान हैं जिनको आज जल्दी बैटिंग करने के लिए भेज दिया गया था। एक और शॉर्ट गेंद, एक और ख़राब गेंद, लेकिन पूरा फ़ायदा नहीं उठा सके आदिल अमीन। जब अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और आप पूरे 10 ओवर्स नहीं कर सकते, तो फिर आप ज़ाहिर सवाल उठेगा कि क्या वाकई आप बॉलिंग ऑलराउंडर हैं या आप ऑलराउंडर हैं। यकीनन आज जो बात आप कह रहे थे कि नीचे भेजा गया साद नसीम को, तो इसकी वजह ये भी थी कि फ़हीम अशरफ को भी प्रमोट किया गया और फैज़ान को भी प्रमोट किया, तो जाहिर है उनका नंबर नीचे चला गया, जिसका शायद उनको नुकसान भी हुआ आज, क्योंकि अच्छी इनिंग्स खेली थी साद नसीम से। शायद उनको अगर उनके नंबर पे भेजा जाता जो उनका नेचुरल नंबर है, तो वो शायद इनके 300 सवा 300 रन भी हो सकते थे। 2 ओवर्स बाकी रह गए हैं, लेकिन सिर्फ एक बाउंड्री दरकार है केपी को।
और फाइनल के दरमियान उसी का फासला है 283, 3 खिलाड़ी आउट। राइट आर्म ओवर। वो कहना साफ में आ जाओ जाके। रिजवान हुसैन को बॉलिंग करने के लिए बुलाया गया है। तो अब सवाल ये है कि क्या विनिंग शॉट जो है वो सर्वर लगा सकेंगे इस ओवर में। इनका बॉलिंग एक्शन जो है लेग स्पिनर की तरह का है रिजवान हुसैन का, लेकिन ये ऑफ स्पिन कर दी। पहले के मुकाबले में ये खासे स्लिम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अपना वेट लूज़ किया है। 2018 में यहाँ मुल्तान में इन्होंने लाहौर को नेशनल T20 कप का चैंपियन बनवाया था। उसके बाद ये PSL भी खेले। इस बार भी मुल्तान सुल्तान की टीम का हिस्सा थे, लेकिन मौका मिला नहीं रिजवान को। और यहाँ विकेट का मौका, ये अच्छा कैच लिया साद नसीम ने। तो आखिरी लम्हात में जब टीम बिल्कुल जीत के करीब थी, आदिल अमीन आउट हो गए। सिर्फ 2 ही रन्स उनकी टीम को चाहिए थे, लेकिन विनिंग शॉट खेलने से वो महरूम रहे। जी हाँ, विनिंग शॉट लगाना चाहते थे, लीडिंग एज हुई और अच्छा कैच हासिल किया साद नसीम ने। अगर ये चेंज पहले कर लेते तो क्या पता विकेट पहले भी गिर सकती थी। थोड़ा सा सोच विचार करते तो करेज बड़ी चीज़ होती है कप्तानी में, एंड आपको दिखानी पड़ती है। और 60 रन्स बनाए आदिल अमीन ने। बहुत ही अच्छी मेजर्ड इनिंग्स खेली, जैसी उनकी टीम को ज़रूरत थी उसके मुताबिक इनिंग्स खेली। और यही बड़ी बात होती है सेंसिबिलिटी की, मैच्योरिटी की। रेहान आफरीदी विकेट कीपर बैट्समैन खैबर पख्तूनख्वा के। फुल शॉट खेला, स्कोर दोनों ही टीमों का बराबर हो गया। कि ज्यादा बाउंस हो गई थी उमर अकमल की तवक्को से खुश नहीं है उमर अकमल अली से। सेंट्रल पंजाब की टीम टूर्नामेंट से बिल्कुल बाहर होने के करीब आ गई है। और दूसरी जानिब बड़ी कमाल कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा की। आप जितनी भी तारीफ कर सकें, जितनी सताइश कर सकें इस टीम की, इनकी सोच की, वो कम होगी। और ये रहा विनिंग शॉट, इस बार मिड विकेट पर चौका लगाया सर्वर ने। और इस तरह ये पहला सेमीफाइनल जीतने का एजाज हासिल किया है केपी ने। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में उन्होंने 6 विकेट से मात दी सेंट्रल पंजाब को। इसी टीम को उन्होंने नेशनल T20 कप का फाइनल हराया था। और आई टॉस हारने के बाद भी जीत ने उनके कदम चूमे। और इसमें कोई शुबा नहीं कि एक ऐसी कामयाबी जिसकी बुनियाद उनके बॉलर्स ने रखी थी। उनके बैट्समैनों ने बड़ा अच्छा तालमेल दिखाया और कॉम्प्लीमेंट किया अपने बॉलिंग अटैक को। और आखिर में एक आसान फतह ने उनके कदम चूमे। मुबारकबाद बहुत बहुत केपी को। जी हाँ, टॉप नॉच परफॉर्मेंस। प्लेयर्स मिसिंग थे उनके, बहुत बड़े नाम, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये मैच जीता। अच्छा बड़ा टारगेट उनको चेस करना था 287 का, वो भी आराम से चेस किया।
और ज़बरदस्त उनके प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी, फील्ड में भी बहुत अच्छी, बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, कैचेस भी पकड़े और उसके बाद बैटिंग भी बहुत अच्छी की। हर प्लेयर ने आके अपना पूरा रोल निभाया, मैच्योरिटी दिखाई और ये दिखाया कि अगर बड़े नाम ना भी हों और आप प्लान करके खेलें तो ज़बरदस्त हो सकता है आपके लिए। रिजवान हुसैन का ये ओवर खासा दिलचस्प रहा, जिसमें पहले विकेट मिली और उसके बाद ये बैकफुट पर जाकर विनिंग शॉट खेला। सर्वर ने बिलाशुबा ये हकदार हैं आज की शाम मुस्कुराने के, और दूसरी जानिब सेंट्रल पंजाब के लिए सोच विचार करने का अब वक्त है कि आज के दिन वो दूसरी बेहतरीन टीम क्यों थे। इस पर गौर करना होगा, कुछ नए खिलाड़ियों के मुतालिक सोचना होगा, उनके सिलेक्शन के बारे में, और अपनी खामियों का यहाँ ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए। सेंचुरी बनाई कामरान गुलाम ने, मैच विनिंग सेंचुरी। 60 रन की बड़ी उम्दा इनिंग्स के लिए आदिल अमीन ने और अशफाक अहमद ने भी जिम्मेदाराना 71 रन स्कोर किए। सरवर आफरीदी नॉट आउट रहे 26 पर, और इस तरह 6 विकेट से फतह हासिल की। 21 एक्स्ट्राज भी स्कोर में शामिल हैं। पहले ओवर में वहाब रियाज ने जो 21 रन दिए थे, उसके बाद रन बनाने का सिलसिला रुका नहीं, बहुत से बॉलर्स को आजमाया गया। जी हाँ, किसी भी बॉलर ने खातिर खा कुछ भी हासिल नहीं किया। 1 विकेट हासिल की रिजवान हुसैन ने, और वहाब रियाज ने अपने पहले ओवर में 21 रन दिए। और ये विनिंग मोमेंट्स क्या खुशी मना रहे हैं और बिल्कुल डिजर्व करते हैं। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। ये टीम मुस्कुराने की हकदार है। कल दूसरा सेमीफाइनल यहाँ पर होना है बलूचिस्तान और सिंध की टीमों के दरमियान, और वहाँ से जीतने के बाद, दरअसल कल के बाद वो खेला जाएगा, और फिर फाइनल मैच जुमे के दिन होगा, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की टीम मद्दे मुकाबिल आएगी। और आज खैबर पख्तूनख्वा ने किसी भी मौके पर ये नहीं लगने दिया कि वो मैदान छोड़ रहे हैं। देखेंगे बहुत ही अच्छी शॉट। यहाँ ये दरअसल पहले खिलाड़ी थे, रन आउट हुए मोहसिन। खैबर पख्तूनख्वा की इनिंग्स की झलकियाँ हैं, ये देखिए पीछे रह गए थे। उमर अकमल ने यहाँ पर अच्छी विकेट कीपिंग की, बाउंड्री से अली ने बहुत अच्छी थ्रो फेंकी। तीसरे अंपायर ने अपना फैसला सुना दिया गौर खौज के बाद, और उसके बाद कई बड़े दिलकश स्ट्रोक्स हमने देखे। मैदान के दोनों अतराफ में हावी नजर आए। कामरान गुलाम उन्होंने भरपूर फॉर्म दिखाई। मीडियम पेसर्स जो हैं कि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। शॉर्ट गेंदों पर भी ये देखिए, ये बैकफुट से पंच देखने में आया, और जब स्पिनर्स बॉलिंग करने के लिए आए तो पहली गेंद पर छक्का लगा दिया जफर गौहर को। और ये दोनों बैट्समैन जो थे स्वीप शॉट खेलने में खासे माहिर नजर आए। बहुत ज़्यादा स्वीप शॉट और ड्राइव्स पर रन्स देखने में आए। अशफाक ने एक स्वीप शॉट पर एक और चौका लगाया, फुल शॉट पर बाउंड्री लगाई। अच्छी इनिंग खेली तजुर्बेकार अशफाक ने, लेकिन कामरान गुलाम को रोकना मुमकिन नहीं था। आज उन्होंने टूर्नामेंट की दूसरी सेंचुरी स्कोर की। कोई भी खिलाड़ी रन रोकने में कामयाब नहीं हुआ, यहाँ तक कि कासिम अकरम को लाया गया, जिन्होंने विकेट हासिल की अशफाक की। बाउंड्री लाइन पर उनका कैच पकड़ा गया। उसके बाद ये बड़ा छक्का लगाया कामरान गुलाम ने। खासे स्टाइलिश लगे, खासतौर पर जब वो ऑफ साइड में शॉट खेल रहे थे। कामरान गुलाम ने एक बड़ी इनिंग्स खेल कर दिखाई, क्योंकि रन चेज में आसान नहीं होता सेंचुरी बनाना। सेमीफाइनल या फाइनल का जो चेज है उसका एक अनोखा ही दबाव होता है, और उसके बाद ये अनोखी खुशी भी होती है, आपको दोहरी खुशी। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त शॉट्स खेली, खासकर जो स्ट्रेट ड्राइव थी बहुत अच्छी। ये देखें, एक नीचे आके शॉट खेलने की कोशिश की जिस पे वो आउट हुए। अच्छा कैच अहमद शहजाद का,
और फिर एक बेहतरीन कवर ड्राइव, जो भी बैट्समैन केपी का आया उसने शॉट्स खेली और फुल एक्सप्लॉइट किया बॉलिंग को, ये लीडिंग एज और बैट्समैन आउट। अच्छा कैच साद नसीम का। यहाँ आदिल अमीन आउट होने वाले ये चौथे और आखिरी खिलाड़ी थे, और फिर मोहम्मद सरवर ने बाकी का काम किया चौका लगाकर। इस मैच को उसके सही अंजाम तक पहुंचा दिया। खैबर पख्तूनख्वा ने 6 विकेट से कामयाबी हासिल की है। टॉस वहाब रियाज ने जीता। सेंट्रल पंजाब ने पहले बैटिंग की, उनने 286 रन बनाए। ये बुरा स्कोर नहीं लग रहा था वक्फे पर। कासिम अकरम ने 67 रन की बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली। हुसैन तलत ने भी निस्फ सेंचुरी बनाई। साद नसीम ने 46 रन की इनिंग्स खेली। 3-3 विकेटें हासिल की इमरान जूनियर और साजिद खान ने। इमरान सीनियर ने भी अच्छा स्पेल किया, खासतौर पर पहला स्पेल। उन्हें 30 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए। जवाब में केपी ने कामरान गुलाम की सेंचुरी और अशफाक और आदिल अमीन की निस्फ सेंचुरियों से तकवीत पाकर लकीर अबूर की। जब 1 ओवर बाकी था, 6 गेंदें और 6 विकेटें उनकी बाकी थीं। 1-1 विकेट अली और कासिम अकरम ने हासिल की। तो पहला सेमीफाइनल केपी ने जीत लिया है, और यहां मैन ऑफ द मैच का मरहला भी होगा, और साथ साथ पोस्ट मैच डिस्कशन भी, लेकिन एक वक्फे के बाद।
of Kamran Ghulam, who has led Khyber Pakhtunkhwa to yet another final of Pakistan Cup 21-22. Let's have a look at the match summary, how this match happened. Central Punjab winning the toss, batting first, scoring 286 runs for the loss of 9 wickets. Qasim Akram top scoring with 67, Hussain Talat 63 and Saad Naseem finishing the inning with 46. Mohammad Imran Jr. took 3 wickets alongside Sajid Khan, who also got 3 wickets. Khyber Pakhtunkhwa in reply scored 290 runs inside 49 overs for the loss of just 4 wickets. Kamran Ghulam scoring a brilliant 109 of just 120 deliveries. He was well supported by Ishfaq Ahmed, who scored 71 runs. Adil Amin also scoring 60 runs. And in the end, Khyber Pakhtunkhwa winning it by 6 wickets and qualifying it for the final. Yes, my name is Ali Yunus and I've got Mr. Tariq Saeed alongside me to discuss what happened today. What's gone wrong with Central Punjab? Well, they were in a good position after that good partnership between Hussain Talat and the youngster. So मैं बात करूँगा तारिक सईद साहब से. तारिक साहब से एक अच्छी पोजीशन में आ गए थे. सेंट्रल पंजाब 286 रन कर लिए थे. कहाँ आपको लगता है कि गलती हो गई? जी हाँ, शायद उस मरहले पर जो कासिम अकरम थे उन्हें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए था. हुसैन तलत आउट हो गए हैं कि वो पूरे 50 ओवर तक बैटिंग करते तो इनकी टीम जो थी वो 300 का हिस्सा अबूर कर सकती थी. और नो डाउट कि अच्छी बैटिंग की हुसैन ने भी, कासिम अकरम ने भी शुरू की विकेटें गिरने के बाद. तो एक तो शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं थी. फ़हीम अशरफ जो काफ़ी सीनियर बैट्समैन हैं, टेस्ट बैट्समैन हैं, और पहली गेंद पर आकर जिस तरह का उन्होंने शॉट खेला वो जेब नहीं देता था. किसी भी इस तरह के बैट्समैन के शाया निशान नहीं था. लेकिन शायद ये 300 से ज़्यादा रन्स भी होते तो भी बन जाते. जिस तरह की इनकी बॉलिंग थी, कोई पेनिट्रेशन नज़र नहीं आई. तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही हाफ्स में ये कमज़ोर टीम लगी है सेंट्रल पंजाब. जी थोड़ा सेंट्रल पंजाब की बात करते हैं. 78 पे 4 आउट होने के बाद जो पार्टनरशिप लगी कासिम अकरम और हुसैन तलत की, तो काफ़ी होप मिल गई होगी उसके बाद सेंट्रल पंजाब को कि अच्छा स्कोर हो सकता था. शानदार पार्टनरशिप रही वो. जी हाँ, क्योंकि ये अच्छा टॉस था. इस पिच पर जो जीतने में वहाब रियाज कामयाब हो गए थे और लगता था कि कोई भी टीम टॉस जीतती तो वो पहले बैटिंग ही करती, क्योंकि दूसरे हाफ में आप देख रहे थे कि स्पिनर जब अच्छी लेंथ को हिट कर रहे थे तो उनको मदद मिल रही थी पिच से. तो लेकिन जब आपकी फील्डिंग साथ ना दे रही हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि ऐसा लग रहा था कि शायद एक ही टीम जीतने के लिए आई है, तो ये मायूस कुन कारकर्दगी रही है सेंट्रल पंजाब की. इसमें कोई कलाम नहीं है. जी हाँ, मायूस की कारकर्दगी की अगर हम बात करें तो एक नाम डेफिनेटली सामने आता है, वो कासिम अकरम का है. जिस तरीके से उन्होंने एनर्जी दिखाई, पूरी बाकी टीम से डिफरेंट नज़र आए वो. या इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल पंजाब की टीम है इनको और भी कासिम अकरम जैसे नौजवान जो खिलाड़ी हैं उनको ज़रूरत है उन पे दरवाज़े खोलने की. कासिम अकरम उनने अच्छी फॉर्म दिखाई, दबाव में आकर बहुत अच्छा खेले और हर तरह का स्ट्रोक उनने खेल के दिखाया और ये भी साबित किया कि वो दबाव में कितना अच्छा खेल सकते हैं. फास्ट बॉलर पर, स्पिनर पर कदमों का भी इस्तेमाल किया. इसके अलावा स्वीप करते हुए नज़र आए, जो कि आजकल के पाकिस्तानी बैट्समैन ज़्यादा करते नहीं हैं स्पिनर पर. तो अच्छा पैकेज लगे हैं और शायद वही शाइनिंग लाइट भी हैं आज के लिए सेंट्रल पंजाब के लिए. जी अगर थोड़ा सा खैबर पख्तूनख्वा की बॉलिंग की हम बात करें, साजिद खान वापस आए केपी की टीम में टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने के बाद 3 विकेट्स उन्होंने हासिल की, तो काफ़ी खुशाइंद साइन है ये केपी के लिए. जी हाँ, हालांकि साजिद खान जो हैं ये रेड बॉल क्रिकेट ही ज़्यादा खेलते हैं. आसिफ आफरीदी इनके वाइट बॉल क्रिकेट के स्पिनर होते हैं, लेकिन आसिफ आफरीदी क्योंकि पाकिस्तान टीम के हमरा इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं तो पूरा फ़ायदा उठाया साजिद खान ने इस फॉर्म में भी आके. और पहले स्पेल में वो खासे रन्स दे भी रहे थे, लेकिन बहुत ही अच्छा उन्होंने कम बैक किया. लगातार 2 गेंदों में 2 विकेटें हासिल की और उसके बाद ये टॉप एज जिस पर कासिम अकरम की वो कलीदी विकेट मिली. और हम कह सकते हैं कि यही वो स्पेल था जिसने मैच को बिल्कुल बदल के रख दिया, अपसेट डाउन कर दिया इस मुकाबले को, और उसके बाद उठने का मौका नहीं दिया सेंट्रल पंजाब को केपी ने. जी हाँ, चलें अब हम बात करते हैं केपी की बैटिंग साइड की. तो एक ही नाम हमारे सामने आता है, वो कामरान गुलाम का. एक बहुत ही शानदार इनिंग रही, जिस तरीके से उन्होंने आज इनिंग का आगाज़ किया, जो जिस तरीके से मिडल हो रही थी उनकी बैटिंग, आई थिंक एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए. जी हाँ, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इतने बड़े मैच में आकर एक ऐसे फॉर्मेट में जिसमें हमने उनको खेलते हुए बहुत ज़्यादा देखा नहीं था, उनने अपनी इफादियत साबित की.
जी हाँ, उनका साथ बहुत अच्छा निभाया। इशफाक अहमद की अगर हम बात करें, आदिल अमीन की बात करें, तो बहुत शानदार पार्टनरशिप्स में उन्होंने मैच खेला और ये मैच जीता है। यहाँ दो बड़ी पार्टनरशिप्स थी। ये सेंचुरी जो स्टैंड था ये तो बड़ा ही लाजवाब था। पहली विकेट जल्दी गिर गई थी मोहसिन, और फिर ये एक ऐसी टीम थी जिसमें लगता था कि शायद जो बैटिंग है वो लाइटर साइड पे है, थोड़े से लाइट साइड पे है केपी की बैटिंग आज के दिन, और अपनी बॉलिंग पर ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं, लेकिन कामरान ने लगने नहीं दिया। और वो कामरान जिनको हम देखते आए हैं कायदे आज़म ट्रॉफ़ी में सेंचुरी बनाते हुए, रन्स बनाते हुए, उनने दिखा दिया कि वो 50 ओवर की क्रिकेट खेलने की भी उतनी अहलियत रखते हैं। जी हाँ, कामरान गुलाम की हम इनिंग पे नज़र डालते हैं कि बहुत ही शानदार, हर पूरे ग्राउंड के हर तरफ उन्होंने स्ट्रोक मारे, कदमों का शानदार इस्तेमाल किया। फ्रंट फुट हो या बैक फुट की बात करें हम, तो बहुत ही शानदार। ये मुझे लगता है कि शॉट ऑफ द मैच था, जो एक्स्ट्रा कवर की जानिब उन्होंने 4 रन हासिल किए। एक बहुत ही शानदार, एक वेल डिज़र्व्ड 100 कामरान गुलाम ने हासिल किया। और एक सरप्राइज़ हमारे पास मौजूद है कि हमने कामरान गुलाम को दावत दी है कि हमारे साथ यहाँ पे आएँ और थोड़ा बात करें और अपनी इनिंग के बारे में बताएं। कामरान, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत ही शानदार इनिंग रही, एक टाइमली इनिंग रही। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इनिंग्स रही। स्कोर पे काफ़ी मतलब रन्स भी लगे थे, 285-87 रन लगे थे। तो माइंड में यही था कि कैप्टन ने भी बोला था, माइंड में भी यही था कि बड़ा मैच है तो इसको जितना लंबा हो सके मतलब खेलूँगा और अपना नेशनल गेम खेलूँगा। जी, हमने देखा कि आपके काफ़ी बैटर्स नेशनल ड्यूटी पे चले गए, तो उसके बाद काफ़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ जाती है और बखूबी निभाई आपने। जी बिल्कुल, हमारे काफ़ी मतलब स्टार जो है वो अपनी नेशनल ड्यूटी पे है। मतलब डजन मैटर, अगर हमारे स्टार भी है तो हमारे जो यंग लड़के माशाल्लाह, केपी का रिवायत का आप लोगों का पता ही है, जितना मतलब यंग जो भी आते हैं माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं। तो 287 रन का टारगेट था, तो कभी आपके डाउट आया जहन में कि ये शायद बहुत ज़्यादा रन हो गए? नहीं जी, ऐसा कोई डाउट नहीं था। मतलब बिलीव था अपने ऊपर, जितना मतलब मेहनत किया था, बिलीव था कि मतलब ये टोटल इतना कुछ नहीं है, आराम से मतलब चेस कर लेंगे। तारिक भाई, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? तारिक भाई, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि रेड बॉल क्रिकेट में तो आपने रन्स बना के दिखा दिया था, और पाकिस्तान ए टीम के साथ भी आपने रेड बॉल के मैचेस खेले श्रीलंका में, लेकिन ये जो वाइट बॉल में एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हुई है, कुछ इसके मुतालिक बताइए, क्या मुख्तलिफ कर रहे हैं इसके लिए? जी वैसे मतलब मैं वाइट बॉल का भी काफ़ी अच्छा प्लेयर हूँ। ओवरऑल आप देखें KPL काफ़ी मेरा अच्छा गुजरा, उसके बाद मेरा PSL काफ़ी अच्छा गुजरा, फिर ये अभी काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो मतलब वाइट बॉल का भी मतलब काफ़ी अच्छा प्लेयर हूँ। इंशाल्लाह ताला चांस मिलेगा तो अपना 100 फाइनल के लिए तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनल के लिए तैयार है। और KP का आप लोगों का पता ही है रिवायत का, तो इंशाल्लाह ताला। चलिए, thank you very much, Kamran Ghulam, and all the best for the final. Thank you. Right, you heard it from the master himself, Kamran Ghulam, playing a match-winning knock here for Khyber Pakhtunkhwa and taking them to the all-important final that will be played on Friday in the same ground. तारिक सईद हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं। तारिक भाई, कामरान गुलाम की आपने बात सुनी, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आते हैं फाइनल के लिए भी। आदत बन गई, जीत भी एक आदत हो जाती है, और KP वो टीम है, चाहे इनके छोटे हों बड़े हों, ये जीत के दिखाते आ रहे हैं। और इनकी कारकर्दगी जो है वो बिलाशुबा इसकी जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है। और मेरा ख्याल है दूसरी टीमों के लिए अब सोचने का भी वक्त आ गया है। सेंट्रल पंजाब के लिए सोचने का वक्त आ गया है कि अगर सेकंड स्ट्रिंग KP की टीम आकर आसानी के साथ उनको हरा सकती है तो फिर सब अच्छा नहीं है उनके लिए। Right, thank you very much, Tariq Said, for being with us. Right, that is all we have from down here. But the next match that we're going to tell you about is the second semi-final that will be played day after tomorrow between Sindh and Balochistan. It's going to be a one heck of a match. You just don't miss out this match. We'll be on air by 9 o'clock. That is on Wednesday. We'll see you there. Goodbye from here.